in 2018 and as World Bank expert in a conference in Colombo, Sri Lanka in 2020. He's an executive committee member of PIAC, that is the World Road Congress for 2022-24. Sri Nirmal is recipient of prestigious Pandit Jawaharlal Nehru Birth Centenary Award for his outstanding contribution to highway profession by IRC in 2003. Lifetime Achievement Award from Indian Geotechnical Society, Delhi chapter. Eminent Engineer Personality Award by Institution of Engineers, Delhi chapter. He has also received IRC medal for the best paper in 2018 and 2022. Commendation certificate for his paper published in 2003. Nirmal has contributed more than 22 technical papers in various IRC journals, national and international seminars and conferences. He is a fellow member of Institution of Engineers, India. I welcome Sri Nirmal to make his presentation. Thank you. Good morning. Chair of the session, Sri I.K. Pandey, and co-chair, Madhya Pradesh PWD, my co-presenter, delegates, ladies and gentlemen. So first of all, a little bit about the genesis of this particular seminar and this topic. In fact, 1 year back, we received the request from Engineer Chief Sri Mehra Sahab that he wants a 2-day dedicated seminar on EPC contracts, because every state, they are in the process of implementing EPC contracts. So they wanted, I had done personally as part of IHE faculty also, as individual capacity also in various states on EPC contracts, various workshops and seminars, and he wanted this to be held in Madhya Pradesh last year. And we agreed in IRC that we will have that seminar, but due to some reasons we could not do that EPC contract seminar. And again, this time he wanted that EPC as well as new technology, because Minister is very keen on new technology, but our engineers, they want on EPC. So we divided these 2 days in this one day and the other day. So this is how we are talking about this EPC contracts. I think this is a different presentation we put here. New technology is a different one. EPC contract लिखा हुआ है ना उसमें. So today's agenda. First, I will be discussing about the overview of EPC contract, how it is different from the other form of contracts, and various clauses of EPC agreement. And then my another co-presenter, and who is also, he has worked with me in NHAI as well as in ministry, and presently is RO here, and implementing all these EPC contracts in NHAI. So SK Singh, he will be discussing about various schedules and what are the challenges for the clients in EPC contracts. In fact, yesterday you heard that our former secretary and present your chief secretary, he also I had discussion with him before the seminar about this EPC contract, what problems we are facing and how we should now have a total review of EPC contracts. Because we have seen this implementation for the last 12 years, and there are certain issues which need to be threshed out before we go further. And he was also in agreement, and maybe shortly we should have a brainstorming session on EPC, but this particular session is we are discussing about the various provisions in the contract, and maybe today this panel discussion, though the main topic is new technology, but there, if time permits, we can discuss some of the issues. So now coming to the seminar. So first of all, what are the various kinds of contracts? I think all the PWD engineers are very familiar with item rate contract. That is what is the normal practice everywhere. That you have the fixed items and the rates, schedule of rates are given, and then based on that,
you put your contract, you prepare your bid document, and then plus minus whatever tender premium is there, and that we can decide. That is what everybody is familiar, those who are dealing with any roads or buildings or any aspect. So item rate is a normal form of contract, and even NHAI or ministry, everywhere we used to have the item rate contract. Prior to 2000, there was no other form. Then in 2000, what happened that there were thrust, particularly for national highways, there was NSDB program was launched, and there was huge requirement of money. Then they wanted that we should have more of BOT projects. So 2000, we had some initial documents, but later on it was decided by the Government of India that we should have a uniform document for all the sectors, not only road sector, but every sector should be covered in that model document. So 2005 onwards, we started preparing these model contract document, MCA, which is called Model Concession Agreement. So initially it was focused on only on PPP, because that time there was a huge problem of funding. So Government of India decided that let us have a document, Model Concession Agreement, which will deal with the PPP projects. So over the 2 years, in fact, that time I was fortunate to, I was working in NHAI at that point of time in 2005. So 2004, 5, 6, 2-3 years we started preparing this Model Concession Agreement. And I was also representing Ministry and NHAI both while we were preparing these model documents with Planning Commission, Finance Ministry and Law Ministry. So that first document was on PPP basis. So the document was ready in 2006, and then 2007 we had RFQ document also for PPP projects. And based on that, all the project bidding started, and the government decided in 2008, that time Government of India, that every project of NHAI should be only on PPP. They have no money for execution. So by default, every project should be PPP. And when they are not successful, then only it will be other form of contract. So PPP started in a big way in 2008 onwards. And by 2011, we were I think in the world, the highest PPP program was being implemented in India, and it was very successful. Even 100% revenue earning, and even whatever, even 1,000 crore project, we were getting 1,000 crore itself premium on the day one. So that kind of PPP, it was blooming in PPP, NHAI. Then every state also they started having PPP in their own way. And this Model Concession Agreement was being used, everybody was using. And even that grant, then viability grant funding was also provided by government. Initially it was for NHAI 40%, but states it was 20%. So later on then, that with that lucrative things, every state was trying PPP. But unfortunately by 2012 we found that there were many issues, even overestimating the cost, then getting more funds from the banks, then not able to repay. Then there were even the funding issues. So that time, then we started searching for other contract documents. That PPP is not working. Many projects which were bidded, they are not getting even the financial close. Banks are not funding. So 2012 beginning or 2011 end, then we decided that let us switch over to the other form of contract, where you can have a similar contract document, like what has been prepared already in MCA. And RFQ is also available. Then manual was also available, because manual was prepared by IRC. Manual for 2 laning, 4 laning, 6 laning. It was originally only for PPP. But then it was decided by Ministry of Road Transport that let us have this EPC form of contract. Because I am talking about EPC. What was the genesis of EPC? How it started, in fact, in the beginning. So that time it was decided that let us have this new form of contract, which is called Engineering Procurement Construction Contract. Basic framework will be same what was done for PPP. We will give those kind of freedom. Even the entire manual which was prepared for PPP will be used for EPC also. Only if you find, if you are those who are familiar with the EPC, you find that same manual document we are using, only the concessionaire word is changed to the contractor, EPC contractor, only minor changes, otherwise same manual we are using. So the basis was that originally it was PPP, and then it is being converted into EPC.
And so those freedom which we were giving in PPP projects, same freedom we started giving design flexibility to the contractor in EPC form of contracts. So now we will see the various provisions, but basis was originally PPP project. So this is how the EPC contract started, and we will see now what are the salient features of EPC. Then build, operate and transfer, that is what I am saying, that PPP, that is public-private partnership. It was the name given at that time when we were preparing these model documents. Otherwise, we were earlier calling it BOT. Simple BOT, toll, BOT, NVT. These were the major forms which was used. Even by states also, even some of the states like MP was pioneer in BOT projects. Even renewal they were doing on BOT. And Rajasthan and these, some states, it was very popular form that on BOT they were doing a lot of projects. So BOT, we had the variant of BOT toll, BOT NVT, and then there was another variant came, that hybrid NVT, because even NVT projects there were very few takers, so there they decided that even the cost should be reduced, particularly for reason where there is a strategically requirement, government requires, there we can have some more funding, dedicated funding also. So that is HAM kind of contract. In fact, what you are saying, the present form of HAM, which is the NHAI started in 2016 onwards, already we implemented in 2010 itself. That time we started this hybrid NVT model, and minor variation they have done, and now they have come out with the HAM model. So these are the various important modes which are being used in the highway sector. Now authority or the employer, because we are mentioning various, you will see in the various clauses authority. Authority means that is basically employer, whether it is a PWD or NHAI or Ministry of Road Transport. So their ultimate objective in any type of contracting is to value for money. Whatever money you are spending, there should be enough return, value. In PPP, why they will put money? Because unless there is a return, they will not put their money. Even government is putting money, they want that social, whatever is the, justification of the contract, why to implement it. So value for money by way of time, there should be time saving. Government, whenever you do a government funding, then government also, there is some, for large project, there is some approval mechanism. Even your finance ministry, your planning commission, if you have in your own state, they also will see what is the return, why you should do this work. What time saving will be there? How much improvement is there? How many people will get benefit? Whether even if it is a PMGSY road, there also they see all these requirement. So you have to see what returns are coming in way of time, cost, quality, and performance. So these are, very important features. Now, what is EPC? EPC is a particular form of contracting arrangement where EPC contractor, those who have got the bid, he is made responsible for all the activities right from design. You see, this is important. Even he is doing design. Normally, in your item rate, you don't allow contractor to do design. But EPC contractor will do design, procurement. He can also have his own subcontractor procurement. Even materials also he will procure. Earlier, you were familiar that bitumen was a star material. Department was supplying bitumen, cement. Here, everything has to be procured by contractor himself. So design, procurement, construction, he has to do commissioning and hand over to the client authority at an agreed price at a fixed date. What is important in EPC and how it is different from that? That their price is fixed. He is bidding for a particular price. He is not bidding item-wise. Your item rate contract, every item you are asking him to bid. Here you are not giving him items details. You are only giving him schedules where you are giving him scope of work. So here you are not giving all these things. You are not giving him even the detailed project report for implementation. You are giving only for reference, that it is only for reference. So he is quoting a single line that this is my price. I will do this work. If it is a 50-kilometer work of strengthening of road, I will do, say, 100 crore. So he is only bidding 100 crore, and somebody who is bidding the lowest, he will get the work. You will not see what are the detailing of these 100 crore. That he will not quote. So agreed price that
he will only quote price and you will only see who is the L1, you will award him, and at a fixed date. Then completion period also is defined here that, okay, this work will be done in 12 months. So he will say that, okay, I will do on this date. Now, if he doesn't do it that particular date, then there is a provision of penalty. And there is also a provision of bonus if he does early. If he suppose 1 month before he completes, instead of 12 month, 11 month, he will get bonus for 1 month. So that kind of motivation or incentive is there for early completion. So a agreed price and a fixed date, then performance standards of the product is hallmark of EPC contract. Government, they wanted that we should be only concerned with the performance standard. We should not go into the details of all these things. You only mention what is the riding quality you are expecting, what is your design traffic total. So don't go into the detailing of this. So you only mention that this should be my riding quality. When he will hand over, you will examine that. Okay, it is good. Surface is good. Then EPC contract incentivizes innovation and best practice. Now this is an important thing why they wanted to bring EPC, like BOT, because BOT also he had freedom. EPC also they wanted to give him freedom that, okay, you will if you do design, then you bring innovation in your design. You bring the best international practices in your contract document. Otherwise, what is happening when item rate contracts, you are getting a DPR prepared through consultant, and DPR, normally they go only by the conventional method. They don't go by any innovation method. Even department will not approve otherwise. So here we are giving him flexibility that he can bring innovation and best practices to reduce his cost. Because already he has quoted a particular price, now he has to complete even less than that price. So for that purpose, he will bring some technology where he can reduce his cost also. And he wants to complete early so that he gets bonus. So both the things he will utilize if he has been given the freedom for even design, even to bring technology. Now in any contract, normally you will not allow to bring innovation if it is an item rate contract, because you have a set DPR and he has to 100% follow the DPR, otherwise you will not approve it. But here that freedom is there. And yesterday also I was mentioning that in manual also we have made that provision that he can bring any new technology and get it approved by his authority engineer. Any new technology which is not there in original DPR, that also he is allowed to bring. So that flexibility has been given through manual, and that flexibility has been given to the contractor that he can design, because he will appoint his design director and get it approved, his design, through the authority engineer. So what is happening? So I mean, he is getting less risk because now he has got the motivation. He can bring his innovation. He can reduce his cost. He can complete it early. So his risk, he is more comfortable now that if he employs very good people, very good experts, then they will bring value addition, value engineering they will bring, and good engineers, good IIT professionals, they can work with him to reduce his cost, to optimize his cost. Exactly. Because he is approving, so he is fully responsible. But if Hello. he is approving, May I request the audience to please get him completed this seminar, his talk. Then the floor will be open for questions. I know there will be a lot of questions because everybody will be curious how it is different and how they will implement. And those who have implemented, they have their own questions. So I think we have a question hour and we have given more time. In fact, this session, I have given only 30 minutes. Out of 90 minutes, 30 minutes we have reserved. So that can be used for all question answers. We would like to clarify all your queries. That is why we wanted to have a dedicated session on every aspect.
Now, what is the problem which we are facing in 12 years of implementation? That contractor's focus is to provide minimum compliant design. Because he says that whatever is minimum he will do because he wants to reduce his cost. He wants to have more saving. And flexibility he is using for minimizing his cost. So cutting corner in every aspect. So that is a real cause of concern. That is what even when I had discussion with the chief secretary and he was also saying what about the quality issue, how we will address that. So definitely there is a need to see that. Turnkey means government gives that, okay, you construct a refinery, you give your bid. So there's a 1,000 crore we will construct. So it is turnkey. Just government has given the 1,000 crore and he will do everything, planning, design and everything, all aspects. So, but how it is different from EPC? EPC and turnkey appears to be same, but there are some differences. So one is EPC employer, that is authority, will provide basic engineering to a contractor. Authority has their own work. We have our own contract agreement. We have our own manuals. We have some DPR. So authority is also doing some due diligence. And later shall perform detailed design based on received basic design. Contractor will do his detailed design, but authority also have everything. But what will happen in turnkey? In turnkey, employer will only provide certain technical specifications, and it is the responsibility of the contractor to prepare basic and detailed design of the project. In turnkey, everything has to be done by contractor. Because employer, he doesn't know about all these things. He doesn't know what are the specifications and all. So contractor, that is why they employ some consultant first on turnkey basis. And that consultant will do work with the contractor on all aspects, everything right from planning. And there on percentage basis, they will pay to the consultant that whatever work is executed, some percentage they will give to the consultant. So like that, so turnkey is a totally different thing. Cost, yes, cost is same. That there also bidding is one parameter, that yes, this is the cost. But then their employer role is very, very limited in turnkey. In turnkey, the contractor is responsible to perform construction and commissioning, startup, takeover of the plant to an employer, but in EPC, it may be the responsibility of another third person to be commissioning and startup. I mean, there is an authority engineer involved, which will be responsible for everything, even for allowing this, all these, even completion certificate. Before that, all kind of checks up and everything, so that authority engineer also have a role in that. So this is not exactly same. Now, what is the contract document? Because I will be discussing about the contract document part, and my another co-presenter will be talking about schedules. There are two different angles of contract. So there are 28 articles. So that is the contract document is having 28 articles in 6 parts. Part 1 is preliminary, that is how they have defined that these 28 articles. Part 2 is talking about the scope of project. Part 3 is talking about construction and maintenance provisions. Then part 4 is talking about financial covenants. Part 5 is force majeure and termination. Part 6 is other provisions. So in fact, force majeure and termination also will be dealt by another presenter. So any problem? Then after these articles, the first part of the contract document is talking about articles, 28 articles, and then second part of the contract document is talking about schedules. And schedules are very, very important for particularly employer, that is PWD officers. Because you will be directly involved in this preparation of schedules. And schedule means there are 16 schedules, and these schedules are, first is talking about what is the site of the project. Though there is a printed document, but site of the project, that will be project-specific things. Now all these things will be project-specific. Schedule B will be development of project highways. Schedule C will be project facilities. Then Schedule D will be specification standards. Schedule E will be maintenance requirement. And then applicable permits. And then G will be bank guarantee. And Schedule H also is very, very important because payment will be on basis of Schedule H. That is contract price weightages, and it's a totally different kind of payment system, not like item rate. So these schedules, this drawing, then project completion schedule,
that how much time they will complete the project, and there are stages that is called milestones that also will be given in that. Then test on completion, then completion certificate format, then payment reduction for non-compliance, then selection of authority engineer, form of payment statement, insurance, test on completion of maintenance, and taking out certificate. So I'll not go into detail of these schedules because there will be separate presentation after me on the schedule part. Now one schedule is important for us, that is schedule D, because IRC also was involved in that schedule, preparation of schedule, because they wanted a particular document which will be applicable for the entire country, for all kind of terrains and everything. Can we have one document that is called manual, which will be applicable for all kind of projects, whether it is PPP, and now when we are talking EPC. So all the performance requirement, technical requirement, we can specify in that manual. Is it possible? It is very difficult to prepare such document, but we started preparing. And I was involved right in the first, when the planning commission started this exercise, I was involved in that preparation of this manual from the planning commission, and that document also was approved by IRC finally, because they don't have this technical competence. So if that was for all kind of highways. The first manual which we prepared was not only for national highway, but any highway, state highway, or anybody can use. And then IRC started preparing specific for national highways, that 2-lane, 4-lane, and 6-lane manuals, and then expressway manual came. So these 4 manuals came. Now how they are related with the EPC contract document? They are mostly related with the schedule D. That is a technical specification part, that highway project, including project facilities, shall conform to design requirements set forth in applicable manual. That any of these manuals, that is 2-lane IRC SP 73, 4-lane IRC SP 84, and 6-lane IRC SP 87. So these are the 3 different manuals which is part of the contract by virtue of this schedule D. And IRC codes, standards, guidelines, and any other code specifically mentioned in the manual shall be applicable for design. Whatever is mentioned in manual. Because now manual is defining, you don't need any other, except what is written in the manual, you don't need any other codes. What mentioned in the manual only, that is required. Then how to make one document applicable for entire country? For that, there was a deviation list. That if you are doing a work in hilly area, it may have a different parameter. If you are doing in a plain area, it may have different parameter. So there you will use the deviation, that manual, this clause will be different in my project. I don't follow manual for this clause. Whatever, whether it is a speed or whatever, all relaxations are available in this, through this deviation list. So this is how this manual become part of the contract, and now you can define your performance standards for any state, any terrain, anything in the country through this manual. Now, that was just very small reference about the technical aspect, but in detail that will be taken up separately. Now, what is given in the contract document? I am talking now only of the EPC contract document. So first of all, to make a printed document, then give flexibility where you can change. So there are brackets, asterisks, and footnotes given in different places in the contract printed document. So provision in the curly bracket, that is definition of project highway, that naturally it will depend on what project you are doing. Name of the project, locations, kilometers, changes. So that will be all different for different projects. So to be retained in the RFP, but to be modified in agreement. Agreement you have to write, when you sign the agreement, before that you have to bring all these, your project specific changes and all that. Provision in square bracket, that is schedule completion date, that is kept in the square bracket. So that you will depend on the length of the project and your, how much, whether you give 9 months, 1 year, or 18 months, or 2 years, depending on the kind of project you are doing. Then asterisk to be substituted with the project specific details in RFP, that is specific change of project to be filled in recital. Then serially numbered footnotes. Now there are footnotes on various pages of contract document, and they are giving basically guidelines which can be later on deleted. That is for guidance, that performance security, yes, this should be 5%. So then you can calculate based on your project cost and put the actual number. So these are the, in footnotes, guidelines are given.
Then footnote mark $sign to be retained in draft agreement, that is validity period in the form of bank guarantee for performance security. So these are some of the signs where you have to put in project-specific parameters. Now, some important definitions or interpretation or priority of document, because you should also know that in case of dispute, which part of the contract has the priority, which will govern. If there are two things differently in different places, which will be having priority. So all these things have been defined also in the contract document. First of all, applicable law, I think it is all the contract, whether it is item rate or PPC, everywhere you have applicable law. That means laws brought into force and effect by the Government of India or state government, including rules, regulations, and notifications, and judgments, decrees, injunctions, writs, orders of any court of record. So that is all applicable law in that particular state, that particular area. Then applicable permits, that all the clearances, because before doing any large project, they need all the clearances, environment clearance, or even the quarrying, all these clearances are required. So clearances, license, permits, authorizations, NOCs, consents, approvals, and exemptions required to be obtained or maintained under applicable law in connection with the construction, operation, maintenance during the subsistence of this agreement. Then base date means the last date of the calendar month which precedes the bid due date by at least 28 days. So then base rate means the floor rate of interest announced by the State Bank of India for all its lending operations. Then change in law. There are various issues. Many times during the implementation, if it is a 2-year contract, there are some laws are changed in between. So for that, there are change in law means occurrence of any of the following after the base date, that is enactment of any new Indian law, repeal, modifications, commencement of any Indian law, a change in interpretation. I think I am moving very slow, so let me fast up. Contract price, that you know, all bid price, that is the contract price, and it includes all duties, all taxes, royalties, etc., but it does not include maintenance cost. Maintenance period, they will give separate maintenance cost, which is not part of the contract price. Then defect means any defect, and there is a defect liability period also defined. Then all measurements calculations in metric system, 2 decimal places. Now priority of agreement, that is agreement is the top priority. All other agreements, supplementary agreements, they have the lower priority. In case of discrepancies, then between 2 or more clauses, clause relevant to issue. Then between clauses of schedule, the clause will have priority. Then between schedule and annex schedule, schedule has priority. Then between any 2 schedule, relevant schedule will have priority. Between written description on drawing and specification standards, then whatever is written, the specification will govern, letter will govern. Between dimensions scaled from drawing and written values, written value will govern. Between any written value in numeral and word will govern. So this is what the priorities also defined. Now manuals already we have discussed. Manuals I think I can skip easily. The scope of the project also, so I think schedule A, B, C, D will be dealt in detail by my fellow presenters. So that also I will skip. Now there are obligations on both part, because authority has some responsibility, at the same time contractor has some responsibility. So that responsibilities have been defined. Handing over site, land provision, land has to be provided by authority. It is their responsibility. If they don't do it, they delay it, there is a penalty. Similarly, approval of GAD from railway is the authority requirement. Environment clearance also is to be by authority, and they have to give reasonable assistance. No barriers on the highways, then not to do anything violative, then maintenance obligation prior to appointed date. Normally this is where they fail most of the time. As soon as the project is announced, they stop doing maintenance. So it is very clearly mentioned that maintenance before appointed date is the authority responsibility. Contractor has certain obligations. He will do everything right from survey. Survey investigation, design, engineering, everything. Then the compliance to permits, procure rights, remedy laws, then compliance to labor laws, traffic safety. Then subcontracting also that he has to do, that there are requirements for subcontracting given. Performance security he has to submit, busy in the form of big bank guarantee, 5% of the contract price within 30 days. Then if it is under price bid, then additional performance security. Then the time period, then for delay, all these things have been mentioned. Then failure to submit, then there is a provision for even if 60 days additional delay, first some time has been given, 3 months,
then 60 days, and then you can terminate the contract. Then contractor obligations and when it will be returned, all these things have been defined. Site should be encumbrance free, made available to contractor. For that, if there is a delay, there is a penalty on authority. I mean, authority also will pay penalty for delay in handing over a site. That penalty calculation is given. Then contract site encumbrances, it should be encumbrance free. And another important thing is that responsibility for shifting of utility and felling of trees has been given to the contractor. Earlier it was not, though in PPP also, it was not their responsibility. Now contractor has to do shifting of utility and felling of trees, and cost will be reimbursed by the department. Appointed date is a very important term, which was actually in the PPP originally, and here also we have kept the same definition, that project commencement date declared by the authority, and the contractor submission of performance security he will do, and authority will hand over the site. Then authority engineer is another important element in this contract, and he will be appointed by authority. That is why he will be paid by authority. In PPP, it is to be paid by authority. In PPP, when you are talking that BOT contracts, there 50%, both parties were paying, so he was called independent. Though now, yesterday, Mantriji was saying he is more dependent, not independent. But both parties have to pay there. But here, 100% paid by the government. So it is a government-appointed authority. Then design and development he has to do, and there is a clause-wise everything given, how many days he has to complete that part. Proof consultant also he has to appoint, safety consultant also he has to appoint. Then design, how much time he has to submit, and then how much time is for approval. All these things have been defined. Then construction milestones have been given here. Milestone 1, 35% progress, milestone 2, 60%, milestone 3, 85%, and milestone 4 is the completion period. If there is a delay in achieving any of the milestone, there is a penalty. But if you complete in time, finally, then you will be given back whatever penalty is there. So that is a milestones of. Then state payment, that schedule H, that will be dealt by my fellow this one, that schedule H, how to do that. Then there are provisions for COS and EOT, change of scope. So then quality assurance and quality control also has been defined, that who is where we have a IRC manual, IRCSP 112, which has defined all the QAP plan and every system. Quality audit system, then authority engineer approval to QAP, the time frame is given, how many days he has to give that approval. Then yesterday what we have seen, earlier it was authority engineer to check only 50%, not even 100% he will check. But even yesterday Arnag Jain Sahab was telling that because of the experience now we have increased it to 100%. That authority engineer also is to check everything, all quality issues. Then monitoring and supervision, here comes the role of PWD, that PWD also will be monitoring through frequent meetings, then progress report and on quality issues, and monthly progress report, and then he can suspend on the quality issues, even the work. Then change of scope will be any additional work, because what you have defined in your manual, Schedule A, Schedule B is the scope. If anything beyond that, then it is a change of scope. So how much change of scope is allowed and how it is dealt, how to calculate the rates for that change of scope. So this has also been defined in detail, that how we will be calculated rate of different items, whether it is SOR, it is there, it is okay. If it is no SOR, then how to calculate. So this has been defined in the contract document. Then project completion, what are the tests to be done? NSV is all that testing has to be completed for the project. All load tests, reflectivity, all the tests has been defined. Then after completion, then the authority engineer will give a certificate. That will be, then defect liability period there is another important element. That road with flexible payment 5 years, then rigid payment 10 years, then new technology 10 years. So like that, there are defect liability period, that for that period he will be responsible for maintenance. Then defect liability and maintenance money will be given for every year after that completion. Then payment to contractor, I think that will be dealt separately, payment part, and in that Schedule H. Then these are insurance, there is that also I think in part of the schedule.
Force majeure will be dealt separately, suspension, termination, all these things by my another presenter. So this is, I try to, though time is very less, but we can discuss even in, you have any queries on any aspects of contract or any issues, we'll discuss separately. Thank you. Thank you, Nirmalji. Now I'll invite Sri S.K. Singh, who is the regional officer in NHAI. Mr. Singh has graduated from NIT Allahabad in civil engineering and had joined the Central Engineering Services in year 1999, and he has an experience of more than 25 years in dealing with EPC contract. He has dealt with around 50 projects and around 2,500 kilometers of 4, 6, 8-lane highways, and he has a great experience in the subject matter. Over to Mr. S.K. Singh. Sir, don't worry, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा इन माय सेशन इन हाँ बिल्कुल जिज्ञासाओं को शांत करेंगे, डोंट वेरी फॉर दैट, बट अभी इनको थोड़ा सा पूरा कर लीजिए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत सारी जिज्ञाएं इनके प्रेजेंटेशन से भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी. सो काइंडली बियर विद अस. थैंक यू. Good morning, Chair and Co-Chair and our friend. I will be concentrating on preparation for schedule and role of client in EPC agreement. See, you can see the network of roadways in India, that is 63 lakhs. Out of that, 1.45 lakhs is national highway. So how to develop these national highway? Different mode of construction had been adopted by different agencies. As you know, that Government of India have mainly 4 agencies for execution and implementation of national highways: State PWD, BRO, National Highway Authority of India, and NHIDCL. So here we are adopting different mode of execution. As earlier sir said, that we have different mode, mainly item public funded projects and PPP mode projects. Public-private partnership, that is, we can say BOT, NOT, and hybrid NOT mode, HAM. These are PPP, and public funded have been executed that based on item rate contract and EPC mode. Earlier item rate contract, sir has already explained, and you people are having experience of that. EPC now we are doing since more than 10 years. So I will cover the mainly role and responsibility of authority as well as how to prepare schedule. See, item rate contract, okay, that I will not cover, everybody knows. In EPC, risk management is with contractor, mainly for design and construction. What are the benefits and what are the changes over item rate? The first principle is that risk for design and construction is with contractor, and we have adopted easy payment mode that I will cover in detail, and innovation and value engineering he can do in through this mode. Whether EPC, what we have experienced previous 12-14 years, whether it has delivered or not, yes, certainly he has delivered, but it has some shortcomings also due to mainly authority failure and some point of view contractor failure also. Authority failure was mainly due to delay in a land acquisition and inadequate definition of scope of work. Why I am concentrating here? What are the main drawbacks which could not make EPC contract 100% success? That was mainly the land acquisition and other project clearance. In addition of that, one more important thing is that ambiguities in scope of work leading variation and claims. We could not define our scope of work properly in the contract, which resulted in so many COS and EOTs. So that I will cover how to prepare schedule and how to define scope of the work. Reason for shortcoming, anyhow, inadequate contract drafting, that
schedules are part of that. Poor project preparation. Yes, project preparation will also give the positive impact on the preparation of schedule. If you have done DPR properly, definitely schedule will be prepared properly. Need to understand the role of the client in EPC. See, what are our role in this EPC execution? One is to provide encumbrances free land and project clearances. Then defining the scope of work without any ambiguity. Then financial oversight and payment to the contractor. And then timely approvals, means decisions. And appointment of authority engineer, and then coordination with all stakeholders. These are our role. Earlier we have been thinking, when I was I joined the department, earlier FITIC documents was adopted. Their supervision was rested with supervision consultant 100% and execution definitely contracted. Then I thought, what is the role of engineers? What are our role? If contractor is joined and supervision is done by consultant, then, but no, we have a role. We have to coordinate. We have to facilitate the contractor. Here, moreover, in addition to control the project, we have to facilitate the project. So, unless we don't have proper coordination with all stakeholders, we cannot ensure that. Then, what are the obligations of the authority here? First, responsible for correctness of the scope. Yes, that will cover in schedule how to do proper. Then ensure that 90% of land is handed over to the contractor as on appointed date. That too also, ऐसा नहीं bits and pieces में आपने दे दिया कि साहब 90% हो गया. No. Here we have modified in agreement and we mentioned that at least 5 kilometer continuous length should be made available for construction. If suppose project is 50 kilometer, then 45 किलोमीटर वी हैव टू डू इन 5 किलोमीटर पैचेज. ऐसा नहीं कि कहीं आधा किलोमीटर दे दिया, फिर आधा किलोमीटर गैप है, फिर आधा किलोमीटर दे दिया. देन हाउ ही विल कंस्ट्रक्ट द थिंग्स. देन प्रोवाइड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस. देन सपोर्ट एंड असिस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन प्रोक्योरिंग द ऑल एप्लीकेबल परमिट्स. प्रोवाइड अप्रूवल ऑफ GAD. GAD we have to get approved within 60 days from the appointed date. So generally we ensure that before award of work, are signing concession contract agreement, we should ensure approval of GAD from railways. To maintain the project highway prior to appointed date. This is also very important role. What we used to do earlier, कि साहब एक बार अगर प्रोजेक्ट हमारा अवार्ड हो गया, अब हम कोई मेंटेनेंस नहीं करेंगे. नहीं, आपका बिड ड्यू डेट जब था, उसके 10 दिन पहले जो आपकी रोड का स्टैंडर्ड था, वो आपको अपॉइंटेड डेट के पहले मेंटेन करके उसको हैंडओवर करना है. Otherwise, contractor obligation for maintenance of the project highway during construction period will be failed. आपने क्या करा, आपने 1-2 साल से काम करना छोड़ दिया, सड़क की हालत खराब हो गई. अब कंट्रैक्टर जब मोबिलाइज हुआ, बोला कि साहब आपके स्कोप में आप मेंटेन करो. कैसे करेगा जब आपने सड़क की ऐसी तैसी कर दी. इसलिए वी हैव टू इंश्योर दैट कि आवर सर्विस लेवल जो कंडीशन है रोड की, वो प्रॉपर हो बिफोर अपॉइंटेड डेट. तो वो आप मेंटेन करके रखिएगा, तभी वो आगे मेंटेन कर पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. इंश्योर दैट नो बैरियर ऑन वर्क्स ऑफ प्रोजेक्ट हाईवे बाय गवर्नमेंट और पर्सन, so that smooth movement and execution. These are the whatever role I have defined. This is as per agreement. These are the clauses mentioned in agreement. You will go through in detail. Consequence of non-fulfillment of obligation. What were the problem will be there? Definitely जब 90% लैंड नहीं देंगे, अप्रूवल नहीं देंगे, तो टाइम से प्रोजेक्ट नहीं चालू होगा और एक्सटेंशन ऑफ टाइम देना पड़ेगा, उसको डीस्कोप करना पड़ेगा, अथॉरिटी को पेनाल्टी लेना पड़ेगा. 1% एक्चुअली डैमेजेस वी हैव टू पे एंड प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली सफ़र करेगा ही. फाइनेंशियल एंड टाइम कास्ट ओवररन तो होगा ही. द मेन स्ट्रक्चर ऑफ ECP एग्रीमेंट. These are 27 articles which sir has already defined, and then schedules. There are 19 schedule A to S. Some are technical and some are non-technical. So I will cover in detail technical schedules, that is A, B, C, D, H and J, and then others are non-technical schedules which are format only, project specific information only given. Otherwise this will be fixed. These are non-technical schedules are mainly
कि what are these tests we have to do, what are the BG format, sir has already explained कि BG का फॉर्मेट क्या होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो सारा फॉर्मेट बेसिस है. तो दैट आई विल सी व्हाई बेटर शेड्यूल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड. सपोज मैंने सोचा, आपने सोचा कि मेरे को एक बढ़िया बाग हो, उसमें एक झूला सोफा रखा हो, उसमें बैठना है. अब इसको आपने डिफाइन कैसे किया शेड्यूल में, वो आपने ये चेंज कर दिया. आपने सोचा मेरे को बैठना इसमें है, लेकिन आपने बताया ये, और कॉन्ट्रैक्टर ने क्या समझा, डिलीवर थर्ड वन. सो दिस इज द मेन impact if you don't do proper schedule preparation. Understanding of the spirit of APC. Before preparation of schedule, you have to understand what are the main spirit of this APC agreement. Client will convey its functional requirement. Contractor will design the project as per functional requirement and specification given by client and carry out the construction. And then contractor will deliver the completed facility to client. Expectation from the client in schedule drafting. हमारे को what we have to mention and we have to take care कि achievability, realistic and feasible within the project constraint. हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसको जो मेंशन करेंगे शेड्यूल्स में कि हमें क्या चाहिए, दैट वुड बी अचीवेबल. बहुत सारी चीज़ें हम साइलेंट छोड़ देते हैं या एम्बिग्यूटी छोड़ देते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. कंसिस्टेंसी, it should be compatible with standard and specification to avoid any dispute. And flexibility, allow for the adjustment and changes. Clarity, it should be clearly mention all the things to understand by contractor. Specificity, precise and detailed description of work. And completeness, cover all aspects of the project highway. Benefit of ड्राफ्टेड शेड्यूल, डेफिनेटली एक्यूरेट कास्ट एस्टिमेशन होगा, रियलिस्टिक प्रोजेक्ट टाइमलाइन होगी, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट होगा, क्लियर कम्युनिकेशन एंड सक्सेसफुल ऑफ द डिलीवरी. सो दीज आर द टेक्निकल शेड्यूल मेनली आई एम गोइंग टू कवर. शेड्यूल A, B, C, D, H and J. Schedule A is description of existing site. Whatever project site you are going to make available to contractor, that we have to define in Schedule A. Schedule B is the basically it is a soul and heart of the contract. Schedule B and C, you have to define scope of work, what you want in Schedule B, and what are the facility for that project, that will be defined in Schedule C. Schedule D is standard and specification, and then Schedule H is payment procedure, and Schedule J is project timeline. Schedule A is the basically site description on existing site and what we should to take care of this, that to conduct through site investigation, reference relevant report and studies, include information on nearby utilities and infrastructure, and we should not give inaccurate information on Schedule A. Basically, now we have started to include the existing utilities along the project highways, because the shifting of utility is the responsibility of the contractor now, and it has been included in scope of work. Earlier, as sir said, that utility shifting work was to be taken up separately through utility owing authority, and after that it was done by contractor, but separate payment. Now it has been made part of the scope of the work. So therefore, utility also need to be defined in Schedule A. Basically, these are the component of Schedule A. There will be 4 annexer of Schedule A. Annexer 1 will be site related. Annexer 2, we have to mention the date of providing ROW for construction zone. Part 3, Annexer 3, that will cover alignment plan. And Annexer 4, environmental clearances status. So, site of project, how to define, it has been mentioned in contract agreement Schedule A. It is standard format. We need not to change here. As sir already explained, that open bracket thing only can be changed. Actually, I have taken this extract from the EPC agreement approved by Government of India. And if you follow in full spirit, you need not to change the things which has been fixed. Only open bracket thing we should change. So this Schedule A, whatever language is written, it is, see suppose first para,
site of the 2-lane project highway. If you are doing 4-lane, you do 4-lane. If it is 2-lane, 2-lane. Then this will be shall include the land, building, structure and road work as described in Annexure A of the Schedule A. So this language will be fixed. Fourth, it is given about alignment plan also, that I will explain. This is the Annexure 1 of Schedule A. What are the format it is given? We should follow the information by putting the information in this format only. You don't apply different kind of mindset. We should explain in this way, that way. No. This is the format which has been given in EPC agreement. We fill up the information in this format only. Just I will go one by one. Site, you mentioned that site for the 2-lane or 4-lane project highway from this channel to this channel and from this section to this section. Suppose our project is from kilometer 10 to 15 and from Bhopal to Beura section. That kind of information. Land, you give the available ROW, what are channel by channel. From this kilometer to this kilometer, that much ROW is available. That information you have to put precisely. And then carriageway, what are the existing carriageway width? Suppose sometimes single lane, somewhere it is 2-lane, somewhere is it intermediate lane, that channel wise you define. Then major bridge, what are the location and then type of foundation, substructure, superstructure. Then ROBs, then grade separator, minor bridge, railway crossings, underpasses, culverts, bus bays, truck laybys, roadside drains, major junctions, minor junction, bypasses, and other structures or other information. Other information we can include the what are the relation between existing channels vis-a-vis design channels. Because DPR is done as per your design channels. Channels would be different and existing channels, so that contractor can identify the exact location and channel. Suppose kilometer 10, 11, 12, 13, 14, 16, these are of the existing channels, kilometer stone. And then after preparation of DPR, some bypasses, realignment are added, then definitely your design changes will be changed. So you connect with design channels with existing channel. In NHI, we used to give latitude and longitude of the channels. Every 10 meter we provide channel. इसमें कोई confusion ना हो. You can transfer the exact channels at ground. This is the Annexure 2, detail for providing ROW for construction zone. There are 3 parts. One is full right of way, channels to channels, कौन सा channels किस section में हम full right of way कब देंगे, कितना राइट. सपोज हमें 45 मीटर ROW एक्वायर करना है, तो हम वो चैनल मेंशन करेंगे जो कि अपॉइंटेड डेट के दिन, यहाँ पर डेट ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉइंटेड डेट, आप अपॉइंटेड डेट डाल दीजिए कि साहब ये ROW हम इस डेट को दे देंगे. देन पार्ट ROW, सम पार्ट इज अवेलेबल, सम यू वांट टू एक्वायर, देन पार्ट ROW आप इस चैनल का ये चैनल मेंशन करके उसका डेट दे दीजिए, अपॉइंटेड डेट. देन बैलेंस ROW, दैट कि अपॉइंटेड डेट के बाद जो 10% का क्राइटेरिया है वो हम कब दे देंगे. एज पर एग्रीमेंट 90 डेज यू आर सपोज टू प्रोवाइड, बट मैक्सिमम 150 डेज की डेट हम मेंशन करके कि साहब बैलेंस ROW इस चैनल में हम विद इन 150 डेज प्रोवाइड कर देंगे. देन अलाइनमेंट प्लान. अलाइनमेंट प्लान में इसमें तो लिखा हुआ है ये विकास कि हम एग्जिस्टिंग को 4 लेन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग को 4 लेन दे रहे हैं तो जहां बाईपास रिलाइनमेंट आप डाल रहे हैं उसका आप दे दीजिए, और बाकी जगह आप मेंशन कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग को फॉलो करना है. लेकिन जहां ग्रीन फील्ड बना रहे हैं देयर यू हैव टू गिव 100% आपको प्लान प्रोफाइल देना. इसमें एक क्लाज मेंशन है एक कि वॉट एवर FRL we has given, it should be treated as minimum. Contractor will design as per actual and provide accordingly. अब इसमें बहुत डिस्प्यूट होता है, I will discuss in detail. फिर ट्रैफिक साइनेज प्लान देना है, अपग्रेडेशन एंड व्हाट, एनवायरमेंट क्लियरेंस आपको स्टेटस बताना है. देन वी कम टू शेड्यूल बी. व्हाट आई सेड कि दीज आर द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आपको रियल स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करना है इसमें शेड्यूल बी में. बेटर है यू यूज सिंपल लैंग्वेज, क्लियर कट एंड प्रोवाइड डिटेल्ड डिजाइन स्पेसिफिकेशन along with construction requirement, specify safety and environment requirement,
and don't try to avoid putting unreasonable risk on contractor, defining parameter which are design dependent and the outdated irrelevant standards. शेड्यूल बी का ये तो आपका फिक्स है, इसमें ओपन ब्रैकेट में जो है वो आप चेंज कर लीजिए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक. ये फॉर्मेट है, ये जो इन्होंने नोट डिफाइन दिया करा है, ये आपको गाइडलाइंस दी है कि आप ये फॉलो करते हुए इस लाइन पे इसको प्रिपेयर करिए. फर्स्ट है वाइडनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग हाईवे. अब इसमें तो 2 लेन के हिसाब से लिखा है, लेकिन आपको 4 लेन करना है तो 4 लेन के हिसाब से इसमें लिखेंगे. विड्थ ऑफ कैरेजवे, विड्थ ऑफ कैरेजवे आपको एग्रीमेंट का एक्चुअली एक्सट्रैक्ट है इसलिए रीडेबल नहीं होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें व्हाट दे हैव मेंशन कि इट इज 2 लेनिंग विथ पेव शोल्डर शैल बी अंडरटेकिंग. तो हम 2 लेनिंग जहाँ करेंगे 2 लेनिंग विथ पेव शोल्डर बताएंगे, जहाँ 4 लेन कर रहे हैं 4 लेन बताएंगे. और इसमें नीचे कि प्रोवाइडेड इन दैट, ये जो टेबल है दैट इज एक्सेप्शन, कि हम जनरली कॉन्ट्रैक्टर को बताने जा रहे हैं कि साहब वी विल बी डूइंग 4 लेनिंग और 2 लेनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. अगर उसके अलावा कोई कैरेज वे हम एक्स्ट्रा विड्थ का चाहिए समवेयर इन बिल्ट अप एरिया और सम इन प्रॉब्लम एरिया, दैट कैरेज वे और चैनेज वी विल डिफाइन इन दिस टेबल. दैट बिल्ट अप सेक्शन का नाम, देन लोकेशन, चैनेज एंड विड्थ एंड टिपिकल क्रॉस सेक्शन. देन जियोमेट्रिक डिजाइन, वी हैव टू फॉलो मैनुअल कि उसमें क्या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का जो डिजाइन पैरामीटर्स है वो क्या चाहिए, वो ऑलरेडी मैनुअल में दिया हुआ है. डिजाइन स्पीड, द डिजाइन स्पीड शैल बी मिनिमम फॉर 80 kmph. ये ओपन ब्रैकेट में आप इसको 100 भी कर सकते हैं. एंड समवेयर सपोज यू आर नॉट एबल टू adopt design speed 100 kmph or 80, suppose some built up area is there, some hill is there, you don't want to cut it, so there chainage you have to define कि साहब इनके अलावा मतलब इन chainage में आपको 60 देना है, 50 देना है, 40 देना है, बाकी आपको 80 kmph और 100 kmph देना. इसमें बहुत डिस्प्यूट होता है. We generally mention one line कि will adopt 80 kmph or 100 and then some built up area curve will be there, some in hilly area some curve will be there, and you contractor is not able to adopt 100 kmph or 80 kmph, then dispute will be there. So you define the changes here where you want reduced speed also. Then improvement of the existing road geometrics, इसमें कहाँ पर आप मेजर कर्व दे रहे हैं, रीअलाइनमेंट दे रहे हैं, बाईपासेस दे रहे हैं, वो आप मेंशन कर दीजिए. राइट ऑफ वे का डिटेल आप दे दीजिए, कितना दे रहे हैं, कितना प्रोवाइड करना है. टाइप ऑफ शोल्डर्स है, इसमें पेप शोल्डर एंड अर्दन शोल्डर, उसका किस चैनेज में क्या है, तो ये आप इसमें टेबल में डिफाइन कर दीजिए क्लैरिटी के साथ. देन स्ट्रक्चर की बात आती है, वर्टिकल and horizontal clearance of the underpasses. What kind of underpasses, what would be the size, you have to mention in this table कि location किस channel में लगाना है, what would be span and opening, and then remarks in it. Then lateral and vertical clearance of overpasses, we have to define that one also. Then service road, where you are going to provide service road, that changes we have to mention clearly, and what would be the width of service road, left hand side differently and right hand side different. Grade separated structure, where some time you want to provide flyovers, grade separators, that is all underpasses, and that you have to mention in this table. Then cattle underpasses, we have to mention where cattle underpasses size is fixed in manual, you have to give only location. Then intersection and grade separators, वो detail of intersection and grade separators को आपको इस format में देना. Then road embankment and cut section. Here you have to be very careful. We have to go as per our plan profile. Wherever raising is there or cutting is there, you can define chainage wise here, or you simply mention as per plan and profile. If you don't have such kind of detail, then better to go by mentioning that you follow plan and profile. Then there won't be any dispute. Then pavement design. Pavement design we have to adapt as per manual. Type of pavement आपको mention करना, whether it is rigid or flexible. Then design requirement. Design requirement में design period and strategy, ये आपको parameter fix करना है कि how many years you are going to design. Generally earlier we used to have 15 years. Now we have modified and 20-year design period we are adopting. Then design traffic. We have to mention how much MSA you require. अगर flexible payment है तो उसके लिए MSA आपको बताना पड़ेगा, और अगर
रिजिड है तो उसके लिए CVPD बताना पड़ेगा, कमर्शियल व्हीकल पर डे, ये आपको क्लियरली मेंशन करना है, और CBR बताना पड़ेगा। इसके बाद इसी में एक प्रॉब्लम आती है जो कि हमने मिनिस्ट्री में जब हमने चालू किया था तो हमने उसमें मेंशन कर देते थे कि साहब आपको इस CBR 8 CBR सपोज 50 MSC के लिए डिजाइन करना है, एंड देन मिनिमम क्रस्ट ये अडॉप्ट करना है कि 500 सबग्रेड, देन 200 GSB, 250 WMM, then 100 DBM, 40 BC. These are the minimum crust composition. However, contractor will design as per actual requirement. तो बेसिकली हमने उसमें मिनिमम डिजाइन आपको मेंशन कर दिया, आप कर सकते हैं, और कंट्रैक्टर को एक्चुअल ट्रैफिक सर्वे कराना है, एक्चुअल उसका VDF बेसिस पे MSA निकालना है, और CBR सॉइल की देखना है, उस बेसिस पे डिजाइन करना है। लेकिन जनरली क्या होता है, आज 15 सालों में 14 सालों में कि एक भी कंट्रैक्टर ऐसा नहीं आया कि साहब आपने जो MSA दिया है वो कम है, मैं ज़्यादा में करता हूँ, और आपने जो क्रस्ट दी है वो कम है, मैं ज़्यादा लगाता हूँ। जो आपने मिनिमम दे दी वही चिपका देते। अब हमने NHI में हमने लिबरल भी किया, तो वहाँ ऐसा कोई कंट्रैक्टर नहीं आया जिसने कम ना किया हो, उसका MSA भी कम आ जाता है, उसका क्रस्ट थिकनेस भी कम आ जाती है। हम उसी ट्रैफिक के लिए मिनिस्ट्री में हमने 300 PQC करी, NHI में वही कॉन्ट्रैक्टर ने 250 PQC करी। क्यों? हमने वहाँ मिनिमम डिफाइन कर दिया था, यहाँ हमने फ्री कर दिया था। तो दीज आर द एम्बिग्यूटी, अनलेस मेच्योरिटी विल नॉट कम इन इंडस्ट्री, दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। Then we have to mention the reconstruction stretches. कि wherever we are doing suppose complete reconstruction, then you can identify these stretches. Roadside drainage, where you are going to provide pakka drains, cover drains, RCC drains, then you define somewhere in built up area or what. Then come to design of a structure part. Here these sentences and parameters are mentioned. You keep it because it is not in open bracket. Only open bracket thing we have to change. कि we have to define what are the major bridge और उनका width क्या है। इसमें 7.5 मीटर लिखा है, लेकिन हम मेजर ब्रिज का width अब चेंज कर रहे हैं। कहीं 16 मीटर है 2 लेन विथ पेप शोल्डर के लिए, 4 लेन के लिए कहीं 25-26 मीटर है, तो वी हैव टू डिपेंड। सो दीज आर द स्ट्रक्चर डिटेल्स। एग्जिस्टिंग ब्रिज टू रिकंस्ट्रक्शन, वी हैव टू मेंशन क्लियरली कि व्हाट आर द रिकंस्ट्रक्शन ब्रिजेज, उनका लोकेशन, उनका साइलेंट डिटेल, और व्हाट आर द न्यू ब्रिजेस are widening. 3 mainly bridges has to be defined in 3 category. One where we are doing reconstruction, another where we are doing widening, and third new construction. इसमें देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है कि उसका लीनियर लेंथ वाटरवे बताना है आपको। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ फाउंडेशन भी बता देंगे कि साहब ओपन फाउंडेशन मारो, 30 मीटर का स्पान लगाओ, ये पियर लगाओ, लेकिन एज पर अगर स्प्रिट आप ECP देखें EPC, तो वो कह रहा है आप केवल उनको लीनियर वाटरवे बता दीजिए, बाकी वो क्या फाउंडेशन लगाना है, क्या उनको स्पान अरेंजमेंट रखना है, लेफ्ट विद देम। बट बिकॉज हमारा माइंडसेट वही आइटम रेट का है, तो हम उसमें सारा डिफाइन कर देते हैं, और बाद में जब ओपन के बदले उसको पाई लगानी पड़ती है, फिर वो COS मांगता है। तो बेटर है कि आप उसको लिबरल रखो यहाँ पर कि व्हाट आर दी, आप तो ये बता दो कि मिनिमम वाटरवे इतना देना है आपको और विड्थ ये लगानी है। देन कलवर्ट्स का डिटेल आपको देना है कि कौन सी कलवर्ट्स और किस टाइप की कितनी साइज की देनी है। देन आपको रिहेबिलिटेशन प्लान बताना है कि रिहेबिलिटेशन में रेलिंग रिप्लेस करना है, क्रैश बैरियर लगाना है, कि अदर रिमूवमेंट करना है, देन यू हैव टू प्रोवाइड इट। ये फॉर्मेट फिक्स है, इसी बेटर है कि हम इसी को अडॉप्ट करें। देन ROBs का रिक्वायरमेंट आपको बताना है, लोकेशन और लेंथ, जो GAD अप्रूव हो गई है या GAD जो सबमिटेड है रेलवेज के, उसी बेसिस पे करिए, अदरवाइज चेंजेज होंगे तो। फिर RUB का डिटेल देना, रिहेबिलिटेशन ऑफ ब्रिजेस का जैसे मैंने बताया, उनकी लोकेशन और टाइप ऑफ रिहेबिलिटेशन, आपको टाइप ऑफ रिपेयर आपको जरूर मेंशन करना है, अदरवाइज एनी चेंजेज विल इनवाइट डेफिनेटली COS। देन रोड साइड फर्नीचर में आप डिफाइन कर दीजिए कि एज पर मैनुअल आपको साइनेज लगाने हैं, तो वो मैनुअल में रिफर किया हुआ है कि IRC 67। ओवरहेड साइनेज डेफिनेटली इसमें डिस्प्यूट रहता है, तो आप उनकी लोकेशन मेंशन कर दीजिए कि साहब ओवरहेड साइन आपको इस चैनल में लगाना है। कंपलसरी एफॉरेस्टेशन में आप डिफाइन कर दीजिए कि कितने पेड़ काटे और कितने लगाने हैं। हजार्डस लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी ताकि वो ऐसा ट्रीटमेंट कर सकें। इसमें 13 नंबर पे चेंज ऑफ स्कोप आता है। Change of scope, here it is mentioned that the length of structure and bridges specified hereunder
shall be treated as an approximate assessment. The actual length as required on the basis of detailed investigation shall be determined by the contractor in accordance with the specification and standard. That's why I was mentioning कि आप वहाँ पर आप लेंथ दे दीजिए, बाकी इसमें वो कहता है कि अगर उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है तो उस पर COS नहीं दिया जाएगा, लेकिन डिजाइनर, कंट्रैक्टर का डिजाइनर क्या करेगा कि उसको स्पैन कम करना चाहेगा। आपके अथॉरिटी इंजीनियर का रोल है कि उसको प्रॉपरली एग्जामिन करे और जो अप्रोप्रिएट लीनियर वाटरवेज है उस बेसिस पे उसका लेंथ डिसाइड करे। देन शेड्यूल सी, इट इज रिलेटेड टू फैसिलिटी। इसमें टोल प्लाजा है, रोड साइड फर्नीचर है, पेडेस्ट्रियन फैसिलिटी है, ट्री प्लांटेशन है, ट्रक लेबाइज है, बस बेस है, रेस्ट एरिया है, एनी अदर थिंग्स वी हैव टू डिफाइन। इनमें आपको जो ए से लेके एच तक मेंशन है उसको क्लियरली पैरा वाइज आप डिफाइन करिए, जो सेकेंड पैरा में फॉर्मेट दिया हुआ है। जनरली क्या होता है फैसिलिटी में, हमने कई बार देखा, इधर लिखता है प्रोवाइड एज पर मैनुअल, मैनुअल कहता है एज पर शेड्यूल सी। अब ये डिस्प्यूट आ गया, कैसे बनाना। इधर हम लिख देते हैं कि एज पर मैनुअल बनाओ और मैनुअल कहता है एज पर शेड्यूल सी बनाओ। तो आपको कुछ तो बताना पड़ेगा कि क्या बनवाना चाह रहे हैं, क्या आप लेना चाह रहे हैं। इसमें खासकर हाईवे लाइटिंग को लेके बहुत डिस्प्यूट होता है, तो वो आप प्रॉपरली आप डिफाइन करिए। देन शेड्यूल डी, डेफिनेटली here we have to define the standard specification and standard. In this schedule D, manual, relevant manual has been referred, as earlier sir said. IRC 73, SP 73 is there for 2 lane with paved shoulder. IRC SP 84 is there for 4 lane. IRC SP 99 for 6 lane. IRC 89 I think 6 lane, and IRC 99 SP, that is for expressway. So whatever you are going to build, that manual you exactly refer. And if you have provided any kind of deviation in your schedule B, that you mention clearly in table. Then come to schedule H. Schedule H, it is a payment related. इसमें they have classified in different head payment mode. रोड वर्क इंक्लूडिंग कलवर्ट एंड वाइडनिंग ऑफ रिपेयर एंड कलवर्ट। इसमें अभी ये NHI ने लेटेस्ट मिनिस्ट्री ने सर्कुलर निकाला है, तो इसमें इन्होंने एक तरह से आइटम रेट टाइप ही कर दिया कि अर्थवर्क का पेमेंट अलग दे देंगे, सब ग्रेड का अलग दे देंगे, सब बेस का अलग दे देंगे, नॉन बिटमिनस का अलग, बिटमिनस बेस अलग, वीयरिंग कोट अलग, एंड वाइडनिंग एंड रिपेयर ऑफ कलवर्ट। इन्होंने हेड डाल दिया। पहले अर्थवर्क का एक था, नॉन बिटमिनस एक, बिटमिनस एक, इसको इन्होंने 7 कैटेगरी में बांट दिया। इसी तरह मेजर ब्रिज वगैरह में फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर को भी बांट दिया है। ROBs को भी कई लेवल में कर दिया है। फिर उसमें पहले हम कहते थे मिनिमम जब 5 किलोमीटर का काम कर लेगा तो ही हम पेमेंट करेंगे, अभी मिनिस्ट्री ने उसको 500 मीटर कर दिया, तो थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है टू इंश्योर कैश फ्लो ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कई बार हमने देखा, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है इंदौर का, उसमें उसने कहा कि साहब आरीवाल जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा अप्रोच तब पेमेंट देंगे। आप बताइए 2-3 ब्रिजेज हैं, अंडर पासेस हैं 8-10, उनका आरीवाल उसको करने में पूरा कंप्लीट कम से कम 100-150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अब 100-150 करोड़ आप किसी से चाहेंगे कि इकट्ठा लगा देगा तब आप पेमेंट करोगे, तो दैट वाज मिस्टेक डन बाय अस। उसके लिए रिलैक्सेशन की बात चल रही विद इंटरेस्ट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि व्हाट एवर द आइटम प्रोवाइडेड इन शेड्यूल बी डेफिनेटली शैल बी कवर्ड इन शेड्यूल एच, क्योंकि आप शेड्यूल बी में जो आइटम रखेंगे उसका शेड्यूल बी एंड सी, तो उसका पेमेंट जब एच में कवर करेंगे तो ही वो काम स्मूथली कर पाएगा। सम टाइम इट हैपन कि शेड्यूल सी में दिया है बट एच में नहीं है, सम टाइम शेड्यूल एच में दिया है सी में नहीं है, बी में नहीं है, तो वो दैट इनवाइज एम्बिग्यूटी। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि जब शेड्यूल बी सी में जो आइटम है वो सारे आइटम शेड्यूल एच में इट शुड बी कवर्ड प्रॉपरली। तो दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसमें हमें परसेंटेज ऑफ अमाउंट डालना है और फिर उसको लीनियर वे में इसको मेजर करना है। शेड्यूल एच जो हमारे मिनिस्ट्री ने लिखा है, हमने उसी को रिफर किया है। नाउ शेड्यूल जे, इट इज ए टाइम शेड्यूल। माइलस्टोन 1 10% होना चाहिए, 35% आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड डिफाइन करना, माइलस्टोन 2, 3 ये प्रोग्रेस है, और इसका जो कितना पीरियड है वो मेंशन एग्जैक्टली करना है हमको शेड्यूल जे में। ये हम गलती कर जाते हैं, हमने कॉपी पेस्ट करने में जो 24 महीने वाले माइलस्टोन वही डाल दिए। कभी हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड अगर 30 महीने है तो 30 महीने वाले डालो, 18 महीने है तो 18 महीने के हिसाब से डालिए। तो इसमें प्रॉपर डिफाइन करिए, अदरवाइज वो डिस्प्यूट क्रिएट करता है।
The, these are the basic fine lines for preparation of schedule. So anyhow, time is over. So conclusion, we have to prepare crucial for guiding EPC contract authority role hai. Then define scope of work, clear cut, and fulfilling the obligation that will definitely, that is essential requirement, and schedule preparation. It should be properly, then only we can get the things delivered in this one. So our recommendation is that you improve DPR quality so that we can prepare exact scope of work, and then refine the process for preparation of schedules, and then fulfill the authority obligation in time-bound manner. Then we can use EPC contract properly, and definitely it will deliver. It has been delivering, and it can deliver also. If you adopt EPC mode of contract for execution of project, public funded project, definitely you don't refer item rate. अभी हम आइटम रेट छोड़ नहीं पा रहे, चूंकि हम आइटम रेट ही करते आ रहे हैं. अगर ईपीसी आप कराने लगेंगे तो डेफिनेटली ये यू विल एंजॉय. हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर से पूछिए, हम एनएचआई में तो हम पीछे 10-12 साल से मिनिस्ट्री में भी लगा रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी एनएच कर रही है. दैट इज बेटर मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन, एंड वी शुड अडॉप्ट इट. थैंक यू वेरी मच. Thank you, S.K. Singh, for your presentation. Very extensive and very educative. Now, may I request my co-chair, Sri Gopal Singh ji, to make his comments on the presenter's views. Yeah. So, thank you very much, Indian Road Congress, for the opportunity to co-chair this insightful session on EPC contracts. I am grateful to our esteemed speakers and participants for their engaging discussions and valuable insights on EPC contracts. As per me, the key takeaways from the session may be: number one, the comprehensive consideration, that is, EPC contracts require careful consideration of technical, financial and legal aspects. Number two is the effective stakeholder collaboration from DPR stage to contract implementation and completion is crucial for project success. Number three is the strategic communication between the authority engineers, contractors, financier is the must. We appreciate the expertise shared by our speakers and the active participation of our audience. As we conclude, we encourage you to apply the knowledge gained today to navigate EPC contract intricacies and foster successful project outcomes. May the connections made today foster long-term collaborations. Thank you very much. Thank you, Gopal Singh ji. Now the time has come to conclude the session. It was a very educative, and Mr. Nirmal has brought out the genesis and the various articles and their importances. And Mr. Singh has brought out the importance of proper EPR, proper Schedule B, which is the backbone of the EPC contract. Thank you both the presenters, and I hope our audience has very well got the idea and the flavor of the EPC contract. Thank you very much. The time is almost over. So I'll request the audience to give their comments in writing so that our presenters can give their clarifications. And if all permit, we can break for tea at the moment, and the presenters can give their comments in email or whatever it is. Thank you. Before conclusion, sir, I would like to request Shri Pandey Saab to present the mark of respect and honor, memento to Shri S.K. Nirmal Saab.
I will request co-chair of the session, Shri Gopal Singh Ji, to present the memento to Shri S.K. Singh Saab, RO NHAI Bhopal. Now I would like to request Shri Salunkhe, Vice President IRC and Secretary Maharashtra PWD, to come over the dais and present the memento to Shri I.K. Pandey Saab and Shri Gopal Singh Ji. Thank you so much, sir. Now, tea break for half an hour. Thank you. He has served around more than 35 years. He has a vast experience of highways, building construction, and other arena of PWD. बहुत जोरदार तालियों के साथ श्रीमान प्रमुख अभियंता महोदय का अभिनंदन। इस सत्र को चेयर कर रहे हैं श्रीमान S.C. वर्मा साहब, चीफ इंजीनियर जबलपुर। You are welcome, sir. S.C. Verma Saab has also completed around 33 years of service in Public Works Department. He has a vast experience of highways as well as bridge constructions. As you know, today's topic is EPC mode of tender. You will be happy to know that recently Shri S.C. Verma has completed the highest length of the bridge of Madhya Pradesh, around 7 flyover, about 7 kilometers of length. The total cost was 1,200 crores, and you will be wondered to know that without any dispute, about 90% work has been completed. And apart from that, 193.50 meter length single cable straight span is there. And this span is the longest of Indian railway in Indian history. So this is how the S.C. Verma Saab has executed the work. जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। अब मैं सत्र को चेयर कर रहे श्रीमान R.K. मेहरा साहब के अभिनंदन के लिए श्री बागोले साहब को आमंत्रित करूंगा। चीफ इंजीनियर उज्जैन, कृपया मंच पे आए और श्रीमान मेहरा साहब का अभिनंदन करें। को-चेयर श्रीमान S.C. वर्मा साहब के अभिनंदन के लिए श्री G.P. वर्मा साहब, चीफ इंजीनियर ब्रिज से अनुरोध है कृपया मंच पे आए और वर्मा साहब का अभिनंदन करें। The presenter of this session, I would like to request Dr. Mahesh Kumar, past President IRC and retired Engineer-in-Chief, Haryana Government. Please welcome Dr. Mahesh Kumar. In this session, the second presenter is Shri I.K. Pandey Saab, former DG, RD and SS, MORTH. Shri I.K. Pandey Saab, please welcome, sir. अब मैं सेशन के चेयर श्रीमान मेहरा साहब से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया आगे की कार्यवाही संचालित करें। श्रीमान मेहरा साहब। Good afternoon. In this session, we are having two lectures. One from Dr. Mahesh Kumar and second from Mr. I.K. Pandey, former DG. And every presenter will have 30 minutes. And I would like to request presenters to be adhere the time, please. First seminar
First lecture, role of authority engineer in EPC and EPC contract and case study by Dr. Mahesh Kumar, past President IRC and ENC retired Haryana PWD. I would like to give a brief intro. Dr. Mahesh Kumar did BSc Civil Engineering as first class, first with honors from Regional Engineering College, Kurukshetra, MTech from IIT Delhi, LLB from Kurukshetra University and PhD from PEC University of Technology, Chandigarh. He has vast experience on various models of contract, including public-private partnership projects and EPC. For last 41 years, he had been involved in multi-various civil engineering infrastructure projects, which also include development of grain market, universities, sports, Authority of India, regional center planning, etc. Now, please, Mr. Mahesh Kumarji, the floor is yours. Thank you. Good afternoon to everybody. I am grateful to all of you to give me an opportunity to be with you and to share my experiences which I had in last 6 years. In 2018, I retired as Engineer-in-Chief of Haryana PWD, and thereafter I have been working on Delhi-Mumbai Expressway and Delhi-Katra Expressway at present in the capacity of an authority engineer. It has been a very lightning experience for me to work as an authority engineer after coming out of the government working. Well, one of the questions, I'll begin my talk with one of the questions from one of the ladies out here. What is the role of authority engineer if all designs and drawings are being given by the contractor? Well, on the date of appointed date, it is expected that the authority engineer should be appointed and should be in a place to work upon. The team leader and the full team, which includes assistant highway engineer, resident engineers, structural bridge engineers, and other staff, they work in the field headquarters where the highway is being constructed. Whereas, the authority engineer and his project coordinator sits at the company headquarters. Say, we at Delhi, and for example, Delhi-Mumbai Expressway, we have different projects at different PIUs, project implementation units at Dosa, Jaipur, Ratlam. So, we have the full fleet team of authority engineer consisting of team leader and all those things at Dosa, Ratlam and Jaipur, wherever the PIU is located. Wherever we have the company's headquarters, there we have authority engineer, we have project coordinator. And of course, the full design team. In full design team, we have a separate wing of highway designing, we have a separate team of bridge designing, environmental auditing, bearing experts, bridges experts. There are almost 40 to 50 individuals who are experts in every field. The question which was asked by that lady was that if the contractor has designed everything, if the contractor's proof consultant does it and the safety design consultant does it. You see, EPC is a document which gives lot of leverage and facilities to the contractor to compromise in the design. And it is here the authority engineers design team comes into picture to check those designs, whether they are sufficient for the present catered traffic, including overloaded vehicles, including other adverse circumstances, whether that design will fit into those parameters or not. Because
authority engineer is considered to be an independent engineer indirectly, who is not supposed to have any vested interest with the contractor or with the client. In a manner, that's why all designs and drawings, starting from plan profile, then coming out to structural design of bridges, ROBs, vehicular underpasses, they all design and drawings are shared with the head office of a company to whom the authority engineer work is allotted. And my 6 years experience shows that there's almost 70 to 80% changes in the designs which are submitted by the contractor. Now, the second eventuality arises when the authority engineer is not appointed at the time of appointed date of the contractor. That mostly the executive engineer or SC, he plays a role of authority engineer. There are many states we doesn't have the design cells as of now. In 1983, when I joined in Haryana, at that time we had a full-fledged building design cell, bridges design cell. We used to do with slide rule and all those things, all those designs. But with the passage of time, when the software skills have come, most of the PWD ceases to have their design cells. I don't know about the Madhya Pradesh, but I know about the Haryana, Punjab, and Rajasthan, those states. When the design cell ceases to exist, then the XCN who is appointed as an authority engineer, he has to outsource all his designs to some reputed institution nearby his place of headquarters, maybe IIT, maybe NIIT or something like that. So this is how the authority engineer, in presence of an appointed authority engineer or in absence of the appointed authority engineer, they operate in any of the documents, whether it is EPC bidding document, whether it is any other form of a contract bidding document. You see, when we evaluate these drawings, it is not only the proof or safety or the structural drawings, there are multiple factors. Hydraulic flood data, because when it is an EPC, the contractor have a tendency to provide RE walls in the abutment of bridges to economize the design. If the HFL data is high, that structure will fail. And if the cost-wise you see, the cost gets down by 75% or something like that. So there's a lot of play in the design part of the document if one is given a free head of that. And after the all design, plan and profile are approved, then it is the supervision role which the team of the authority engineer carries out the field. The work to be executed strictly in accordance with the approved drawing of the head office to achieve the densities and everything, all those things, to prepare the monthly bills as per the contract agreement, to submit the monthly bills to the authority. And these days, even the reply of Right to Information Act are also been prepared by the authority engineer and supplied to the authority. Then, at the stage of completion, when the work gets completed, during the process of completion, there are multiple deviations. There are multiple deviations which come because of, there's a lot of difference between development of project, Schedule B, and contract price weightages. When there's a difference between both those two things, then that results into change of scope, whether it is positive or negative. And it's the change of scope where the tug of war keeps going on between the contractor and the authority engineer initially, and subsequently it gets transferred to authority. Contractor wants to have maximum money, authority engineer tries to reduce it, and this is how things keep moving. So, the success of a bidding document is if any of the department can minimize the change of scope in the EPC contract. Because there comes out a lot of play in that.
Once all these contract price, once all change of scope, etc. is finalized, then we go to the completion stage. And for that completion stage, also there are multiple checks when the project gets completed. There is a comprehensive road safety audit. There is a comprehensive environmental audit. And without these two, the project cannot be thought of for completion. And of course, a multiple variety of tests which are carried out throughout the highway. And that's then multiple inspections. So the role of authority engineer, right from approval of drawings till the approval of hand, is very vast and comprehensive. Now I'll be talking about the case studies which I have encountered in last 6 or 8 months. You see, value engineering is a very popular word because of political hierarchy or otherwise. And this value engineering has gone to such an extent that the contractors in case of MBCB have come out with GUT in place of GI, GUT roads in place of heaven. Just see the difference. As my colleague Mr. Singh was showing a man swinging on a sofa and another a rope hanging. So that's true with MBCB also. So value engineering was such a document which every EPC contractor tried to utilize that. And this circular of 30 August 2022, it says contractors be encouraged to adopt value engineering practices in design, construction and maintenance. And if you go for the value engineering, I'll give you a small example. While designing a pavement, if you use geosynthetic material, which I personally checked myself, 2 layers, one at the GSB level, another at DBM level, there was 43% saving only in the road crust. Now a question arises. You are giving a value engineering to the project. There are no two opinions. But 43% saving in the thickness of DBM. I'll tell you the exact details of that. The DBM thickness reduced from 250 mm to 105 mm. Just because of using 2 layers of this thing. So, multiple instances came over. It appeared before me also. I couldn't find any contract clause to refuse that. More so, the ministry circular also said that it's not possible to refuse a contractor. We examined it as per IRC 37. The design was okay. The contractor says so. Ministry of Circular says on 30th August 2022 that you have to do it. Being a consultant, I am afraid I might not be blacklisted. I recommended it. But one has to understand, it is a public money. The profit is going to the private hands. The taxpayers' money is going to the private hands. We made multiple references to Ministry of Transport as a consultant of ICT. And then we had a circular 22nd February 2023. You see, 22nd February 2023 circular, they agreed with us, and then what they said was that wherever there is a costlier proposition submitted by a contractor, you should accept it
without any claim and extra cost. The client should accept it without claim and extra cost. But remained quiet on that if there is a reduction in cost. Interpretation of that was that we cannot reduce the payment thickness as defined in the contract agreement or otherwise. So that design subsequently, which we recommended in October, we withdrew in March 2023. Fortunately, that time earthwork was going on and the contractor has not reached to that level. So, EPC contract needs a specified skill because there is so much flexibility in this. Now, presently in NHI, almost every contractor is up in arms for raising claims for fly gas. We go to any meeting of the member NHI, what is said is, यार fly gas में तो arbitration में चले जाना, बाकी छोड़ दो. मतलब we have to prepare a bidding document in such a form, in such a way. There are minimum disputes, there are minimum litigations, and because ultimately they all lead to the loss of the public money at the end of the day. There are 4 instructions which have been imparted by either Ministry of Environment or Forest, either Ministry of Road Transport or Highways. One is of 2016, another 2018, 2021, 2023. 2016 says that the contractor and the fly gas provider will bear 50% cost. Then it comes to 2018, we have to drive a specific MOU between the parties. 2021, they say, you know, fly gas supplier will supply you at free of cost. 2023 says different. And the contractors are smart enough to say कि भैया जो सर्कुलर बिडिंग के बाद हमारे हक का है वो तो लागू हो जाएगा, जो हमारे खिलाफ है वो लागू नहीं होगा. This is what has exactly happened in multiple arbitration cases. They have been decided. So we have to put in few disclaimer clauses in our bidding document whenever we prepare that, so that those aspects are covered up in that. There was a time when there was a deficiency of contractors. Today it is not. Today we have multitude of contractors. So the bidding document can be regulated at the choice of the client. So these aspects has to be taken. Payment innovative design, I have just explained in another part. SMA. There is a lot of criticism on Delhi-Mumbai Expressway कि SMA में रटिंग आ गई. सोशल मीडिया में भी काफी चलता रहा पीछे. Stone matrix asphalt. It is true, there are no two opinions about that. We have failed to control the overloading. Our way bridges are installed. Even then we are able to fail. Then IIT Banaras was given the study of the few stretches. And small mistakes. Because in our bidding document, it was not defined whether VG40 has to be used or the polymer modified bitumen has to be used. That resulted into a problem. Now, in all repairs, in all designing in DBM and SMA, all design has been done with VG40, whereas it would have been designed with polymer modified bitumen. Not only that, small negligences on the part of authority engineer have resulted into few issues like one of the gentleman contractors started using marble powder in place of fly gas. It has been established, sir, it has been established.
KCC Kundu Construction Company, his report is with me. This is where we have to be vigilant enough to do all these things. Otherwise, we'll keep getting a bad name. Then, high air voids were left out. Coarser aggregates were not used. These all multiple factors resulted in the crisis in SMA. Madhya Pradesh site was slightly lucky, Raklamwal, but Delhi to Jaipur, we suffered badly. And still the repairs are going on. So this is also, we had a problem. Another is, in two of my projects, incumbrance-free site is very important. In two of our projects, you know, in Punjab, what happened is, on appointed date, we handed over the complete land. But slowly and slowly, the farmers were educated. They found out that on both sides of Delhi-Katra Expressway, we are constructing boundary walls. Farmer here, he has an approach. Here, he doesn't have approach at all. He doesn't know how to go to his field. They started demanding that near the boundary wall, a parallel service road should be constructed so that we can go to our fields. Otherwise, his right of way is gone away. Then they started putting hurdles in the work. One of the speakers in the morning said that 5 kilometers minimum incumbrance-free land is there. और जिसकी जमीन जहाँ आ गई वहाँ पे धरना पे बैठ गए. अब कॉन्ट्रैक्टर तो उसका तो मीटर चल रहा है. He'll make for arbitration claims or something. DRB में जाएगा, arbitration में जाएगा. अब वो सारा का सारा प्रोजेक्ट इधर कंप्लीट हो गया, उधर हो गया, बीच में 8 जगह के पैचेज रह गए. उससे इशू हल नहीं हुआ. नाउ हिज क्लेम इज, क्योंकि लगातार स्ट्रेच उसको नहीं मिल रही है, then his truck supplies have to take a detour to different places by a longer routes. So for a project of 25 kilometers, there is a claim of 63 crore only because of detouring of encumbrances. You see, we have to examine all these issues prior to finalization of bidding document. Otherwise, the projects will have a lot of hiccups, resulting into litigations and other such problems. So detouring, I meant only this, that encumbrance-free site has to be maintained throughout. All these things keep coming in the press. He keeps on making videos with GPS marking and all that. That stands an evidence in law during the arbitration proceedings. And nobody can deny that. And he has a right for claim that. So this is how things move. Then we talk too much about the innovative design in the EPC document. I'll quote you 5 case studies about these innovative designs. First is boundary wall. You see, in my schedule it was given 75 mm RCC with M25. Contractor adopted an innovative design of pre-stressed RCC wall. Of that pre-stress resulted into 55 mm thickness and M40. You'll all agree with me that in a pre-stressed member cracks are less and it has less chances of any deformation. But contractor was not prepared for negative COS. Client was adamant on for negative COS. I prepared it and submitted it, and now the case for arbitration. Second is culverts. In my document, in Schedule B, these were skew culverts shown.
We visited the site. There was no necessity of skew because there was no flowing water. These were the balancing culverts. Well, the contractor submitted the non-skew culverts at 90 degree. The authority engineers approve it. Then probably fear of CTE or something, Chief Technical Examiner or some CVC, I get directions from authority, prepare negative CUS. We prepared it. Again, the case is for arbitration. Third is MBCB barrier. I was telling you, one of the entrepreneur contractors evolved a जो बांस के डंडे होते हैं उससे MBCB बैरियर्स का डिजाइन इवॉल्व किया. ही सबमिटेड इट. अब इसमें देयर इज ए क्रैश टेस्टिंग टेस्ट. उसने पीवीसी पॉलिथीन वगैरह क्या किया गॉड नोस. वो टेस्ट भी पास हो गया. बट सम हाउ वी कन्विंस्ड एंड वी टुक ए स्टैंड. नो देन जेंटलमैन दिस इज नॉट अलाउड. He agreed. So, sometimes if one doesn't agree, he will raise claim for it. So, we have to be very clear about it. There are 7 tests which have been carried out for crash tests. What they did was, they say it has qualified in the crash test. Thry beam जो था वो 2.5 mm. 5 minutes, please, sir. Remaining 5 minutes. I'll do fast. No issues, sir. थ्राई बीम का थिकनेस बढ़ा दिया, घटा दिया और चैनल का थिकनेस घटा दिया. अब उसके हिसाब से फिर वो नेगेटिव CUS में जा रहा है. पर वो इनोवेटिव डिजाइन है क्योंकि वो कहता है क्रैश टेस्ट पास हो गया मेरा. तो दैट अगेन रिजल्ट्स इनटू लिटिगेशंस. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स. फॉर एग्जांपल वे साइड एबिलिटीज. इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड स्किल ऑफ वे साइड एबिलिटीज. एक हॉस्पिटल बनाना है, एक रेस्टोरेंट बनाना है, and if our contractor is constructing, probably when a hospital is going to shift or somebody else is going to shift, there will be completely overhauling of that building. So there's a point to bring wayside abilities only through the experts. So those wayside abilities वो नेगेटिव CUS में आ गया. फिर उसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के झगड़े हो गए. अच्छा, टनल्स जो है पहले सब में था वो घटाए हैं, उसके CUS नेगेटिव CUS में अमाउंट्स में वेरिएशन आनी शुरू होगी. तो इस तरह देयर आर मल्टीपल इश्यूज. इन फ्यू स्टेट्स यू हैव, बिकॉज देयर ओनली 5 minutes लेफ्ट. फॉर एग्जांपल माइनिंग. अब माइनिंग में फॉर एग्जांपल इन फ्यू स्टेट्स से पंजाब, दे हैव इम्पोज्ड कॉस्ट फॉर every quantity of work executed from the earth. जितनी भी मिट्टी खोदोगे उस पर टैक्स लगेगा. अब वो मिट्टी की क्वांटिटीज DPR में देखो, जो कंसेशनर की देखो, उसमें सारों में झगड़ा है. That's another point of contention. We have to try how we can minimize that. Then force majeure events there are multiple force majeure events in this regard. So basically we have to try to frame a EPC document which should have a proper cohesion between Schedule B, development, Schedule A, existing site, Schedule B, development of project, Schedule H, contract price weightages. If there is a coherence in these three chapters, the litigations will minimize. And the best bidding document is which doesn't attract any litigation, attract any arbitration or any such like thing. Thank you very much, sir. I think I'm 2 minutes ahead of that. Next presenter is Mr. I.K. Pandey, former DGRD and SS Morth, Government of India. Sri I.K. Pandey is an eminent engineer and former Director General, Road Development and Special Secretary Morth. Is the founder of Road Varta. He is conducting training programs from his organization Road Varta
and we are also going to conduct his seminar in academy, and we have sanctioned the schedule basically from government. He graduated in the year 1982 in civil engineering and pursued a course of masters in foundation engineering. He did a course in environmental impact assessment and auditing from University of Bradford, United Kingdom, and a course in advanced bridge. Yes. And then Mr. Pandey will cover actually risk and challenges and dispute in EPC contract. So now, Mr. Pandey, the floor is yours. Thank you. Thank you, Chair. Good afternoon, friends. अभी आपने जो मेरे प्रीवियस स्पीकर्स को सुना उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं. जेनेसिस, हाउ दिस हैज़ स्टार्टेड, क्या वेरियस क्लासेस हैं, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल बी की क्या अहमियत है, अथॉरिटी इंजीनियर का क्या रोल है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या इश्यूज आए, ये आपने अभी सुना. मैं कुछ उन बातों पे बात करूंगा आपसे जो आपको परेशान करती हैं और उन चीज़ों के जो प्री सपोजिशंस हैं ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के, यदि वो पूरे हो जाएं तो दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल डॉक्यूमेंट एंड वंडरफुल मेथड ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ वर्क, बट इट सेल्डम हैपन्स. इसमें बहुत सारे प्री कंडीशंस जो हैं वो शायद कभी पूरे नहीं होते हैं, और यदि होते हैं तो शेड्यूल कंडीशन तक जाकर पूरे होते हैं. लेट्स सी, ये क्यों नहीं काम कर रहा, क्या हुआ भाई इसको? ओके, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर दी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. एक तो अथॉरिटी इंजीनियर हैं, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर हैं और तीसरा क्लाइंट आप लोग हैं. जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कंडीशन प्रेसिडेंट हैं, आरओडब्ल्यू है, फॉरेस्ट क्लियरेंसेज हैं, एनवायरनमेंट है, जीएडी ऑफ रेलवेज है, डिज़ाइन कंसल्टेंट्स के काम हैं, प्रूफ कंसल्टेंट्स के काम हैं. यदि ये सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिलिजेंटली किए जाएं तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अथॉरिटी एज ए क्लाइंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंडीशन प्रेसिडेंट ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करने के पहले 100% पूरा करें. सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है लैंड एक्विजिशन की. इनफैक्ट हम इंजीनियर्स हैज नाउ वी हैव बिकम ए मल्टीटास्किंग ऑफिसर अदर देन इंजीनियर्स. हमें एलएबी करना है, फॉरेस्ट भी जाके क्लियर कराना है, दूसरे डिपार्टमेंट्स यूटिलिटी सर्विसेज भी अप्रूव करानी है और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी लेके आना है. मेरा सजेशंस ये है गवर्नमेंट को और आईआरसी को भी कि मेरे रिकमेंडेशंस उसमें भेजी जाएं कि लैंड एक्विजिशन एस्पेक्ट ये रेवेन्यू का मैटर है. इसमें जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, एसटीएम हैं, उनकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइमलाइन हो कि वो लैंड एक्विजिशन करके दें. हमारा काम केवल सर्वे करके ये बताना है कि मेरा ये अलाइनमेंट जा रहा है और इसके बीच में लैंड आ रही है. आई मीन this is certainly none of our business to do a land acquisition process. Similarly, forest clearances, similarly environmental clearances. भाई आप इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें ना. यदि आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लंदन की बात करें या जापान की बात करें तो वहाँ लैंड एक्विजिशन के लिए स्पेशली कलेक्टर या जो एसडीएम के इक्विवेलेंट ऑफिसर्स उनकी ड्यूटी होती है, उनको टाइमलाइन दिया जाता है, वो लैंड एक्विजिशन करके देते हैं. सिमिलरली फॉरेस्ट भी वही इसी तरह से फॉरेस्ट क्लियर करके देते हैं. हमारा काम इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनमें हम जाके क्लियर करें तो एक बड़ी अच्छी बात होगी और शायद हम ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट को बहुत बखूबी अच्छे तरह से निभा पाएंगे. नाउ कम्स टू डिजाइन कंसल्टेंट्स एंड प्रूफ कंसल्टेंट्स. EPC contract is a commercial contract. There is a trade-off between the authority and the contractor. Authority चाहता है बेस्ट सर्विसेज मिले और कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि मैं कितना कंप्रोमाइज कर सकता हूँ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्पेसिफिकेशंस और कितना कॉस्ट रिड्यूस कर सकता हूँ जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए. और यही दिस इज द टग ऑफ वार विच बिकम्स अ चैलेंज फॉर अस टू सॉर्ट इट आउट.
So these are the presuppositions of the EPC contract, जिस पे बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं. उसमें बेसिक तो है कंडीशन प्रेसिडेंट पूरे होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर वेल एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, वेल इक्विप्ड होना चाहिए, रिक्विजिट स्किल्स होनी चाहिए उसके पास में, और उसने बिडिंग के पहले ड्यू डिलिजेंस कर लिया हो कि उसको हर चीज़ पता हो कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में उसे क्या देना है, उसे ट्रैफिक सेफ्टी के लिए क्या करना है और इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड्स कैसे करने हैं. तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हम कॉन्ट्रैक्टर का प्री क्वालिफिकेशन करें या प्री बिड के समय उससे कहें कि तुम प्रेजेंट करो कि तुम किस तरह से काम करोगे, क्या मेथोलॉजी होगी, क्या क्या सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करोगे और डिज़ाइन की तुम्हारी बेसिक पैरामीटर्स क्या है. ये हमने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, एक मेगा प्रोजेक्ट था जोजिला टनल का, उसमें किया था, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स आए उन्होंने सारी चीज़ें हमें जब बताई और हमने उसमें से 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को सेलेक्ट किया, देन वी हैव गॉट ऑल द गुड कॉन्ट्रैक्टर्स ओनली. अभी क्या हो रहा है, हमने इतनी रिड्यूस कर दी है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इनकी, या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि मेरा ख्याल है 15% भी यदि उसने काम किया हो तो नाउ ही इज एलिजिबल नॉर्थ ईस्ट एरिया में, और 25% है हमारे नॉर्मल एरिया में. और यदि उसने जेवी कर लिया और उसमें एक पार्टनर को रख लिया, वो 5% वाला भी है तो वो भी आ जाता है, और वो बैक टू बैक उसको सबमिट कर देता है और बाद में सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड दैट वी मस्ट नो बिफोर हैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वी आर गोइंग टू गेट. और रियल genesis of EPC contract has started from the Delhi Metro when Honorable Engineer Sridharan was the chair of that, this thing. He was such a towering personality कि वो जो भी कहते थे वो सारी गवर्नमेंट सुनती थी. उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को कहा कि रेवेन्यू ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाओ, सारे एलए करके देंगे या सारी चीज़ें क्लियर करके देंगे. दैट हैज़ बीन डन. ही हैज़ फाइनलाइज्ड द डिज़ाइन एंड ऑल डिटेल्ड डिज़ाइंस हैव बीन प्रिपेयर्ड which has formed the Schedule B contract. और उन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्टर का प्री क्वालिफिकेशन किया, और जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट्स के उसको इंसिस्ट किया कि यही मुझे चाहिए, एंड देन ही गॉट द सक्सेस. एंड इस सक्सेस के बाद में गवर्नमेंट थॉट कि ये तो बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे. बट अदर प्लेसेस पे ये सारी प्रोसीजर्स इंजीनियर को या अथॉरिटी को नहीं दिए गए कि वो प्री क्वालिफाई कर सके और किसी को रिजेक्ट कर सके बिडिंग के लिए. तो ये एक बड़ा चैलेंज है. ऑफ कोर्स शेड्यूल बी की बात हो चुकी है और सारी चीज़ें बातें हो चुकी है, तो उसमें स्किप करूंगा मैं. क्लाइंट्स ऑब्लिगेशंस क्या हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें स्पेसिफिकेशन शेड्यूल बी तो क्लियर होना ही चाहिए. प्री कंडीशंस हैं ROW की, ये होनी चाहिए. और इसमें एक है प्रोवाइड सपोर्ट टू द कॉन्ट्रैक्टर. इसमें बहुत बार होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को यूटिलिटीज़ डिपार्टमेंट में जाके उनसे लेके आना है, कोई क्लियरेंसेस लेके आने हैं, उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अपने प्लांट इक्विपमेंट के लिए, हम केवल चिट्ठी लिख देते हैं, और बहुत बार उसी चीज़ को लेके कॉन्ट्रैक्टर बैठ जाता है कि साहब वो डिपार्टमेंट मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है. बट स्पेसिफिक क्लासेज हम अभी बाद में देखेंगे, उसमें कहता है कि हमें अथॉरिटी को केवल चिट्ठी नहीं लिखनी है, हमें बहुत सारा काम करना है. तो ये भी एक चैलेंज. मेंटेनेंस प्रायर टू ऑब्लिगेशन की बात हो चुकी है अपॉइंटेड डेट के पहले, और इनकी भी बात हो गई. तो आते हैं स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट में. आपने शेड्यूल बी को स्पेसिफाई कर दिया है कि शेड्यूल बी में जो लिखा है वही हमारा स्कोप ऑफ वर्क है. यूटिलिटीज़ के लिए आपने कह दिया शेड्यूल B1 में जो यूटिलिटीज़ लिखी है वो हमारा स्कोप ऑफ वर्क है, उसी को आप काम करेंगे. और उसके बाद में उसमें आपने एक डिस्क्लेमर क्लॉज भी एक में डाल रखा है इसी डॉक्यूमेंट में, जिसमें आप कहते हैं कि हमने जो कुछ दिया वो सही है, हमें ये फाइनली चाहिए, और जो हमने DPR दी है या जो इन्फॉर्मेशंस दी है, जियो टेक्निकल समिस्ट्राटा के इन्फॉर्मेशंस दी हैं, यू हैव टू फॉरगेट अबाउट इट एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. यहाँ पे जो एम्बिग्यूटी है या जो चैलेंज है वो ये है कि DPR कंसल्टेंट तो 2 साल में DPR तैयार करता है, और हम कॉन्ट्रैक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 महीने के अंदर ड्यू डिलिजेंस करके हर चीज़ पता कर लेगा. अनफोर्सीन जो भी चीज़ें हैं, अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड सभी चीज़ों के अकाउंट फॉर कर लेगा. बहुत बार अंडरग्राउंड बहुत सारी यूटिलिटीज़ होती हैं,
और जब आपने ये कह दिया कि अनफोर्सीन की कास्ट सारी की सारी कॉन्ट्रैक्टर को बियर करनी है, देन इट बिकम्स ए प्रॉब्लम। कॉन्ट्रैक्टर कहता है नहीं ये तो आपको पे करना होगा, और हम उसमें कहते हैं नहीं पे करना होगा। देन कम्स टू द आर्टिकल 13 चेंज ऑफ स्कोप। चेंज ऑफ स्कोप में एक प्रोसीजर है कि वो चाहे अथॉरिटी चेंज ऑफ स्कोप चाहता है या कॉन्ट्रैक्टर चाहता है, बोथ कैन कम, बट देयर इज अ टाइम लाइन, और वो टाइम लाइन फॉलो नहीं होती है। द अथॉरिटी के लिए है कि 180 डेज के बीच में जो भी चेंज ऑफ स्कोप करना है कर देना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा हो रहा है कि 90% या 70% टाइम खत्म होने के बाद में कहता है चेंज ऑफ स्कोप करना है, एक फ्लाईओवर डालना है, ये डालना है, और वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो दिस टाइमलाइन हैज़ टू बी फॉलोड, एंड we must know to say no to the authorities, the administration, whosoever, I mean, insist that नहीं ये change of scope करना है, हमें नहीं मना कर देना चाहिए। We have to be, I mean, so secondly, change of scope को एक proper procedure से ही करना है, एक notice issue करना है, order करना है, बाद में otherwise सारे में झगड़े होते रहते हैं रेट के बारे में, और ये करना था ये नहीं करना था, उसमें कॉन्ट्रैक्टर जिसमें फायदा होता है वो चेंज ऑफ स्कोप में मुंह जबानी भी कहा तो आपने करना शुरू कर देता है, और जब आप ऑर्डर इशू करते हैं तो वो चेंज होता है तो परेशानी होती है। रिगार्डिंग दी लैंड क्वेश्चन या कंडीशन प्रेसिडेंट में 90% लैंड हैज टू बी गिवन इन कंटिन्यूअस 5 किलोमीटर्स बिफोर अपॉइंटेड डेट। ये बहुत बार नहीं होता है, और फिर प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट में कि आप जब आप मेमोरेंडम साइन करेंगे within 10 days of signing of the agreement, उसमें सारी चीज़ें लिखेंगे कि कौन सी लैंड आपने दे दी, कौन सी नहीं दी, और ये भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ता है कि within 180 days आप वो सारी लैंड उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और यदि नहीं हो पाया, और आफ्टर द 90 days ऑफ द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यदि आप 90% लैंड नहीं दे पाते हैं, देयर इज ए क्लास ऑफ डीम्ड टर्मिनेशन, बट हम डीम्ड टर्मिनेशन कभी मानते नहीं हैं, और यहाँ से हमारा फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। ये बात हम कर चुके हैं, ये डीम्ड टर्मिनेशन की बात अभी करी। डैमेजेस का प्रोविजन है, यदि हम डिले करते हैं तो हमें डैमेज देना है, और 10.5 के तहत EOT भी देना है, और आर्टिकल 8.3 के मुताबिक हमें उसे कंपेंसेट करना है, बट मैक्सिमम लिमिट इज ओनली 1%। अभी जैसा बात कर रहे थे कि यदि आपने कंटिन्यूअस लेंथ में नहीं दी है और टुकड़ों में है और बहुत बार उसे डिटूर करना पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ क्लेम बिकम्स सो हाई। तो ये चीज़ें करने के लिए इसमें कुछ प्रोविजंस हैं कॉन्ट्रैक्ट में, यदि आप लैंड नहीं दे पाए हैं तो जो म्यूनिसिपल एरिया से जा रहा है, अर्बन एरिया से जा रहा है, फॉरेस्ट से जा रहा है, ऐसी लैंड है, उसे आप डीम्ड टर्मिनेशन का क्लास है, यू अप्लाई दैट, यू इशू ए नोटिस दैट इज डीम्ड टर्मिनेशन। एंड सेकंड, जो अदर जो बाकी आपने नहीं दे पाए हैं अदर देन दिस, वो 10% आप डिस्कोप कर सकते हैं, सो दैट यू कैन डिस्कोप विद इन 180 days ऑफ द अपॉइंटेड डेट। और यदि आप कर दें तो शायद क्लेम्स और डिस्प्यूट्स तो नहीं होंगे, बट प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। दिस इज वन ऑफ द चैलेंज, ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। दिस विथड्रॉल वी हैव डिस्कस्ड। हाँ, अनदर थिंग, एक होता है माइलस्टोन के कंप्लीशन पे झगड़ा होता है। आप माइलस्टोन हमेशा 10% ऑफ द ओरिजिनल स्कोप ऑफ वर्क से डील करते हैं। यदि आप लैंड नहीं दे पाए हैं, 90% ही दिया है, देन आपको प्रो रोटा बेसिस पे उतना उसका जो 10% है उसको घटा के और फिर आपको माइलस्टोन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक झगड़े का काम होता है, अथॉरिटी ये मानता नहीं है कि स्कोप का तो 10% ही होना चाहिए। बहुत बार अथॉरिटी भी नहीं मानती है, कहती हम एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे देंगे, लेकिन आपको यही करना है। ऐसा मेरा ख्याल है स्पिरिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही हमें ऐसा करना चाहिए। एंड this will reduce our challenge to deal with. And next is, यदि scheduled completion के डेट के अंदर यदि वो उन स्ट्रेचेस में काम पूरा कर देता है, तो we should not delay the completion certificate, and we should issue that. But this is also not being done in many of the cases because of many other issues, because administrative pressure or public pressure or whatever it is. This becomes a challenge for us.
दिस हैज बीन ये जो सपोर्ट ऑफ टू द कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे थे, द contract document says the authority agrees to provide support to the contractor and undertake to observe, comply with and perform subject to and in accordance with the provisions of the contract. So our job is not only to write a letter, it becomes our responsibility to go to that authority, get this thing done, and ensure that this help is provided to the contractor. इसमें एक अनदर एस्पेक्ट इसमें कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन है कि यदि इनकम्प्लीट वर्क रह जाता है तो बहुत बार ये होता है कि हमें साहब एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे दीजिए. द कॉन्ट्रैक्ट सेज कि ही शुड बी अलाउड टू कंप्लीट द वर्क अंडर द डैमेज क्लास रादर देन गिविंग एन ईओटी, क्योंकि द मोमेंट यू इशू एन ईओटी without considering the spirit of this contract, his claim becomes due कि नहीं आप उसे डैमेज नहीं लगा सकते. So this need to be given a thought of. Contractor की जो obligations है आर्टिकल 4 में, there are many things which we have already discussed earlier. But there is one clause which says good industry practice. We expect that the contractor should work in accordance with the good industry practice. What is good industry practice? That means he will certainly, with due diligence, follow all the practices, methods, techniques, designs. लेकिन यहाँ पे जो चैलेंज है और ट्रेड ऑफ है वो है compromise the design, compromise the methods, so that maximize the profit. Good industry practice कितने कॉन्ट्रैक्टर समझते हैं ये पॉसिबल हो सकेगा only when you do the pre-qualification of the contractors. This is one of the most important aspects, that contractor must understand what means the good industry practice. These are the common reasons. बहुत बार बात हो चुकी है इस पे. इसकी मैं बात कर रहा था unforeseeable difficulties. इसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि the contractor accepts complete responsibility for having foreseen all difficulties and cost of successfully completing the works. बहुत बार बहुत सारी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज छूट जाती हैं, ओवरग्राउंड टावर्स तक छूट जाते हैं, उसमें मेंशन नहीं करते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी अनफोर्सिएबल को डिफिकल्टीज को अकाउंट फॉर अपने कॉन्ट्रैक्ट में कर लेगा. ये this really becomes a tug of war and challenge which risks your project and delays the completion and cost overruns. This is another contradictory, this is the clause which puts you in contradiction, that when your representation authority says the authority has the full power to execute, deliver, and perform its obligation under the agreement. That means you have the full control, full possession of the stretches land under the contract. But बहुत बार तो हमें प्रेशर होता है आप अथॉरिटीज से, गवर्नमेंट से कि वर्क अवार्ड करना है, क्योंकि हमें अवार्ड का टारगेट दिया हुआ है. तो हमने शेड्यूल डी करने के बाद भी कह देते हैं कि अब तो हम कर लेंगे 3 महीने में, और हम चले जाते हैं. शेड्यूल डी ओनली सेज कि वेस्ट, the land west with the control of the government, but it didn't give the possession to you unless you pay the compensation to the beneficiary. So this particular clause or आपकी non-performance, non-compliance of the condition precedent puts you in a challenging mode कि आप dispute के लिए तैयार रहिए. Again, that is Article 6 disclaimer. आप सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हो, DPR भी दे रहे हो, उसकी एक ड्राइंग भी शेड्यूल बी में भी रिफर कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, then how can you say disclaimer, भाई? This is a contradiction in the contract. And इसलिए जो अभी हमारे एसके सिंह ने कहा कि भाई आप DPR बड़ी अच्छी तरह से करके करिए, सारी चीज़ों को शेड्यूल ए में डाल दीजिए तो होगा. एक इंस्टांस हम बताते हैं कि महाराष्ट्र का एक प्रोजेक्ट था, उसमें PQC करना था उसे, और शेड्यूल ए में कहीं भी नहीं लिखा था कि जो सब स्ट्राटा है या जो भी ये ब्लैक कॉटन है
And when he has gone to the site and started executing, जो वहाँ पे कंसर्न चीफ ही हैं तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको उसका चेंज ऑफ स्कोप ब्लैक कॉटन का दे देंगे। और जब हमारे पास केस आया तो हमने कहा नहीं हम तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल बी में तो लिखा हुआ है कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सिक्यूट इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिकेशंस एंड द साइट कंडीशन एंड यू हैव टेकन द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द investigation of the project before bidding. So this type of things goes to the arbitration and claims और फिर responsibilities fix होना शुरू होती है। इसी तरह से एक मैटर आता है टेम्पररी राइट ऑफ वे का। यदि आप किसी ऐसे एरिया से जा रहे हैं जो कि कमर्शियली डेवलप्ड है या है और उसको डाइवर्सन का प्लेस चाहिए तो कॉन्ट्रैक्टर को बहुत मुश्किल होती है, नहीं मिलती है। तो वाई वी शुडंट प्लेस ए क्लास इन दी लैंड एक्विजिशन एक्ट और लैंड एक्विजिशन रूल्स इटसेल्फ कि टेम्पररी के लिए भी एक नोटिफिकेशन किया जाएगा, जैसा कि सेक्शन 11 के अंदर जो आपका रेक्ट फ्लोर एक्ट है, सेक्शन 11 में प्रोविजन है कि आप सर्वे के लिए जब किसी के लैंड में जाएंगे तो उसे कंपेंसेशन देंगे। सिमिलरली आप इसमें एक प्रोविजन मॉडिफाई किया जा सकता है एक्ट और रूल्स में कि उसको टेम्पररी एक्विजिशन के लिए भी एक नोटिफिकेशन हो जाए, उसको जो उस पर फी डिफाइंड हो, फी दे के आप ले लो, और दिस बिकम्स ए सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। अदरवाइज दिस इज आल्सो ए प्रॉब्लम। दिस इज फेस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स मेनी टाइम्स। अगेन आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड टू दी यूटिलिटीज, बिकॉज यूटिलिटीज जो शेड्यूल B1 में आपने लिख दी उसके लिए आप पे करते हैं, बट अनफोर्सीन के लिए दिस बिकम्स ए टग ऑफ वॉर की क्या करना है। सो दिस हैज टू बी गिवन। एक पर्टिकुलर आर्टिकल है डिसमेंटलिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसमें आप कहते हैं 100% कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विदाउट गिविंग ए थॉट कि कितना डिसमेंटलिंग है। यदि कास्ट ऑफ डिसमेंटलिंग माइनर है तो कोई इशू नहीं, बट देयर आर प्रोजेक्ट्स जिसमें डिसमेंटलिंग कास्ट भी इनॉर्मस होती है, 1% तक भी कॉन्ट्रैक्ट की जा सकती है, तो ऐसे क्लासेस बिकम्स ए प्रॉब्लमेटिक। क्वालिटी कंट्रोल, ऑफ कोर्स अथॉरिटी इंजीनियर हैज ऑलरेडी टॉक्ड, एंड यदि क्वालिटी कंट्रोल ठीक से नहीं किया जाए तो ऐसी हालत होती है। इस तरह की कंक्रीट मेजर स्ट्रक्चर्स में ये एक बड़े ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट की फोटोज़ हैं जिसमें during construction the girder has failed, and this is the type of concrete, and this is another way where people have insisted कि आप इसमें corrosion resistant steel use करेंगे, उसके लिए fusion bonded use करेंगे, लेकिन fusion bonded तो अभी से corrode हो गई है। How can you stop the corrosion in this this thing? So technology which is really sustainable has to be used. That is one of the things which has to be kept in mind. एक प्रोविजन है वीडियो रिकॉर्डिंग का, जो कि बार बार इंसिस्ट करने के बाद भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। उसको कॉन्ट्रैक्टर को हर क्वार्टर पे करना है, और प्रोविजन है कि यदि कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता तो अथॉरिटी इंजीनियर करके उससे उसके क्लेम वसूल करेगा। और ये प्रॉब्लम आती है जब हमें बोनस देना होता है कंप्लीशन के लिए, क्योंकि बोनस के समय मैंने एक बार इंसिस्ट अथॉरिटी इंजीनियर से अप्रूव होके आ गया कि बोनस देना है। मैंने कहा भाई इसका एक वीडियो दिखा दो मुझे कि कंप्लीशन के समय आपने सारी चीज़ें पूरी कर ली। कहा गया वीडियो तो साहब नहीं बना है। हमने कहा आज की डेट पे पूरा करके आज की डेट में बैक डेट से मान लूँगा कि तुमने काम पूरा किया है। और जब मेरे पास वीडियो आया तो उसमें मैंने देखा कि न तो उसके सीरीज़ के क्वेड्रेंट्स पूरे हो रखे हैं, ना ही सोल्जर्स प्रॉपरली ड्रेस होके प्रॉपर हुए हैं, और ना ही उसके स्लो प्रोडक्शन मेजर्स किए हुए हैं। मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। वो हाईएस्ट अथॉरिटी तक पहुंच गया, वहाँ से सिफारिश करा रहा है, वहाँ से प्रेशर दे रहा है कि नहीं साहब उसे दे दो। दिस challenges you have to face unless you insist all these things and keep the as a client I would say अथॉरिटी इंजीनियर को भी अपने कंट्रोल में रखिए। बहुत बार अथॉरिटी इंजीनियर is going beyond your control and he puts you in problem. Anyway, जब काम अच्छा नहीं होता है, अनसेफ होता है, तो there are two clauses, suspension of unsafe construction work. ये एक बड़ा भारी चैलेंज है। कॉन्ट्रैक्टर तो आ गया, बेकार कर ही नहीं रहा है। अब आप इसमें अनसेफ को आपने रुकवा दिया, आप कैसे कराएं? प्रोविजन तो है कि आप काम करा के 20% एक्स्ट्रा पैसे ले लीजिए, लेकिन कराएंगे कैसे आप? आपके पास कोई सब्सिडियरी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, और यदि आप कॉन्ट्रैक्ट
लगाने जाते हैं तो उसका टेंडर कैसे कॉल करें, क्या करें, दिस इज ए रियल चैलेंज. सो अगेन आई वुड से selection of contractor is very, very important. Another is contractor failure to rectify the defects. तो एक क्लास है सस्पेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स राइट्स. अच्छा, पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में, पहली वाली क्लास में कोई लिमिट नहीं है, आप कभी तक भी उसको सस्पेंड करके रख सकते हैं इंडेफिनिटली टिल कंप्लीशन ऑफ द वर्क. लेकिन कब तक रखेंगे आप, वो कर ही नहीं रहा तो आप क्या करेंगे. देन देयर इज ए क्लास फॉर सस्पेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स राइट्स, एंड इसमें एक बड़ी स्पेक्युलर थी क्योंकि लिमिट केवल 90 डेज की है. आपने उसके राइट्स तो सस्पेंड कर दिए एंड यू हैव इंटर्ड इन द शू ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, then it becomes 100% your responsibility to make it safe. You have to rectify. अब इसमें ये भी है कि वो 60 डेज का क्योर पीरियड है, आप 60 डेज में उसे ठीक करा लें, नहीं तो आप उसको रिवोक करना पड़ेगा. तो यू आर अगेन बैक टू पेविलियन एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. आई थिंक ओके. एक है इंश्योरेंस की क्लास. 5 minutes remaining, sir. Right. I'll skip some of this thing. Most important चीज बता देता हूँ. एक है इंश्योरेंस का. इसमें लिखा है कि यदि कॉन्ट्रैक्टर इंश्योरेंस नहीं लेता है तो अथॉरिटी इंश्योरेंस ले लेगी, और यदि कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट तो पिछले डेट का पैसा ले लेगी और उसको एब्जॉल्व कर देगी. ये तो मेरी समझ में नहीं आता क्लास आई कैसे. आपने बैक डेट का उससे इंश्योरेंस का पैसा लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने ले ली, और यदि उस पीरियड में यदि कुछ भी डैमेज हुआ है तो कॉन्ट्रैक्टर कैन से कि यू आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरेंस. आपने तो पैसा ले लिया इंश्योरेंस का, अब आप इंश्योर करो इसको. दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज. आई थिंक ईपीसी डॉक्यूमेंट हैज टू बी करेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद दिस. टर्मिनेशन, आई थिंक I'll skip it. इसमें एक ही इशू आता है, वैल्यूएशन ऑफ द अनपेड वर्क्स, विच इज अ रियल चैलेंज एंड वेयर वी नीड द अथॉरिटीज इंजीनियर्स ड्यू डिलिजेंस कि कितना काम एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं है. क्योंकि हालत तो यहाँ पे ये है कि कंक्रीट पेमेंट्स में मोर देन 5 mm 10 mm तक के क्रैक्स हो जाते हैं और कंप्लीशन में उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है. तो एक्सेप्टेंस के समय में आई थिंक द क्लाइंट हैज़ टू बी वेरी वेरी विजिलेंट एंड हैज़ टू कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद अथॉरिटी इंजीनियर टू इंश्योर दैट वट एवर इज एक्सेप्टेड इज एज पर स्पेसिफिकेशंस. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के प्रोसेस हैं. ट्रैफिक रेगुलेशन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं. Completion of project, I will skip remedy for failure to ensure overhead cost of the authority engineer's role, authority security. तो मेरा जो फाइनल सजेशन है इसमें कि यू नीड एन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग बेसिकली, जिसमें कि अथॉरिटी जो है उसके जो ऑफिसर्स हैं दे आर वेरी वेल वर्स्ड with the EPC provisions as well as the technology which is being involved here, and what exactly they want, they must know it before preparing the bid document. There has to be a proper, timely actions by the authority. बहुत बार हो रहा है कि हमारे तरफ से एक्शंस नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्लेम्स डालते रहते हैं और हम साइलेंट रहते हैं, एंड अल्टीमेटली वी लूज इन द आर्बिट्रेशंस प्रोसीडिंग्स. तो thank you with this thing, but my suggestions may be taken on record. I'll request the IRC as well as the government to take into note of these, differing role of responsibilities. Engineers should be allowed to do what is their domain of work rather than doing a multitasking aspects. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for a valuable presentation. Now, we should have a question answer. First, we will take question answer for Dr. Mahesh Kumar. So please, from audience. Role of authority engineer in EPC contract.
माइक ऑडियंस में भी दीजिए. Yes, from audience, anybody wants to have question? अभी नहीं है. No written comments from audience. थैंक यू वेरी मच. मैं विजय वर्मा बोल रहा हूँ, फॉर्मर इंजीनियरिंग चीफ. मेरा आपसे अनुरोध है कि अपन एक ऐसा रिकमेंडेशन भी करें. आपने भी कवर किया था, आपने भी वो एक इशू कवर किया था कि रुकावट आती है काम में लैंड के कारण. कभी अपन सोचते हैं कि ये लैंड है और फिर बाद में कुछ एजिटेशन होते हैं राइट ऑफ वे में कि भाई आपने नया हाईवे बनाया ग्रीनफील्ड या फिर अपग्रेड किया और आप चाहते हैं कि उसमें से ट्रैफिक अच्छे से निकले, सेफली निकले. सेफ्टी आप देना चाहते हैं ना फास्ट ट्रैफिक को. अब गलती क्या हुई है हमसे, हमने उस व्यक्ति के लैंड को 2 हिस्से में बांट दिया या गांव को एक तरफ कर दिया और खेत एक तरफ कर दिया. अब वो अपने हल बखर या बैलगाड़ी या ट्रैक्टर ट्रॉली वो कैसे लेके जाएगा? तो वो कॉन्ट्राफ्लो तो होगा ही होगा. एक्सीडेंट तो होंगे ही, रात में दिन में सब में होंगे. मोटरसाइकिल से अपोजिट में जाएगा. तो इस पर मेरा ये सुझाव है, अपन आईआरसी में आज यहाँ बैठ के अगर ऐसा कुछ करें कि बहुत सारी चीज़ें इम्यूट की है आपने, फ्रीज करी है आपने, वो शेड्यूल में कहीं कहीं फ्रीज किया है, ओपन रखा है कहीं जगह, वहाँ पे बैलेंसिंग कल्वर्ट के रूप में बहुताय अधिक से अधिक हम ओपनिंग पोरासिटी दें उस हाईवे में. पोरासिटी का मेरा मतलब है कि उसका यूज़ वो लोग जो बैलेंसिंग कल्वर्ट में भी हो जाए, बरसात में से उसमें पानी भी निकल जाए उथला उथला, और बाकी समय में वो उसको काउंटरफ्लो को ना करते हुए अपनी सेफली एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाएं. अगर इसको अपन उसमें ले लें, बैलेंसिंग कल्वर्ट की मिनिमम डायमेंशन होना चाहिए. मिनिमम डायमेंशन जो भी होती है वीयूपी होता है, सबसे छोटा जो होता है 2.4 मीटर वाला, अगर वो ले लें तो थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ेगी, थोड़ी सी बैलेंसिंग कल्वर्ट वर्सेस वो वीयूपी की जो कॉस्ट है थोड़ी सी बढ़ेगी. लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉन्ट्राफ्लो जो होते हैं पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी कम हो जाएंगे. You see, we learn by the experiences when we execute the projects. So, from Delhi, Katra or Delhi, Bombay, we have learned it, that a access has to be given to the farmers to the fields. And for that, even if it is within our boundary, or we have to acquire an extra land, we have to construct a parallel service road throughout so that all the farmers have an access to the highway. That we learn by that. As far as your suggestions for the balancing culverts or the vehicular underpasses, I think they have been sufficiently given in these two packages which I am dealing at present, and same can be taken care of by the state PWD officers also when they comply with that. One question I have get it, amendment in authority engineer is done from 50% to 100%. Will it be applicable in running projects? Well, friends, if you ask my personal opinion, we should be 100% fully responsible for the execution of a good projects, whether the authority says or don't say for it. We are morally, because we are drawing salary, we are drawing money out of the authority. Even if they don't say, then also we should be 100% responsible for all that. Yes, a second. This is my personal opinion. Other question. Sir, is there any policy, suppose somebody is changing Schedule B, whether it is a EPC project or a HAM project, like we have written SMA, he say no, I will use VG40. We have written CTSB, contractor say no sir, new technology has come, so we will put GS reinforcement as per IRC 92 in the GSB also, and thickness is coming very less. Now cost is reducing. Now already we discussed that cost can increase or decrease. So we should have some policy with, if we change this our schedule, what shall be done for HAM project, for EPC, for other. If some policies are made by the NHAI or the ministry, this will help the user, sir. You see, this the is policy. This is my small suggestion. Mr. Snither, let me tell you, the policies are not going to help us. It is the bidding document which is going to help us. So in the bidding document, providing of minimum cross thickness is very important. It's, because you see, ultimately when you design for a perpetual payment, you have a life of say 50 to 100 years. So when you design for a perpetual payment and when the defect liability is of say 10 years for the contractor,
Let the contractor come forward with giving an additional value input by means of providing geosynthetic and geotextiles. By maintaining the minimum thickness, it will reduce his maintenance cost. So, bidding document has to be foolproof for that. Yes. Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. I'm Sunil Verma, ex-chief engineer from MPRDC. And first of all, my sincere congratulations to Mr. Pandey and Dr. Mahesh for giving that excellent overview on this EPC document. And many things were the eye-opener. My question is that, most of the places we find that quality of authority engineers personnel, the manpower at the field, are not very well equipped with the knowledge and which we expect. Like our department is also engineering department, and so many engineers are there, directly supervising them, and they are feel like the authority engineer got the highest authority, and we are all managers. But this thing is that, there is a provision of training, at the regular interval for all the staff of the authority engineer to tackle with the, day-to-day problem. It should be fortnightly or monthly like that, so that because all the engineer for all the circumstances, they will not be very, comfortable. So, and knowledgeable also. Mr. Verma, please ask a specific question. My question is I understood what you want to ask. Yeah. You see, quality of deployment of the staff of authority engineer today is a greatest challenge. But let me tell you, friends, highway infrastructure is still a lucky part. If you go to a railway project or a metro project, many of the seats are vacant. And what now they have decided, will take the highway people, will train them for the railways, and will deploy them. So, with this kind of working in the coming, say, 6 months or a year, it's going to be a terrible challenge for highway engineers. When the railway have taken a call, highway engineers, please come to us, we'll train you for the railway jobs and work with us. And same model might have to be adopted by we people also, by adopting the highway people, railways people. So, there are no two opinions. The quality is a big challenge. There are comprehensive training programs being given by IAHE or otherwise, and things are moving. And all said and done, when we compare the works of NHI, of Ministry of Road and Transport Highways, after having served in PWD for say 30-35 years, I still can say that these two organizations are giving a better infrastructure to the country than what we could give in PWD. Yes, from this side. Sir, This side. good afternoon, sir. Myself, M.K. Jain, DGM, MPRDC. सर मैं ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे ईपीसी का है, तो ईपीसी हो या सम एनी अदर फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो ट्रायंगल है अथॉरिटी इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर, तो यहाँ होता ये है कि जब एग्जीक्यूशन होता रहता है या कोई ड्राइंग आपने अप्रूव की, डिज़ाइन अप्रूव की, तो अप्रूव करने के पहले तक तो उसकी जिम्मेवारी रहती है कॉन्ट्रैक्टर की कि करवाना है। एक बार कर दिया आपने, किसी प्रेशर के कारण भी कई तरीके के होते हैं कि जैसे प्रोग्रेस हो या कुछ भी तरीके से आपने कर दिया तो फिर आपकी जिम्मेवारी हो गई। अब एक बार अथॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो तो सारी जिम्मेवारियां अल्टीमेटली अथॉरिटी पे शिफ्ट हो जाती हैं। तो आप या तो सर मेरी बात सुनिएगा, सर प्लीज एक मिनट, तो या तो आप पूरी जिम्मेवारी कॉन्ट्रैक्टर पे दे दें कि भाई आप डिजाइन करें। अब उसमें कास्ट का क्यों अपन चेहरा देखते हैं कि कास्ट कम होना चाहिए ज़्यादा, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दें या फिर अथॉरिटी ले, क्योंकि जैसे ही दोनों हट जाते हैं फिर अल्टीमेटली अथॉरिटी को सब देखना पड़ता है। ऐसे authority is spending the money and authority engineer and contractors both are responsible for any of the lapses. There are no two opinions about that. Authority engineer cannot escape any responsibility, neither the contractor can escape responsibility. Ultimately, authority engineer and contractor, they both are driving the funds from the authority. So, both will carry a major responsibility for that. इस साइड से ले लेते हैं, बोलिए आप कुछ बोलने वाले थे। माइक दे दीजिए वहाँ। Good afternoon, sir.
Sir, I have two specific questions regarding first, which I have mentioned in the morning session, that we are talking about the cost reduction and the innovation. And for that, the contractor is assigning design consultant, proof consultant to different agencies. But after that, the authority engineer has to approve those drawings and design. But sir, I'm the part of the authority engineer right now, and we are facing such challenges that might be we are not acquainted and we are not good enough in that technology which contractor is giving to us, the technology per se or the design part. So, sir, there will be accountability issue on the part of the authority engineer. सर तो इसमें हमारे लिए भी एक ट्रेनिंग का प्रोविजन मतलब चाहिए होता है, क्योंकि हमें उतनी बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं पता है, बिकॉज वी आर कंस्ट्रेंड इन आर डोमेन्स. So sir, I just want to ask your suggestion regarding that, the accountability of the authority engineer, because हमारा उतना knowledge नहीं है उस domain में. You see, when I started my presentation, I explained your answer at very length if you had been hearing it carefully. You see, most of the PWD organizations or the state autonomous bodies, they earlier, 20, 30 years back, had their independent design cells. And they used to do every possible thing at their own level. And we, in our times, by use of sliding rules and calculators, we had been doing that. But with the passage of time and the IT skills have come up, these departments doesn't have their design cells, most of them. So there's a point in outsourcing of the contractor's design to some NIITs or IITs to get it checked. Reason being, the contractor is a vested party who will go for the most economical and threshold designs. So there is a point in checking it alternatively from any other source, either yourself or from outsourcing. So Thank you, sir. So my another question is, You can mail IRC for discuss further with me query. during You lunch can discuss hours. in lunch time. Actually, we are having limited time. Now we will have questions for yes. Solution to your problem. You see, if the authority engineer is approved just before the appointed date is issued, तो उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्टर अपना डिज़ाइन मेथोलॉजी देता है, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान देता है, डिज़ाइन फिलॉसफी देता है, वो भी अथॉरिटी इंजीनियर को देखनी होती है. उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि डिज़ाइन कंसल्टेंट ये करने के पहले पूरी डिज़ाइन फिलॉसफी में हमें ट्रेन करेगा, और इस कंडीशन के साथ आप डिज़ाइन डायरेक्टर को अप्रूव करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को आप बोल सकते हैं. सिमिलर वे आप प्रूफ कंसल्टेंट को कह सकते हैं. बहुत बार बड़े जो आपके एक्स्ट्रा डोज ब्रिजेस हैं या सस्पेंशन ब्रिजेस हैं, उसमें इंटरनेशनल कंसल्टेंट होते हैं, प्रूफ कंसल्टेंट या डिज़ाइन. उसमें आप स्पेसिफिक क्लास रख सकते हैं कि ये हमें ट्रेनिंग देगा, इन साइट ट्रेनिंग देगा और एब्रॉड भी विजिट कराएगा, और हमें इसमें क्या कहते हैं, प्रूफ कंसल्टेंट और डिज़ाइन कंसल्टेंट दोनों अलग अलग तरीके से हमें अपनी पूरी डिज़ाइन फिलॉसफी बताएंगे, और उसको समझने के बाद में आप अप्रूव कर सकते हैं. ये प्रोविज़न हमने गंगा ब्रिज में रखा था. तो ये इंश्योर करना क्लाइंट और अथॉरिटी इंजीनियर दोनों को मिलकर कर लेना चाहिए. तो कॉन्ट्रैक्टर इस बात पे डिज़ाइन कंसल्टेंट को प्रूफ जब आप वो करेगा तो आपकी सोल्यूशन हो सकती है. ये तो फैक्ट है कि आज की डेट में 2000 ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं और अथॉरिटी इंजीनियर एक में 12 चाहिए, तो है ही नहीं, तो कहाँ से होंगे, इंजीनियर तो है ही नहीं. We will take two more questions for Mr. Pandey. Anybody? Sir, I have a question. Yes. Sir, dispute and challenges in EPC contract. सर नमस्कार सर, मैं योगेंद्र बागोले, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी. सर मेरा एक सजेशन है या रिक्वेस्ट भी है कि हम जो सीआरएफ के जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अभी ज़्यादातर हमारे इंटरमीडिएट लेन के हैं. जब मैं स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के लिए शेड्यूल डी पे जाता हूं, तो मेरे पास मतलब भरने के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है. तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इंटरमीडिएट लेन के लिए भी एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, जिससे कि हमारे लिए कन्वीनियंट रहे, जो कि मतलब कि ईपीसी के लिए बहुत जरूरी रहेगा. सर आई हैव क्वेश्चन. थैंक यू सर. सर Point well taken. IRC will take it up. सर फ्रॉम द बालकनी. हाँ प्लीज. सर बेसिकली ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में
मतलब प्रूफ कंसल्टेंट और सेफ्टी कंसल्टेंट के प्रोविजंस होते हैं डॉक्यूमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में। पर हमारे यहाँ पे PWD BNR में जनरली 100 CR से नीचे के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो शायद मैं अभी कंफर्म करना चाहूँगा ये हायर ऑफिशियल से भी कि क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि हमारे यहाँ पे 100 CR से नीचे के प्रोजेक्ट में हम कंसल्टेंसी हायर नहीं करते हैं, मतलब पर्टिकुलरली इन BNR। तो हमारे पास ये सर चैलेंजेस आते हैं कि अब जैसे किसी का 32 या 50 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, अब वो हमारे पास में डिज़ाइन ड्राइंग के अप्रूवल्स के लिए भेजते हैं, तो हमारे पास इतने एक्सपर्टाइज नहीं होते हैं, और उनके पास भी क्योंकि 100 CR से नीचे कंसल्टेंसी हायर नहीं करते, तो उनका ये रहता है कि आप रुकिए, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। सर गवर्नमेंट का सर्कुलर है कि 2% क्वालिटी के कंट्रोल हम 10 करोड़ से ऊपर के कामों के लिए रख रहे हैं, तो उस पर हम प्रूफ चेक करा सकते हैं। 2016 का सर्कुलर है सर। पूरा। आप ये अपना हमारे इंटरनल डिस्कशन आप कर सकते हैं बाद में, लेकिन रिलेवेंट क्वेश्चन पूछिए जो यहाँ पर एक क्वेश्चन और वन मोर क्वेश्चन वी कैन हैव, देन वी विल सम ऑफ द टू सेशन। हेलो, 2 लेक्चर्स। आई एम अरविंद चेंडके, मैं चीफ इंजीनियर PWD से रिटायर हुआ हूँ। 10 साल में टेक्निकल एडवाइज़र भी रहा MPRDC में। मैंने ये जो पर्टिकुलर EPC कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज़ एज गुड एज लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स। पुराने टाइम पे, आज से 50 साल पहले हमने वो एग्जीक्यूट किए हैं। आई एम हैविंग 54 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो उसमें हमने ये देखा है कि पर्टिकुलरली उस टाइम ये जो कॉन्ट्रैक्ट लमसम था वो मेजर ब्रिजेस के लिए वो अप्लीकेबल रहता था, और मैं मेजर ब्रिजेस पे 5-7 मेजर ब्रिजेस पे रहा हूँ, सब में लमसम कॉन्ट्रैक्ट ही रहे, दूसरी कोई स्कीम नहीं थी उस टाइम। तो उसमें मैंने ये पाया, और मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी वो लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स के ही करीब करीब सभी प्रोविजंस वो लगा रहे हैं रोड वर्क में। मैंने ब्रिज में देखा कि कम से कम लेंथ ऑफ ब्रिज, HFL, सॉफिट लेवल और फाउंडेशन लेवल्स, ये 4 चीज़ें फ्रीज कर देना चाहिए हमारे यहाँ से। और सबसॉइल इन्वेस्टिगेशन हर पियर पे अबटमेंट के ऊपर ठेकेदार को भी करने के लिए बोलना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम DPR का जो कंसल्टेंट रहेगा वो। दूसरी एक चीज़, इससे ही प्रोविजंस हम रोड वर्क में कर सकते हैं। पूर्ववर्ती कुछ स्पीकर्स ने बतलाया अभी रोड वर्क में कि क्रस्ट थिकनेस इतनी होना चाहिए, वो बातें कंपलसरीली होना ज़रूरी है। दूसरी एक बात मैंने देखी है ये EPC कॉन्ट्रैक्ट्स में, इसमें यह हो रहा है कि शेड्यूल H जो रहता है, यदि कोई वेरिएशन आपका हो रहा है तो उस वेरिएशन में कभी तो वो शेड्यूल H लगाते हैं या कभी फिर वो SOR के ऊपर चले जाते हैं। तो वो न करते हुए जो भी प्रोविज़न दिए हुए हैं उसके अंदर पॉजिटिव या निगेटिव जो भी उसमें हम वेरिएशन दे रहे हैं, तो उसका वैल्यूएशन SOR से या रेट जो फिक्स किए हुए हैं उसी से ही होना चाहिए, उसका शेड्यूल एस से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। थैंक यू। Solution is okay. Very good. Very well taken out. You see, I mean, the crux of the business is that the client must know what he wants. जब तक क्लाइंट को ये नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली मुझे ये चाहिए, आपने कहा मुझे डिनर दो और आपने उसमें यदि स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे ये चाहिए तो वो कुछ भी खिला देगा भाई। यही फैक्ट है। सो द क्लाइंट मस्ट नो आफ्टर द DPR is prepared, he has to go thoroughly to the DPR as well at the site and ensure that whatever he wants, that is reflected in the schedule B without any ambiguity. हाँ, certainly. I mean, जो अभी PQC का रेफरेंस दिया गया था, it is well established कि 270 mm के नीचे का PQC is bound to fail in fatigue. बट कई जगह या IT पेप से करके 250 mm का आया, कॉन्ट्रैक्टर कहता है मैं कर देता हूँ, आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो इस चीज को इनफैक्ट उसमें शेड्यूल बी में डालना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने रेफरेंस दिया था श्रीधरन का कि उन्होंने ये चीजें फ्रीज कर दी थी, इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ 100%. I think yes, one query was asked about the manual that people are interested in that 5.5. intermediate
I mean, there is no manual for intermediate lane. That is what is the query. In fact, manual we started, initially it was only for 2-lane. That was Planning Commission's requirement that even for state road, they want manual to address to the widening. So if it is a single lane road or an intermediate lane road, they want it to be widened to 2-lane. So the manual is addressing that issue that all the roads, whether it is single lane or intermediate lane, when we will do widening, then what should be the requirement, what should be the specifications. Now, if there is any specific demand from any state, if they feel that they have a single lane road and they want to do only intermediate lane road, so if there is a request, then IRC can work on consultancy basis. We can modify our 2-lane manual to suit to the requirement of any individual state. But at present, the requirement is only to widen to intermediate or single lane to 2-lane minimum. So that is why we have 2-lane manual and then 2-lane to 4-lane and then 2-lane to 4-lane or 6-lane expressways. So that is why these manuals are like this. If any, I mean, your state, if you demand that you want to have only your road to be widened to intermediate lane, whether it is a without any road or whether it is a single lane road, then we can do that particular task only per individual state and only on consultancy basis IRC can prepare. We are preparing for rural roads manual on consultancy basis. Similarly, we can do this for any state. Yes, sir. We will refer the case for 5.5 meter wide road. Okay. We will refer on consultancy basis. Now it was a nice question answer time. Now I will request my colleague Mr. Verma to sum up the two lectures. थैंक यू सर. सर अभी महेश कुमार साहब ने और आई के पांडे साहब ने अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आपको अभी अपना जो ज्ञान था वो बांटा आपके बीच में, जो डिस्प्यूट थे और जो अपना रोल था एई का. तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर अपन जो मध्य प्रदेश में जो काम प्रैक्टिस है वो 2.10 पे हम काम कर रहे हैं. हमारा एग्रीमेंट अलग डॉक्यूमेंट है और ईपीसी डॉक्यूमेंट भारत सरकार के काम जो है हमारे पास में वो हम ईपीसी पर कर रहे हैं. तो 300 करोड़ से कम के जितने काम हैं सारे हम जैसे आप लोगों ने बताया हम लोगों को भी वो सारे ए हमारा ई है हमारा. तो ई जो है हमारा ए का बड़ा रोल है इसमें और अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ई को सारे डिजाइन अप्रूव करना है. और हमने जो क्रस्ट का डिजाइन जो डीपीआर में दिया है वो एक पूरा हमने कांस्टेंट कर दिया है. तो वो फ्रीज होगा एक तरह से कि हमने दे दिया कि 300 पीक्यूसी 250 पीक्यूसी वो करेगा, उससे अधिक ही करेगा अगर डिजाइन में आ रहा है, उससे कम नहीं करेगा जैसा हम लोगों ने अभी ईपीसी में हम काम कर रहे हैं. तो एई का रोल ये है कि अथॉरिटी ने जो डिजाइन डायरेक्टर अप्रूव किया है वो अथॉरिटी बड़े आंख खोल के डिजाइन डायरेक्टर को अप्रूव करे, पढ़ा लिखा हो डिजाइन डायरेक्टर. उसी प्रकार प्रूफ कंसल्टेंट पढ़ा लिखा हो और फिर सेफ्टी वाला भी ठीक ठाक हो. तो वो ड्राइंग अगर प्रॉपर बन के आएंगी अपने पास में तो निश्चित ही हमारा ई जो है वो थोड़ा समझ के लोगों से पूछ के, हमारे पास भी हमारी डिजाइन विंग है मध्य प्रदेश में, उनसे बात करके उस डिजाइन को अप्रूव करेगा. तो जो ई हमारे काम कर रहे हैं साहब लोगों ने बताया है कि आप लोग अपनी जो ड्यूटीज़ है उसको बहुत ही अच्छे से करिए, अन्यथा वाकई हम लोगों को बाद में ठेकेदार को बहुत क्लेम देना पड़ेंगे. तो क्लेम ना देना पड़े, कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए पर डे उस डॉक्यूमेंट में 1 घंटे में हम नहीं समझ सकते इसको. चूँकि मैंने ईपीसी पे भी काम किया, फ्लाईओवर जोड़ बनाए हम लोगों ने, हम आज भी उसको नहीं समझ पाए हैं. आज भी हमारे पास रखा रहता, गाड़ी में कहीं कुछ चीज़ क्लास पढ़ना पड़ते हैं. तो जितने लोग हमारे काम कर रहे हैं आज के सेशन में जो डिस्प्यूट और रोल बताया अथॉरिटी का, वो सारे लोग प्रॉपर पढ़ें तो गवर्नमेंट के ऊपर निश्चित रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. और फिर हो सकता है कि अथॉरिटी इंजीनियर के ऊपर बात आ जाए पेमेंट के लिए. डिस्प्यूट होगा पर डे पर रनिंग मीटर जो है उससे पैसा देना है ठेकेदार को. अगर आप जगह नहीं दोगे, उससे जगह नहीं दोगे आप रेलवे के कारण या भोजन के कारण, तो आपको पर डे पर रनिंग मीटर जगह देना है. मैंने इस बात को कलेक्टर को लिखा जबलपुर में कि सर इतना इतना पैसा आ रहा है, ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमारी तरफ से सारा हमने पूरा बना के हमने पूरा केस दे दिया आपको, आप नहीं कर रहे हो, इतने दिन से ये पेंडिंग है आपके यहाँ पे. उस पर बहुत विवाद हुआ मेरा. मैंने रेलवे को लिखा कि आप हमारा जेडी अप्रूव नहीं कर रहे हो, 3 महीने हो गए हैं, आपको पर डे पर रनिंग मीटर से 30 लाख रुपये पर डे आ रहा है, इतना पेमेंट आप करना पड़ेगा. बहुत रेलवे ने बड़े समय पे हमें काम करके दिया. तो मेरा ये कहना है कि हमें अपनी ड्यूटी करना है, डरने की जरूरत नहीं है किसी को. जो है हमें अपनी ड्यूटी करना है. प्रैक्टिकल ये है जो मैंने देखा फ्लाईओवर में कि अथॉरिटी को हर 15 दिन में मीटिंग करना पड़ेगा.
अपने अथॉरिटी मतलब एई के साथ में। वो डिजाइन डायरेक्टर जो है मेरे पास से बॉम्बे का था और स्तूप डिजाइन डायरेक्टर था। मैंने उनको नोटिस दे दिया था जब ड्राइंग उन्होंने नहीं दी, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में जबलपुर फ्लाईओवर में 2700 नंबर ड्राइंग लगी है उसमें, 2700 2700 नग ड्राइंग जो है। तो हम 15 दिन में ड्राइंग को रिव्यू करते थे, क्योंकि काम तो ठेकेदार हमारा कर रहा है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, एनआईटी अपना भोपाल, सारे लोगों से बीच बीच में हमने इससे भी प्रूफ चेक कराया जो है। तो ईपीसी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। 1100 करोड़ रुपए का हमने बड़ा सक्सेसफुल काम किया है, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। लेकिन मालिक जो क्लाइंट है उसको चढ़ के रहना पड़ेगा ऊपर, ठेकेदार को उस पर हावी नहीं होने देना हमारे ऊपर। ना प्राइवेट, हमारे पास यही प्राइवेट है, हमारे पास कंसल्टेंट था, उसको भी हावी नहीं होने देना है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात महेश कुमार साहब ने और आई के पांडे साहब ने बताई हैं, पर ये 1 घंटे में समझने बाद हमने काखा का सीखा है। इसको आप और पढ़िए। जो एक जिनके पास में सीआरएफ के काम है उनको पर डे राम जैसे आप पूजा करते हो ना, कुछ अपना भजन करते हो या कुछ करते हो, वैसा इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ेगा आपको, और नहीं तो निश्चित वो ठेकेदार करोड़ों रुपए ले जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, अगर सरकार का पैसा पेमेंट हमें करना पड़े हमारे मतलब गवर्नमेंट को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फिक्स होना चाहिए। तो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, मेरे ई हैं, शिवेंद्र हैं, बीच में विश्वकर्मा ई थे, मेरे जो साथ में काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि इस तरीके से प्रोजेक्ट को निकाला है हम लोगों ने। बड़ा चैलेंज था सर, उसमें अवार्ड हो गया, 9 महीने के बाद भू अर्जन हुआ और 20 शहर से लेके जाना था हम लोगों को। तो मैं इसलिए बांट रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस कि निश्चित ही जो माननीय मेहरा साहब ने जो मुझे यहाँ पे बैठने के लिए मौका दिया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मालिक हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप अपनी ड्यूटी को, अपना जो तनख्वाह दे रही गवर्नमेंट, जो नौकरी कर रहे हैं हम, अगर आप जवाबदारी से करेंगे तो आज का जो सेशन है आपको बहुत काम आएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वर्मा जी, थैंक यू। धन्यवाद सर। आपके इस ब्रीफ से डेफिनेटली सबका मोरल हाई हुआ होगा और एनर्जी बूस्ट अप हुई होगी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से मैं आप लोगों से एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं। As you know, the topic of this seminar is emerging trends and technologies in road and bridge construction, as well as EPC contract execution. EPC contract is being discussed here today. Yesterday, we have discussed emerging trends and technologies in the road and bridge construction. जैसा कि ये सब्जेक्ट है, उसी के रेफरेंस में हमारे आग्रह पर, हमारे निवेदन पर देश से भिन्न भिन्न अंचलों से और एमिनेंट और रिनाउंड कंपनीज डिस्प्ले किए हुए हैं टेक्निकल एग्जीक्यूशन में अपने प्रोडक्ट्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि अभी तक वहाँ कोई लोग अवलोकन के लिए नहीं पहुँच रहे हैं। उनका ये कहना है कि साहब आपके आग्रह पे हमने दुकान लगाई, बाजार में भीड़ भी बहुत थी, सेठ जी भी बैठे थे, दुकान में माल भी था, लेकिन ग्राहक नहीं आया। तो आपसे अनुरोध है, कृपया एक बार जरूर उस टेक्निकल एग्जीबिशन का अवलोकन करें। इट विल डेफिनेटली एनहांस योर नॉलेज एंड यू विल बी एबल टू डिलीवर मोर एंड मोर एफिशिएंटली इन योर फील्ड। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट चेयर ऑफ द सेशन श्रीमान मेहरा साहब टू प्रेजेंट द मोमेंटो टू श्री आई के पांडे साहब। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इससे मॉर्निंग सेशन में हमारे क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाए थे, सिंह साहब के हैं और भी सर थे, तो हम लोग सर उसको अपन पैनल डिस्कशन के पहले ले लेंगे, तो एक जनरलाइज क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। जो लोगों का अपेक्षाएं हैं क्वेश्चन की, तो वो कर लेंगे तो बेटर रहेगा। सर डेफिनेटली सर। यस प्लीज कम फॉर मोमेंटो प्लीज। को चेयर ऑफ द सेशन श्री एस.सी. वर्मा साहब से अनुरोध है, कृपया श्री महेश कुमार साहब को स्मृति चिन्ह भेंट कर अनुग्रहित करें। श्री एस.सी. वर्मा साहब। Now I will request the Secretary General of IRC, Shriman Nirmal Saab, to come over the dais and present the memento to Shri R.K. Mehra Saab and Shri S.C. Verma Saab.
Thank you so much, sir. So nice of you. Thank you so much. Now we will proceed for lunch. It will be around 1 hour break. Thank you so much. And the next session will start at 2:30 p.m. sharp. It might have given you a lot of knowledge and information. Now, we are proceeding for panel discussion, and the topic of panel discussion is new technologies in road and bridges. There are 5 panelists. The panel discussion will be chaired by Shri S.K. Nirmal Saab, General Secretary IRC. Other panelists are Professor M.A. Reddy, IIT Kharagpur, Shri S.K. Singh, RO, NHAI Bhopal, Shri R.K. Mehra Saab, Engineering Chief, Madhya Pradesh, PWD, and Dr. Sanjay Srivastava, ex-President, Dilip Buildcon. I request all the panelists to come over the dais, please. Welcome, sir. जोरदार करतल ध्वनि से सभी पैनलिस्ट का अभिनंदन किया जाए। इस आयोजन के लोकल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्रीमान संजय मस्के साहब, चीफ इंजीनियर भोपाल जोन से अनुरोध है कृपया मंच पर आएं और श्री एस.के. निर्मल साहब, प्रोफेसर M.A. रेड्डी साहब और श्री S.के. सिंह साहब का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें। श्री मस्के साहब। प्रोफेसर M.A. रेड्डी साहब का भी अभिनंदन करें सर। श्री S.के. सिंह साहब, RO NHAI का भी अभिनंदन करने का अनुरोध है। Now I will request Shri Surendra Godkhede साहब to come over and please welcome the Shri R.K. Mehra साहब and Dr. Sanjay Srivastava साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मंच सौंपना चाहूँगा चेयर ऑफ द सेशन, चेयर ऑफ द पैनल डिस्कशन, श्री S.के. निर्मल साहब, जनरल सेक्रेटरी IRC। थैंक यू सर। Good afternoon. We have come to the last technical session, that is panel discussion on new technologies and roads and bridges, which was discussed basically yesterday, and we had about 3 presentations in addition to the Nogel program, because first half was taken by the Nogel program itself, and then we had the 3 technical sessions, and today we had 2 sessions in the morning on EPC. So the main theme, because that is what I discussed with Mehra Saab before taking up the subject, that he said new technology is, we are very keen on further discussion on new technology. That is why we kept this, otherwise we thought we will have a mix of EPC as well as new technology, but I think quite a lot questions already you have covered, and if any more questions are there, maybe if the time permits today in this session, or otherwise the closing session also we can have. If still there are some queries on EPC contracts, or even otherwise we can have, you can send your query, you can send your mail, we can answer that. So anyway, whatever, if the time permits, we can take up even further queries on the EPC. But this session we are discussing new technology. So as we have seen yesterday, we have heard Honorable Union Minister Sri Gadkari ji, your Chief Minister, Bhopal, Madhya Pradesh Chief Minister,
Madhya Pradesh PWD Minister, everybody is talking about new technology, Navachar in highways, in every area now, right from the Prime Minister to all the, every level, we are discussing about innovations and new technologies, and highway also we are discussing. So I want to set the context, and in that I have a small brief presentation also. So can we have that brief presentation also for setting the context of this panel discussion? So the theme is new and innovative technologies for roads and bridge construction. So in this particular panel session, we would like to have all the ideas, all the panelists can speak on all these aspects. Necessity, why we need new and innovation in the road and bridge construction, what is the need? Then what are the contractual provisions, whether it is allowed or not allowed? Because unless there is something in the contract, how we will do it? So what are the provisions, whether they are adequate or inadequate? If any suggestion comes, purpose of the panel discussion is to have even the suggestions for further improvement. Or if any queries are there, that also we need to address. So what are the contractual provisions? Then what are the technologies in road sector, and particularly for pavements? Then similarly for bridges, yesterday we had one session on bridges by Sri Alok Pandey, though he is not present today, but we can take up those issues also. If any queries are there, we can address them. Then what is happening to the technology for which no codes are available? So accreditations by IRC. Then what are the problems? Though everybody is pushing, from the topmost level, from the union minister level to all the, everywhere there is a talk that we should have, but still it is not being used. So what are the problems? Where are the problems? And for those problems, what are the challenges and what are the solutions for those problems? So then what recommendation we have from the panel, that also we can see. And most of yesterday we have discussed about many of these technologies. On stabilization is technology which we are receiving a lot of requests for approval of the new materials. Earlier it used to be only lime and cement stabilization, but now a lot of chemicals have come. So commercial chemical stabilizers are coming in a big way, and they are helping in reducing the thickness of the pavement. So this is one new and innovative technology where we are economizing on the thickness of the total crust by using these materials, and even improving the CDRs by using them. Then pavement recycling and rejuvenating agents, that we can use the existing pavement, we can mill it, we can reuse it. What percentage we are allowed in the code, what they are using elsewhere, and what are the advantages, disadvantages. Though it is not a new technology, so to say, even 1990 we had the first circular. That is about 30 years back, the first guideline was there from ministry that we should do recycling. But still it is not being used. So why these technology, which we know that if you use the existing road, you mill it and then relay it, definitely it is using some of the existing material, then it will be economical. But still, why it is not being used? We have our IRC code also. So these are, we will discuss those issues. Then use of waste plastic. Now government is pushing very hard that we should use waste plastic. First code came in 2013. Then based on the experience and feedback, we revised it into 2020. And government is making it compulsory that on these roads, even the ministry is asking that at least 10% road you should do waste plastic. NHAI has also issued circular that all service road must be with waste plastic. So
are we able to use it or are we finding any difficulty? Whether IRC code, is there any problem in IRC code? So all these issues, we can talk about that in the panel discussion. Then there are other new materials for which codes are also available, like CGBM is one. Mostly it is for urban roads, that cement grouted bituminous mix. Still, it is only 2 experimental projects they have done in last 4 or 5 years. And even then, nobody else is prepared to take this. So there are issues why they are not able to take it. Then one of the code which have come very recently and is a real new technology, because high performance bituminous mixes, there was a need, there was a research scheme given by NHAI, and IIT Kharagpur had done, based on their last 6 years research work, this new technology, high performance bituminous mixes, and what are the challenges in using it, what are the candidate places where they should be used. I think we have Professor Reddy also, who has directly done this research work and was instrumental in bringing this IRC code. Then perpetual payment also was finding place in our IRC 37. Since I think 2018, we have just one para, and now we are preparing a full code on perpetual payment. NHAI has also brought out a circular on particular traffic level. We must use all perpetual payments. But what are the challenges? Why we will not be able to use? Why? What are the issues? Then use of industrial waste. What we are talking about, the waste to wealth. IRC has come out a specific code on only this subject. All the industrial waste we are taking in that code. Whether it is a marble dust or fly ash or any kind of waste we can use on highways based on the feedback and R&D done in our research institutions. So these are some of the technologies related to road, and yesterday we have heard from Mr. Alok Pandey about the bridges part. So IRC has also come out number of codes based on the work done in research work done or feedback or international best practices. IRC 37 is allowing first time in a big way cemented base and cemented sub-base, though it was very much opposed when we brought it into IRC code. That without any real R&D in India, why we have allowed this? We did not have a fatigue model in India for cemented base, cemented sub-base. But elsewhere in some other countries, we found that it is very useful. And based on their feedback, we have used this. And now almost it is not a new technology at all. Every project of NHAI ministry, you find this cemented base, sub-base is being used. Even geotextile also we have now brought into mainstream. Even there is a separate code, but IRC 37 also is bringing in that geotextile use in payments. Then recycling, already I told it is a 2015 code, and still we are calling it as new, but this is not new. Then the use of C&D waste, because that is what we are now asking, that a lot of waste material is there. Building material, building is dismantled, road is dismantled, there are waste material. Where to use, how to use it. So when we have a scarcity of this material, we should use in amendment. That is what yesterday we heard from our ministers have also. Then one code has come very recently, that glass fiber enforced polymer bars. In fact, that is what Minister Gadkari Saab was saying. Even in my house, I am keeping these glass bars to show that this is a very good technology and you must use it. And in fact, he was instrumental in bringing this code. He asked me that within 6 months, I want an IRC code. Though normally it takes 2-3 years minimum to prepare a code. But this time he gave me a challenge that IRC should bring out this code in 6 months' time. So I had a separate committee, a separate group of experts, taking from all the IITs, all the leading research institutions, and that 16-member group was formed only to prepare this code. Every 15 days they were having meeting, and this Professor Ravi Sinha from IIT Bombay was playing a lead role in preparation of this particular code. And in a very short time, we prepared this guideline, as well as state-of-art report also has been prepared, and I think will be published very soon. But code is already available, 2022. So for part 1 is glass fiber, then other options are also there. But first we have prepared this code only to use the glass fiber enforced polymer bars. Then use of geosynthetics, I think that is what even Ministry of Geotextile, they have realized
that maximum potential of geosynthetic is only on pavement. We have frequent meetings with them. Even they are taking up with Ministry of Road Transport also that how you can popularize the use of geosynthetics in pavement. So we have updated that code, whatever some amendments also have brought, we have brought very recently. So we have tried to address all the problems and see that it can be used to the efficiency, full efficiency. Then stabilizing using cement, lime and fly ash, that is already I discussed. Stabilized pavement, earlier there was no guideline and a lot of commercial stabilizers were there, but now IRC SP 89 is addressing all those issues and there is no need for accreditation, though I am receiving large number of requests because any material which is coming from abroad, I mean all these people are taking technology from abroad and they are asking that we should use our Indian roads. And PWDs will not allow any such materials without having any specific code because they're all patented materials. So these people are coming to IRC that why don't you approve our material so that at least we get a certificate from IRC and then we can use this material. Though they may be very good, they may improve the CBR like anything, but still unless it is examined by IRC accreditation committee, they feel that they will not get any job in India. So a lot of requests are coming, though there is already a specific code. We have IRC SP 89. Then use of waste plastic, as I told you, that this code was earlier 2013 and 2020. And to my surprise, even now, though 2019 there was a World Road Congress and I presented one paper on all the how to have the sustainability in roads and what are the various options we are using in India. And I was talking about waste plastic, that we have an IRC code. Then even from the Western countries, I mean, those sitting with me from United States, Australia, UK, they said we cannot allow use of waste plastic in pavement because we feel that your pavement will fail. So I said we have already tested on rural roads and now we are going to test in a big way on our highways. So Australia has come out with a code after our IRC code came. So we were probably the first in the world to bring a code on waste plastic use in pavement. And last month, in fact, last week itself, I was in, again, a World Road Congress meeting in Germany. Even there, the delegates from Belgium, Austria, they were still skeptical that, are you still using waste plastic? So I said, now there is a circular from even NHAI that all service road must be done only with waste plastic. And every state is using waste plastic in a big way, and we have no complaints at all. Though the isolated cases may be there, that is there in every technology. But now it is already almost mainstreamed. So world is watching us that what is the experience of India, and they are all bringing in codes because disposal of waste plastic is a big challenge for every country. So this is one that waste plastic is, we are pioneer in bringing this technology. Then cold mix is not a new technology now because it is used almost all the hill states they were using for last couple of years. Then warm mix asphalt also, initially we came with a code in 2014. Everybody knows it is advantageous to use waste plastic, warm mix asphalt. Because energy saving is there. You can have, you don't require those temperature of mixing. You require 30-degree less temperature of mixing. But still, though there was a code in 2014, still nobody was doing it. And there were only 2 cases that yesterday, I think in that presentation also it came, Jaipur Ringas, because I was monitoring that road, what is happening to, how much we have used, what is the performance on Jaipur Ringas road where we have used. And 2 months back, there was in a seminar, I was sharing a dais with Professor Murali Krishnan from IIT Chennai. And he says, we have done some R&D now last year in IIT Chennai. And we find that waste plastic, this warm mix is a good technology. I said, already there is a code for last 7 years. We have done so many work on field and now IIT Chennai is again putting a stamp. Yes, we find it is very useful and why you are not using, we don't know. So this is also one of a very promising technology but not being used. Then guideline for gap-graded wearing courses with rubberized bitumen also is a technology which is being very much used in United States and many of the developed countries. But though code is existing from 2015, still we are not using. Though rubberized bitumen we are using as a modifier, crumb rubber bitumen, but not other technologies of crumb rubber.
and it can be used definitely because Western countries are using this particular technology. So these are some of the technologies I wanted to just give a brief background that what are the reasons and why, how we have brought. Then another one is the slag, because we are talking a lot of waste material is available in India, that is iron slag, steel slag and copper slag. So initially we came out with this code 2018, and because of apprehension that highways will be having a larger traffic, whether we allow them on highways or not. So initially the title is, it is for rural roads. Then we had many presentations, even I presented in this case to Planning Commission also, and then they said, why only restricting to rural roads? Why not you are bringing this technology to even our highways, high traffic roads? So I said, we don't have much experience of their use even in rural roads, but when we find that there are some pilot projects and we will bring out. So about 3 months back, there was a seminar in Delhi, and their Planning Commission, this concerned member was chairing that session, and he asked that now CRI has done 2 projects on national highways, and based on their feedback, they have some draft guideline. Ministry of Steel also, they asked us that IRC should allow this code now for highways. And we are now, we started that process that how to upgrade this from rural roads to highways. So this is another development. Then cement grouted bituminous mixes, CGBM, is a technology which has been tested by CRI, 2 pilot projects. For urban roads, they find it is useful. Then some of these indigenous materials like jute geotextile and coir geotextile, our minister also wanted that, why don't we allow their use, because they are all necessarily available, and even Kerala and some of the states where they have plentifully available these coirs. So we should have a code. So these codes are available. Initially for low volume roads, we have allowed these codes. Then industrial waste for amendment, that is already I told about this material. Then we have now a general code on all the technologies which are sustainable, which have carbon reduction, reducing carbon footprint, general guidelines, that is IRC SP 133 2022, and that high performance bituminous mixes for high volume roads. That already I gave the background. So these are the codes which are already available with us, and many such codes are in pipeline dealing with the subjects of new technology. That high performance bituminous mix is already there, and then now we are preparing that. Yesterday I told that ultra high performance concrete already is there for last 7-8 years, and it is being used, and now ultra high performance concrete, which is already, I think some states, Maharashtra, I think the secretary, he just told me that they are already using, though there is no existing IRC code, but UHPC is being used, and ministry had also issued circular for that. So that is what on the part of IRC. Then ministry also is taking keen interest in promoting this technology, and 2020, first time they brought a very exhaustive circular that use of new innovative material and technologies, and all these codes which I was just explaining you, they have brought out in a concise form that which technology, which code you should use, and what is the advantage. So this is an exhaustive circular in December 20 from ministry. Then again they had a circular in 2022, very recently, and that is talking about that where it should be used. The question, one challenge was that in spite of having IRC code, why you are not using? So here they said that value engineering practices, because they are adding to the value of the payment design, why not to bring them in DPR stage itself? You ask your DPR consultant why he is not using it. Every DPR, every project, you as a client, as an owner of the project, you ask them to use what is locally best available, which optimizes the cost of construction. So there, if you use it, then there will be no problem in implementation. Otherwise, you will always find problem in implementation of any technology. So this circular is talking about all the value engineering practices, and they must be brought in the DPR stage itself. So now then there are in detail some of this, I have kept these slides, but I have already explained you, and I don't want to take much time, and because we have other panelists also. So without taking any much time on all these, I have given brief. Only that IRC accreditation committee also I explained in brief that any new technology for which no code is available in India, we are allowing all manufacturers to, even patented products, they can bring to IRC,
we examine this and we give the certificate, yes, you can use on trial basis. And based on that, if we find positive feedback, we will bring out a code on this subject. So these are, this is some of my context setting, telling you about what is the genesis, how we started, and what is the present status of all these materials. With that, I now will have the panel discussion. So first I will invite Professor Reddy from IIT Kharagpur to give his views on this use of new technologies in roads and bridges. So, at the outset, I would like to thank IRCA as well as State PWD, Madhya Pradesh, for inviting me for this two-day seminar on emerging trends and techniques in road and bridge construction and EPC contract execution. Of course, yesterday I delivered a talk on short slab concrete pavement, and today, of course, I was also asked to give my views on the new technologies in roads and bridges. Of course, I'll speak. Of course, I have little practical experience, but more, of course, I am from academic background, where we teach as well as we conduct research in pavement engineering. Of course, most of you know that IIT Kharagpur has a long standing and also contributed extensively for the development of road infrastructure, especially in the pavement designs and pavement construction, of course, construction-less pavement materials and structural evaluation of pavements. So, of course, it's all by the leadership of late Professor B.B. Pandey, who has done extensive research, practical-oriented research. So research, of course, academicians do a lot of research, but only, of course, very limited people will do research which is practical-oriented. So if you see those who know about his qualities, entire research is practical-oriented. He is always used to say to that we should give back to society. Okay, because he is a teacher, so what he could do is he could publish, do research, and put them into guidelines. So there I can do. Similarly, he expects other professions like engineers who can also contribute immensely in their domain by contributing in the construction and other aspects. Of course, with that, we could develop, IRC 37, all the versions from 2001 to, of course, he single-handedly did it, 2001, 2011, and 2018, and even IRC 58, the design of concrete pavements. So I think it's very, very difficult to come out with guidelines of concrete pavements. Okay, so did it. Similarly, structural evaluation of pavements by FWD, even Benkelman beam, all these things. Anyway, so these are the contributions that our professor, of course, has done. So on this juncture, I would like to remember him. So coming to this today's discussion, so all of us know that the massive road construction program started from the year 2000. Okay, both national highways as well as the PMJSY roads. So it's a continuous things which are happening, and nowhere in the world you know that this massive road construction program is in terms of strengthening, widening, strengthening, removing the ill geometrics, because we are also targeting 100 kilometers, 120 kilometers, etc. Except few places, it should be
free, where you should able to move at 80 kilometers per hour. At the same time, you should ensure safety. So keeping all these things, you know that several programs have been initiated under NHDP and even PMJSY, port connectivity, and all these things. And with that, lot of stakeholders came together. Okay. So earlier, these departments were there, all academic institutions were there, of course new added, CRRA was there, IRC, all state PWDs were there, but only thing is, this profession, especially road construction, since there's a massive road construction, so all the now stakeholders have become very active and trying to build good quality of roads. Okay, you will definitely see when you go to the public. Of course, we'll see that the quality of roads have improved. Definitely. Okay. So, who are the involvements? Okay, at different levels: state government, academicians, the private organizations, even voluntary organizations also taking part actively in the development of road infrastructure. But still, a long way to go because of our population, where we could not able to develop the road infrastructure systematically. But now, everything, the crust thickness is known today. Earlier, no. If you just open existing roads, there are a lot of boulders, so many layers. Okay. But now everything is known, thickness are known, materials are known. Okay. So in this, a lot of developments have taken place. The guidelines. So Nirmalji sir was telling, lot of IRC has brought down a lot of guidelines. For the last few years, several guidelines, several discussions were happening. There are policy decisions. Even Government of India giving like one of the highest priority for road infrastructure, because the country's development, economy, everything, depends on the quality of roads that we have. So there are guidelines on designs, construction, maintenance, finance, how to get, because today's morning session we saw what are the different financial kind of things that we are developing the road infrastructure. And biggest thing is sustainability. This is what concerns everybody. Okay. And of course, we are doing limited research from the academic institutes. I can say that compared to previous years, now the government is also encouraging, research, but still long way to go. There are a lot of conferences, seminars like this, and even training programs. With this, what has happened is there is a huge manpower requirements. Okay, huge manpower. Of course, huge technically manpower. A lot of people are getting trained, and their knowledge is also being updated. And a lot of employment generation, all these things are happening. Okay. But there are challenges. So I have put this in my own perspective. Slightly it may get deviated from the panel discussion, but still you can connect it to the emerging technologies, all those things. So first I'll say that new materials, yes, these are required, undoubtedly, because when you want to achieve the sustainability, because sustainability is the meeting the need of today's demands, but without compromising on the future required generations. Okay, that is what the basic definition of sustainability. So we require new materials because good quality of materials are depleting. There are almost like wars. Sand is biggest problem in many states. Many states already we have seen, aggregates also, and lead distance is increasing. Definitely we require innovative materials, which continuously we are encouraging. Even the codes, the guidelines, everybody says that big list of the new materials are encouraged, no doubt. So I'll just talk on that because Nirmal Saab gave some few materials I'll be talking about. But my biggest concern, which I feel that the quality of construction, the quality, I'll put my views on this because we talk many things, we design, a lot of testing, laboratory, reports, preparation, testing, collection of samples, this, that happening, but still the roads are failing very faster rate. Where is the problem? So problem, of course, not exactly quality, but of course there are some design aspects may be there, but we are trying to address them, but quality. So quality in terms of dynamic quality monitoring system.
which the country like us, country like ours, should able to focus on. Quality. 10% improvement in quality. I am not saying that quality is not being executed, but definitely there are lapses where we are, because human intervention, 100% the quality is being monitored by human intervention. The different kind of set of people who are monitoring. But now, since we are in a different era, so the new technologies, innovations, when you want to bring in, so we should bring in, we should, like construction you have seen, like machinery, lot of things does now machinery. Automatic machinery has come up compared to the previous days. But similarly, the human involvement in the quality has to be slowly, gradually it should be reduced. So how that? We have an empowerment from electronics, computer science, we have got civil engineering, we should come together and do that. So I'll have some light on that. Similarly, we are also lacking in the data collection. Other countries, they preserve the data. What is the performance data? But now we don't have data. So if you ask somebody, except new roads, all old roads, when it was constructed, what is the maintenance history, what materials was put, even if you approach somebody, it's nowhere. And of course, sharing is next. But data collection, because this is important, how the payments are performing, what materials are used, what is the mix design. So unless this data is available now, but there is no place where properly it is stored. So I'll also talk about that. Similarly, profession. Civil engineering profession, most of us sitting here, civil engineering. Of course, civil engineering, when, of course, Nirmal Saab, in that kind of era, and here, 1980s, 90s, all talented people joined the profession. And now, in the recent years, there is a downtrend in civil engineering profession, but we require good civil engineers for future also, because infrastructure required. So I'll also talk about little bit about civil engineering profession, where your contribution also immensely required for encouraging this profession. Finally, coordination between different organizations. So I'll just briefly tell about this thing. Stabilization, as you said, that this is a country where all over the world, most of the developed countries are having an eye on us, because a lot of products are coming in. Stabilizers are good, undoubtedly. But my personal view is, one stabilizer is not a universal medicine. So one has to evaluate not only the laboratory performance, but little bit of long-term performance. Maybe you have the methods where long-term performance is required, but most important thing is cost-effective. You cannot say that this will last for 50 years. That's why the overall cost is less, because there is no data about life cycle cost analysis. We say that, okay, this material will work for 50 years. Where is the data? Nowhere. So, thereby, we should not depend on LCCA, but definitely we need to encourage. But only thing is, stabilizers, when they are using, because you should be very careful. I always say that if it is cost effective, initial cost also can be little higher, no issue, but cannot be too high and where you justify with 50 years of service life. Nobody has seen where it worked for 50 years. Maybe some may show that it has worked in the US, but we cannot compare everything with US environment because things are different. So stabilizers is welcome. This is my personal view, but only thing is we have to be careful while choosing, and cost is one of the biggest thing which you should consider. Second one, of course, the warm mix asphalt. Anyway, we are, because country is also progressing very well, so since about environmental issues are there, warm mix additives, yes, they are useful, but only to reduce the like this material, like the what you call initial heating of the preparation of mixes. Of course, we can use it, but before that, there are a lot of other issues to be addressed. The other one is sustainability in materials. 100% recycling. Yes, this is where we are targeting. So can we, right now we have 30%, 40%, 50%. Slowly we are increasing, but the day should come where no material is wasted. 100% material, because this material, 5 years back,
we have verified, tested, and certified that you can use it. But today, after 5 years, you cannot just simply throw out. You cannot do that. We cannot do that. Other countries, no. And this is a wealth actually. So there should be proper, encouragement and support from the even state governments and other agencies where a day will come that no material, 100%, like it can be stocked elsewhere, you can sell it. The private parties, I suggest that if somebody is milling out, instead of dumping elsewhere, you can ask some private agencies to take away this material with a nominal price and store it and ask them to sell it. Okay, this kind of approaches, of course, if you see in US and other countries, it is there. Not that US is doing that, and we also need to do that, because these are the materials which we said that they are good, but now we are using very less. Plastic, yes, waste plastic is another very important thing where a lot of work has been done by, of course, I should say here, the first PhD in this waste recycling. Again, I remember my other professor, Professor late Mayajut Majumdar. The first PhD was done by Professor Mahavir Panda of NIT Rourkela in 1993. So since then, a lot of things are happening. We are using less plastic. The government is also encouraging. Only thing is, we have to make sure that there is a good compatibility between bitumen and this thing. Okay, that dosages, how do you add it? Because not that you just add the plastic to bitumen will do miracles. It's not like that. So there is a procedure, there is a dosages, there is a size. So this needs to be established. Yes, this should be done. Then similarly, CGBM, cement grouted bituminous mixes. These are one of the good alternative like composite pavement where you have a high void content of bituminous material. Then you put a cement grout. So it will have a properties of both, good properties of bituminous mix as well as concrete. Okay. So CRR has done this guideline, but the first, of course, I should say that one of our first student who works in NIT, of course, in Nagpur, did the first PhD on CGBM, and I encourage the state government also to use CGBM is one of the good alternatives for conventional bituminous as well as of course, especially for conventional bituminous mixes. It works very well. Okay, you can try that. Then the other thing is, as Nirmal Sir was telling, high performance bitumen and mixes. These high performance bitumen mixes and panel concrete, as I told earlier, NHA sponsored 2 projects to us. These 2 projects, which we gave the guidelines, it will reduce the crust thickness of DBM. It is not for top layer, because top layer is only 40 mm, 50 mm, but where DBM thickness is almost 110 to 130 and all. These high modulus asphalt mixes, these are not new, but this is well tested in France, and same guidelines were adopted by US, Australia, South Africa, same guidelines. We also took same guidelines, same specification of binder and mixes, and we could demonstrate that the thickness of the DBM can be done. So we have come out with a modifier, new binder. It's a basically VG40 binder, but you add some binders. Basically, the binder should be very stiff but elastic. That is the concept, stiff and elastic. So we did that. And coming to the similar short panel concrete, which yesterday I told you, there is a material saving in it. So this is also one of the new technique. It is like same as white topping, but works for very high volume roads, so which guidelines have released. Coming to the cement treated and perpetual payments. These are concerned because cement treated bases, they are very good, but only thing is, what of course limited knowledge I have, the construction, execution and way which is being done in India, of course, with the limited knowledge I have, they are failing. Okay, and also the treatment that you are going to give on that, like we put a SAMI layer or some aggregate based. So these are the things we don't know whether they are effective or not, how effective they are. But before that, there is also pre-cracking techniques also available. You don't do anything SAMI and all, but you give cracks, induce cracks the beginning itself. And so whether they are effective or not. So we approach NHA because NHA posed this problem to us. Very recently, we got a project from NHA
where we'll come out with guidelines on CTB and the treatment that is required to control that reflective cracking, and also in the same process, perpetual payments. Perpetual payments, if you see US, there are only two criteria. But if you want a payment to be perpetual, all the layers, because if you see perpetual payment, those who have got the experience, the 300 mm is the 300, 280 or even more than that is the bituminous thickness that is required. Imagine 230 or 300 mm, you see that heavy rutting is likely to occur. Okay, so you cannot just simply follow the US guidelines where they give two strike, but you should have the perpetual and the endurance limits for all the layers. So we also integrated this in the other work. We are doing that. And the last one, of course, here is we are also working on IRC 37 2018, which is based on vehicle damage factor, VDF. But a day came, it is better to go for cumulative damage approach, like for each passage of vehicles, what is the damage that is going to happen. And we are slowly moving towards mechanistic empirical payment designs, like US kind of thing, where we'll also come out with a new IIT Pave software. And of course, this is a sponsored project from. So these are the works that we are doing. Then coming to the quality construction, which I told, this is the need of the hour, because we do research, you implement, of course, you also do some little research, but quality construction, okay. As I said in the beginning, intervention of human being has to be limited. All the reports, if you see across the country or everywhere, all the reports are fine, but roads are failing. Okay, of course, one of the reasons are, maybe I should not say, or it's not correct that quality is not ensured in all the projects, ensured, but not all projects quality is ensured. So the dynamic quality control is required. So where you have a lot of, like you have sensor-based technologies are available, like how do you measure the temperature? How do you measure the compaction? Yesterday, of course, Jaiswal was telling that is a good initiative. Okay, that kind of sensor-based quality control, this is called dynamic quality monitoring system without much involvement in the, human being. So there are ways in which, because we never talked about this, but in other domains they are there. So quality, how do you ensure? I was just taking an example, like you have M20 grade of concrete. So unless I have a cube testing, I cannot do. But can I have some sensors? It is not impossible, it is possible, but with the integration of civil engineering profession with electronics and IT, we can do that. So such kind of things should come where there will be a quality control. Similarly, data collection. This is what I wanted to just give emphasis. Now, you know that all the payments, national highways, every 6 months, we need to collect the data using falling weight deflectometer or NSV or skid resistance, anything, so many other equipments. But where is the calibration? Whether all these equipments are really giving the correct values, because all your decisions are based on this, either under-designed, over-designed, or sometimes properly designed. So you must have calibrations. But there is no checking now. I'm not saying that all the instruments are bad, but we need to have, so thereby there is a requirement of calibration centers which are required so that there will be a little bit of concern on the quality of data that you are going to take. Thereby, you will also have some kind of course, proper decisions can be taken. Suppose FW gives some value, you will entirely based on FWD, whether it may be over-designed or under-designed. This is what under requirement. Then finally, of course, I will just end with this. So this is our duty. I feel that every civil engineering, whether one is working as assistant engineer or chief engineer, so we should create interest in the civil engineering students. Otherwise, this profession will face a lot of problems in future, because we require good manpower, okay, to carry out this. So I request, please, to involve all the students, both central government, state agencies, even academic institutions like MORTH, NHA, NHDCL, PWDs, involve students and encourage them for summer internships, winter internships,
maybe give some funding also. Maybe you can write to state governments like every year, some small amount of token amount of money, 5,000 rupees per month. Involve them in the project, learn them, teach them. And with this, they get motivated. Otherwise, profession will be at a big stage. And of course, as I said that, even as we should do a practical oriented research. We should have a coordination with all the stakeholders. US, those countries does now. They will always have a good rapport with the state DOTs. But here, we are all lagging. We are separate, state government. Only when they have problem, they will come. We will also go to them for something. There's no coordination. So that coordination, some of the states can start doing that. With that, we can work together. And as I said that, it is integration of civil, computer science, electronics. These people definitely will be part of this innovation, what we are thinking about materials. They can do wonders once the three people are going to, and this will also help our profession. So coordination, as I said that, yeah, we should have a coordination. So I summarize like this. We all have to save the profession. And as far as especially engineering community, civil engineering community, and also quality of materials, yes, new construction materials, yes, the required only thing is we have to be very cautious in selecting them and placing them on site. That's all from my end. Thank you very much. Thank you, sir, for allowing me to present my... Thank you, Professor Reddy, for bringing out your perspective on these issues and importance of quality. And I think there is a need for having inbuilt quality control through our mechanization and electronics, bringing them into the equipments. So that is the need of the hour. Now I will ask Sri S.K. Singh, RO NHAI Bhopal, to bring his perspective and what is the experience in NHAI about these issues on new technologies. Respected Secretary General, IRC, and other panelists, and dear colleague, thank you for giving me such opportunity. Now I would like to share my experience by using new technology in construction of road. Whatever I have experienced, that I will try to explain you. नहीं presentation नहीं मैं वैसे बता दूँ. आप साफ करने का. So let us start with the road. So first in embankment, I have experienced some chemical used in soil stabilization. One of the example I would like to quote it. In Andhra Pradesh, there was Kattipudi-Ongal corridor that is passing through rich agriculture area and coastal area, where both sides of the road canal was running. So it was a big challenge for us to how to widen that road from single lane to 2 lane with paved shoulder at least. So we have to widen 12 meter at least formation width. There both side of canal, if you have to go for land acquisition, then complete new alignment you have to go. So for that we had option, okay, wherever canal is touching just embankment, then compulsory we have to put a retaining wall. But wherever we got 1 or 2 meter more width embankment, to reduce erosion of embankment and to reduce percolation, seepage of water, we provided a chemical that is Rodsem and ZX in our soil. We mix it, roll it, and then put it. By adding that chemical, what we found that permeability of soil reduced by 1,000 times, means 1 by 1,000. And CBR value increased from 8, 10 to 60, 70, even up to 100. So we allowed that material and then reduced the construction cost by removing retaining wall from there and by putting such kind of chemical by stabilizing that soil, and that is doing well. So that kind of things we can try anywhere where problem is there, and that by doing this kind of work we can increase our confidence also for using new technology. I think most of the people are aware for GSB and WMM. Now we are using CTSB and CTB. CTSB and CTB, when initially we started in ministry,
under this NHDP 4 zone. So our then DG sir put compulsory restriction ki anyhow you have to put 10% of tree length under CTSB or CTB. आप अपने estimate में जब डालोगे तभी हम sanction करेंगे. तो by that practice we started कि हमने अपने contract में schedule में estimate में ये रखा कि at least 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer we will provide our crust composition by using CTSB, CTB. Then our people became aware of that and it started. Even NHI, generally we are using maximum now CTSB and CTB. But in ministry also, for national highway we started using CTB and CTSB and that they are doing very good. What I experienced by using CTSB or CTB, the profile of road become very good because one layer at least, bottom layer we have to do with paver. आप CTB करेंगे या CTSB करेंगे आपको paver का use करना है. So by establishing that layer after embankment, one layer or two layer, if you do CTSB, CTB, though construction will take time because curing time we require at least 3 days, 7 days. But उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा आएगा. आपको अंडुलेशन एंड अंडुलेटिंग DBM BC करने के बाद एक्सपीरियंस नहीं होगा अगर आपने embankment प्रॉपरली किया है तो. Then for DBM, anyhow, sir has already explained that we can use cement grouted bituminous mix or high graded. BC plastic waste also we used. But what challenge we face, sir, in plastic use, कि availability of plastic. Suppose अगर local उस area में plastic है, तो we can establish our plant and उसको करके हम जो minimum percentage maximum we can use. But wherever that waste is not available, then we have to try from somewhere else. उसका cartage value increase होकर के cost बढ़ जाता है. So contractor is not encouraged to use that one. So that kind of thing we can rethink what best we can do in our specification or our guideline कि उसको encourage कर सकें. White topping, we are all aware now. Ministry has made encourage also issues circular कि हम उसको use करें और wherever our base layer is good, means DBM layer is good and embankment is proper, traffic is moderate, then we can invariably white topping can be used and it will serve for 20-25 years. जैसे आप सर्विस रोड में है, सर्विस रोड में आप अक्सर प्रॉब्लम होता है कि लेवल ऑफ रोड कम होता, पानी वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम होता. वहाँ आप अगर आपका अच्छे से एम्बैंकमेंट इंटैक्ट कर दीजिए, डीबीएम क्रिया हुआ है तो आप वाइट टॉपिंग से उसको क्लोज कर दीजिए तो एवरी ईयर जो रेंज में हमारा इसका प्रॉब्लम आता पॉट होल पैच का वो नहीं होगा एंड वाइट टॉपिंग विल वर्क बेटर. देन कम टू कल्वर्ट्स एंड ब्रिजेस. इन केस ऑफ वी कैन ट्राई, देखिए स्टेट गवर्नमेंट में तो कोई भी सर टेक्नोलॉजी है, नई गाइडलाइन है, परकुलेट होती नेशनल हाईवे से ही. फर्स्ट वी यूज टू यूटिलाइज, देन इट विल परकुलेट टू स्टेट गवर्नमेंट, MPRDC और RDC, देन PWDs. तो हम उसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है उसको तो आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी कर ही सकते हैं. स्टेट गवर्नमेंट एटलीस्ट सम सर्कुलर, सम गाइडलाइन दे कैन इशू सो दैट आवर ऑफिशियल कैन बी इनकरेज टू यूटिलाइज इट. अभी क्या होता है कि हम कोई भी नई बात अगर सोचते भी हैं, खासकर स्टेट डिपार्टमेंट में, सो नोबडी इज करेज टू हैव टू यूज इट बिकॉज उसके पास कोई सर्कुलर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं है. और स्टेट में थोड़ा सा एक्शन जल्दी होता, फास्ट भी होता ऑफिसर्स पे, तो नोबडी इज इनकरेज टू डू. तो उसके लिए हमें कुछ मैकेनिज्म निकालना होगा कि कुछ गाइडलाइन निकालनी होगी कि एटलीस्ट ये मटेरियल आप ये टेक्नोलॉजी तो आप यूज करिए, इसमें अगर किसी तरह का फेल्योर होता है तो नोबडी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. सो ऐसा कुछ करने से लोग इनकरेज होंगे और उसको हम यूज कर सकेंगे. तो मैं आता हूँ कल्वर्ट और ब्रिजेस पे. हमने कल्वर्ट पे पहले प्रीकास्ट सेगमेंट का यूज नहीं हो पा रहा था. देन वी हैव मेड इट कंपलसरी इन सम कॉन्ट्रैक्ट एंड आवर कॉन्ट्रैक्टर यूज्ड इट प्रीकास्ट सेगमेंट एंड इट इज वर्किंग वेरी वेल. वेरी फास्ट कंस्ट्रक्शन, खासकर जहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा है तो वहाँ कल्वर्ट कंस्ट्रक्शन में अगर हम प्रीकास्ट सेगमेंट लेके जाते हैं, साइड पे रखते तो बहुत जल्दी ही कल्वर्ट का काम होता, जिससे कि ट्रैफिक डाइवर्सन का प्रॉब्लम कम होता. फाइबर रेनफोर्समेंट पॉलीमर बार, एटलीस्ट इफ यू आर नॉट इंकरेज फॉर बिग स्ट्रक्चर वी कैन यूटिलाइज फॉर स्मॉल स्ट्रक्चर. you can try in minor bridges, culverts, then you come for big structure. So that can be utilized. It has been used in several locations, several places. Then another material,
as Reddy Saab told, high performance concrete, sir has already explained, and that code is also there. We can use this high performance concrete. There is one material, it is coming from blast furnace, ground granulated blast slag, GGBS. This compound, if we add in our concrete, our workability will be increased and smoothness of concrete will also improve. And similarly, with this, our strength and durability will also increase. And it is very cheaper material. It is not more than 3 rupees, 4 rupees per cubic meter. Any steel plant and any industry, you can take it and you make compulsory. You encourage your contractor that at least this material you can use. With this high structure, you will get very good finished, very good workability, durability, strength and everything. And it is cheaper. So we can encourage and make compulsory that this kind of material can be used. Now, what should do to encourage this technology, sir? Okay, we have discussed so many code and so many this thing, but how to implement it is a big challenge. So what I suggested, some kind of circular from state government can also be issued to make at least some percentage of sanction project. It can be used by using such kind of material or some new technology. Then it will be implemented in PWDs and even MPRDC road, state roads also. For IRC, sir, problem is that कि हमारे पास भी बहुत सारे वेंडर्स आते हैं नए जो है उसको लेकर के. अब हमारा चैलेंज ये है कि if we have not utilized it anywhere, then how can we can use? तो better है कोई ऐसा mechanism बनाया जाए कि first person can be sent to IRC कि आप टेस्ट करिए, आप ट्राई करिए, कमेटी है उसको रिकमेंड करें, देन वी कैन इम्प्लीमेंट. हम कॉन्ट्रैक्टर लोग हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन लेके आते हैं, कई सारे वेंडर आते हैं, एंड बाई गोइंग प्राइमा फेसिया वी फाउंड कि इट इज़ वेरी सुटेबल, बट हाउ कैन यू यूज आवर कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड scope is there and we have not tried earlier, so it is a bit kind of risk. So if IRC or some institution can be involved, okay, if you have come with new material, first go to IRC, let some committee immediately check it, verify it and give their suggestion, then we can utilize. So that would be very easy for us to implement new technology and new kind of material. Whatever code is provided, that is anyhow we can use it, but other than code, if some suggestion, some new technology comes, then how to implement it, it is a big challenge. So unless IRC or any IIT or any institution is involved in verifying, suggesting, confirming, then only we can use it. So by saying that, I would like to thank everyone. Thank you very much. Thank you for your suggestions and how it can be used and what is the experience in NHAI. So now I will request Sri R.K. Mehra, Engineer-in-Chief, MP PWD, to give his views and the status of implementation in Madhya Pradesh or in general, any recommendations. थैंक यू सर. मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं. पहले एक फेयर था, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के निर्देशों पे हमने काफ़ी एडवांस स्टेज में काम किया है. और इस कड़ी में मैं एस.के. सिंह साहब की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि नया प्रोडक्ट या मटेरियल जब भी आता है तब निश्चित ही एक डर तो मन में रहता है कि इसको यूज़ करेंगे तो ये कितना चलेगा, या हम सबसे पहले पूछते हैं कि किस स्टेट गवर्नमेंट में यूज़ किया है इसको और वहाँ की परफॉर्मेंस रिपोर्ट लाइएगा. तो वो कई लोग बता नहीं पाते हैं. जैसे कि ये आप एक टेक्निकल एग्जीबिशन में मेटल और रोलर क्रैश बैरियर का पहला स्टॉल लगा है, वो महाराष्ट्र में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, गडकरी जी के निर्देश पे हुआ होगा, NHAI ने किया होगा. 72,000 पर रनिंग मीटर, उसकी बहुत कॉस्टली भी है. तो अब हमें ये उसमें गाइडलाइन कहीं नहीं है IRC की कि उसको यूज़ किस जगह किया जाए, क्या कंटिन्यूस स्ट्रेच में किया जाए या केवल ब्लैक स्पॉट पे किया जाए या टर्निंग पे किया जाए. तो वो गाइडलाइन वो भी नहीं बता पाए. तो निश्चित ही IRC की तरफ से कोई चीज़ आएगी तो हमें कॉन्फिडेंस रहेगा.
निश्चित ही जैसे वाइट टॉपिंग अब हम कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं सर। अभी हमने वाइट टॉपिंग पे 319 करोड़ के काम सैंक्शन किए हैं सभी संभागीय स्तर पे और सभी जिला मुख्यालयों की एक एक सड़कें हमने ली है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि FWD हमें करना होगा, उसका क्रस्ट प्रॉपर हो जैसा बताया गया, या और कहीं क्रैक्स नहीं होना चाहिए, सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा पैकेज हमारा भोपाल का है 100 करोड़ के आसपास का, कि भोपाल का स्ट्राटा बहुत ठीक है, कहीं कोई सेटलमेंट नहीं है। लेकिन इसके बाद भी भोपाल की सड़कें हर बारिश में ख़राब हो रही थी, हमने देखा है। यहाँ की प्रॉब्लम मेटल की प्रॉब्लम भी है, जो लोकल अवेलेबल मटेरियल है वो कोपरा मिक्स वगैरह है, तो वो पहली बरसात में ही परकुलेट वाटर होता है तो धूल उसमें होती है, अन्य शहरों में नहीं है। अब्दुल्लागंज का मेटल बहुत अच्छा है। तो निश्चित ही वाइट टॉपिंग अगर हम सही तरह से कर पाएंगे IRC गाइडलाइन के अनुसार और जो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन है, तो निश्चित ही हम पार्ट होल से हर साल बचेंगे और 30 से 35 साल तक के लिए निश्चिंत हो जाएंगे हम। तो ये हम लोग अडॉप्ट करने जा रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि जिस जहाँ पे डिपार्टमेंटल फैसिलिटी FWD की नहीं है वो हम कॉन्ट्रैक्टर से करवाएं, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यदि जहाँ टेंडर नहीं लगे हैं वहाँ हम स्पेशल कंडीशन भी अपन डाल देंगे, अगर कुछ गुंजाइश होगी तो एक्सटेंड कर देंगे। तो ये वाइट टॉपिंग का एक सिनारियो है हमारे प्रदेश में सर। और FDR हम करीब करीब 6 सड़कों में कर रहे हैं। FDR टेक्नोलॉजी RDC में एक श्यामपुर सीहोर रोड हमने की जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है। थोड़ा बहुत डिफेक्ट आया था, जैसा कल बता रहे थे कि ड्रेनेज प्रॉब्लम यदि कहीं होगी तो उसमें भी FDR में कुछ डैमेज आ सकता है। लेकिन अभी तक RDC की रोड में ऑलमोस्ट अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इवन 60 से 70 CBR वहाँ सॉइल की आई है जब टेस्ट किया था तो। लेकिन सही तरीके से होना चाहिए। तो FDR हम लोग 5 से 6 सड़कों में कर रहे हैं सर। इसके अलावा माइक्रो सरफेसिंग में भी काम करने की हमारी योजना है, जो शीघ्र ही हम इसको करेंगे। मॉडिफाइड बिटुमिन की बात है तो मॉडिफाइड बिटुमिन PMB और CRMB हम बहुत पहले यूज़ कर चुके हैं नेशनल हाईवे में। सब जब मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था जलपुर नेशनल हाईवे में तो CRMB यूज़ किया है। हाई टेम्परेचर पे 150 डिग्री के आसपास, 45 से 150 डिग्री के आसपास मिक्स आता था और प्रॉपर कंपेक्शन किया तो उसका 3 या 4 साल में कुछ भी उसमें डैमेज हमें परफॉर्मेंस गारंटी में कुछ भी नहीं हुआ और फर्दर अच्छा चलता रहा। बल्कि वो कि उस समय तो वह SDBC चलता था तो SDBC बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसमें रहा। PMB भी हमने यूज़ किया है। तो थोड़ा कन्वेंशनल बिटुमिन से थोड़ा कॉस्टलियर है, लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी है अगर बशर्ते कि स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जाएगा। पार्ट होल हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। पार्ट होल में हमने मैकेनाइज्ड पार्ट होल रिपेयरिंग से काम शुरू किया है। अभी पिछले 3 जोन्स में 600 किलोमीटर की रोड में हमारा काम चल रहा है जेट पैचर और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से। ग्वालियर में इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से काम किया है सर। एनवायरमेंटल फ्रेंडली मशीन है वो, जिसमें कि कोई हीटिंग नहीं करनी पड़ती है और सरफेस को हीट करके और वो मटेरियल को लूज़ करता है और फिर एग्जिस्टिंग मटेरियल और न्यू मटेरियल को मिक्स करके उसको रिकॉम्पैक्ट कर देते हैं। तो ये अब इस तीनों टेक्नोलॉजी को हम पूरे प्रदेश में रोल ओवर करेंगे ऐसा हमने डिसाइड किया है। बल्कि जो लोकपथ ऐप, जैसा कल माननीय मंत्री जी बता रहे थे, तो लोकपथ ऐप जो लॉन्च हुआ उसके बाद में हमारे पॉट होल की जो शिकायतें हमारे विभागीय अधिकारियों के पास आई है, चैलेंज भी था, तो हमने पॉट होल ये निर्देश दिए कि किसी भी टेक्नोलॉजी से भरा जाए, सीमेंट कंक्रीट से भरा जाए, पेवर कमर्शियल पेवर ब्लॉक से भरा जाए M40 100 mm थिकनेस के। तो हमने किया और एक एग्जीबिशन, टेक्निकल एग्जीबिशन में भी एक पोरस मटेरियल का कोई स्टॉल लगा है, मैं देखा था, जिससे अगर पैच रिपेयर करते हैं तो पानी भी परकुलेट होकर के नीचे आ जाता है। और एक कल का एक लेक्चर था वो मैडम का कोई कंपनी का, तो वो भी मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, SOR में लाएंगे। लेकिन बात वही आती है सर कि IRC का अगर गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शन या एक्रेडिटेशन अगर होता है तो निश्चित ही स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस होता है सर। इसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजी सर आपने अभी अपने प्रेजेंटेशन में बताई है, सारी मैक्सिमम IRC कोड्स हैं उसमें, तो निश्चित ही उन टेक्नोलॉजी को हम स्टेट गवर्नमेंट यूज़ करेंगे और एक
हमारा पता भी करेंगे किस किस स्टेट में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। अगर आपके माध्यम से जानकारी मिल जाती है तो निश्चित ही हम कीन हैं हमारे प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए। तो ये एक स्टेटस था सर मेरे प्रदेश का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir, for your initiative and your willingness to adopt new technology in the state of Madhya Pradesh in our roads, your district road, MDR road, rural roads, highways. And before I start the question answer session, I think we have the last presentation from Dr. Sanjay Srivastava, ex-president Dilip Buildcon, for his experience or the contractor's perspective about the new technology. Please. Good afternoon, everybody. बहुत सारे पैनल डिस्कशंस, नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़। मुझे ऐसा लगता है सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को कॉन्ट्रैक्टर पे छोड़ दिया गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो सब चीज़ जुगाड़ करके लाए, बताए, और फिर हम उसको टेस्ट करें, रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें और उस प्रोसेस और प्रोसीजर के अंदर डाल दिया जाए। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। वी आर इन 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन दिस वर्ल्ड। वी आर नॉट इन इंडिया नाउ, वी आर अ ग्लोबल विलेज। हमें ये समझना पड़ेगा कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमें क्या एडॉप्ट करना है, कैसे एडॉप्ट करना है। अगर वो हम नहीं कर पाएंगे तो हम पहले ही करीब 40 से 50 साल पीछे और पीछे चले जाएंगे। प्रोएक्टिवली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज और इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है। इट इज नॉट प्योर सिविल इंजीनियरिंग, अब तो मैकेनिकल भी जुड़ गया है। अगर हम मॉडलिंग की बात करें, कॉम्पैक्शन मॉडल जैसे हम कहते थे, हाई डेंसिटी को रिजोल्यूशन करने के लिए हमें दीज टेक्नोलॉजीज आर टू बी कोलैबोरेटेड। इलेक्ट्रिकल, पूरा शरीर हमारा इलेक्ट्रिकल पे चल रहा है, ये हमें भी 20-25 साल पहले पता लगा। हमारे को सेव कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वरना हम सोलर फ्लेयर से कब उड़ गए होते। बहुत जल्दी पिछले 10 साल में साइंस वर्टिकल हो गई है। जो 1000 साल से चली आ रही थी, पिछले 20 साल में वर्टिकल है। इतनी जल्दी कंपोजिट्स बदल गए हैं। धीरे धीरे करके अपन आएंगे इस पे, मगर हमें एडॉप्शन तो बहुत जरूरी है ना। एआई को इंप्लीमेंट करें, आ गया है। कॉम्पैक्शन मॉडल्स को अपन नैनो टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्वांटम आ गया है। तो हमें ये तो ऊपर से नीचे परकोलेट होगा, नीचे से ऊपर नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर से नहीं ऊपर जा सकता। तो दिस इज द बेसिस। अब दीज आर द 4 क्वेश्चंस विच आई विल बी एम्फेसाइजिंग। मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। जो 1960 की किताब चल रही थी वही याद चल रही। जिस तरह से उस जमाने में हमने एक ही किताब, एक ही जगह, एक ही पूरे हिंदुस्तान में, कोई कहीं से भी निकले किसी को भी 10 मिनट में रिप्लेस कर देता है, क्योंकि सब एक ही तरह से ट्रेंड है। वी आर प्रोडक्ट्स। हम सब प्रोडक्ट हैं। आज मैं नहीं हूं, आप मुझे रिप्लेस कर देंगे 10 मिनट में, क्योंकि वही खुरमी आपने पढ़ी, वही खुरमी मैं पढ़ लूं। हमारा क्या ध्येय है,
कि हमें why are new technologies required in road construction? I'll be very quick, क्योंकि अपन डिस्कशन पे जाएं तो ज्यादा बेटर है. सेकंड, देखिए आप सब समझ रहे हैं, मैं सिर्फ आपके चक्षेंद्र खोल रहा हूं. इंजीनियरिंग में हमने क्या सीखा? वहां कोई टेक्नोलॉजी तो सीखी नहीं. हमने तो एक वे ऑफ लर्निंग सीखी, वे ऑफ क्वेश्चनिंग सीखी. और अगर हम क्वेश्चन ही बंद कर देंगे तो खेल खत्म हो गया हमारा. सेकेंड, what support is required from the authorities for implementation of new technologies in road construction? We are talking specific of road now. What are the challenges in implementation of new technologies in NHAI, MORTH, PWD, road projects? और स्पेसिफिकली मैं दो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, UHPC एंड GFRP, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट एंड ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलीमर. ये दो चीजों को पिछले 5 साल से मैं देखता चला आ रहा हूं, एंड नोबडी इज रेडी टू इंप्लीमेंट. इट इज नॉट ओनली द कॉस्ट, इट इज द एटीट्यूड एंड द माइंडसेट which is required to implement. And fourth, and how can the adoption of new technologies contribute to earning? पैसा कमा सकते हो आप कार्बन क्रेडिट से पूरे वर्ल्ड लेवल पे. हमारा बेसिक उद्देश्य क्या है? सबसे पहले रिड्यूस करना. थिकनेस ऑफ लेयर्स, सबग्रेड 500 फिक्स है, उसके ऊपर जीएसबी की थिकनेस रिड्यूस कैसे करें? या तो मटेरियल की प्रॉपर्टी बढ़ा दें, या हम उसमें कोई ऐसी चीज डाल दें जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए. हम स्ट्रेंथ को सीबीआर से रेफर कर लें. गिट्टी और मिट्टी की रोड है, हर लेयर जैसे जैसे ऊपर जा रही है वैसे वैसे उसकी सीबीआर वैल्यू बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं. दूसरी तरीके से, इसको और तरीके से कह सकते हैं, डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंग द डेंसिटी. उसके ऊपर जीएसबी के ऊपर अपन ने डब्ल्यूएम के ऊपर डीबीएम के ऊपर, उसके बीच में सामी वामी डीएम बीसी सब, और कोशिश कर रहे हैं टॉप लेयर को 3% के पानी वॉइड रेशो में ले आए, जिससे पानी 3% से ज्यादा नीचे ना जाए. अगर 7% पानी नीचे चला जाएगा तो रटिंग आ जाएगी, और पानी से दूर करें. दीज आर द 4 क्वेश्चंस. मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी इसको करने की, शॉर्ट कर दूंगा. वैसे डिटेल्ड है, आपको प्रेजेंटेशन मेरा चाहिए हो तो मिल सकता है, आप कोई दिक्कत नहीं. न्यू टेक्नोलॉजी हमें क्यों चाहिए? इंप्रूव्ड ड्यूरेबिलिटी, लॉन्जेविटी के लिए, इंक्रीज्ड लोड बियरिंग कैपेसिटी के लिए, फास्टर कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है जिससे रिड्यूस टाइम हो जाए, इनहेंस सेफ्टी हो जाए, इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल बेनिफिट्स हो जाए, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़े. ठेकेदार को क्या चाहिए? वो क्यों, वो तो हर चीज में पैसा ही बचना है ना. दैट इज द अल्टीमेट एम. हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठेकेदार से कि वो अपने घर से जेब से पैसा लगा के काम करे? अगर वो लो कोट कर रहा है और आपको मालूम है कि लो कोट कर रहा है, इसका मतलब उसमें तो कोई डिस्कशन है ही नहीं. कॉस्ट एफिशिएंसी लॉन्गर रन में बहुत जरूरी है, बिना उसके हो ही नहीं सकता. क्लाइमेट और एनवायरनमेंट चेंज जो आने वाला समय है, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे के जाएंगे? जो मदर अर्थ पत्थर बना रही है, मिट्टी से जो पत्थर कन्वर्ट कर रही है, उसका हम इतना दोहन कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते. हम सेंसिटिव ही नहीं है. कहां हम 50,000 टन लोहा निकालते थे, आज 50 लाख टन निकाल रहे हैं पर आवर. तो आप कितना दोहन कर रहे हैं? तो वी हैव टू बी सेंसिटिव, देन वी शुड बी स्मार्ट.
ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करना है, दैट इज द अल्टीमेट, एंड कंप्लायंस विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अब अपन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को कोऑर्डिनेट कर लें। BIS, IRC should be in line with the global standards. एक आज बहुत जबरदस्त सजेशन मिला मुझे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दैट वाज अ न्यू थिंग। वेस्ट मटेरियल का चार्ट बनना चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज, हो सके तो ब्लॉक वाइज। क्या अवेलेबल वेस्ट मटेरियल है और क्या क्वांटम में निकल रहा है, तब तो इंजीनियर सोच पाएगा। हम वहां क्या प्रोड्यूस हो रहा है ये तो बना रहे हैं, उस प्रोड्यूस से क्या वेस्ट निकल रहा है और क्या हम उसको यूज कर सकते हैं रोड में, वो चार्ट बन जाए तो भी बहुत इजी हो जाएगा। वो साहब ने ये कहा था कि इट शुड बी थ्रू DPR कंसल्टेंट, बट इट वाज रियली वेरी ग्रेट। और अगर ये हो जाएगा तो मेरी तो थीसिस ही इसी पे थी, PhD थीसिस ही थी, सॉइल स्टेबलाइजेशन विद locally available waste materials, and that I executed at Delhi Meerut Expressway under the guidance of Shri Singla साहब। तो ये हैं, अब इसके डिटेल्स पे मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो आपको सबको समझ में आ रहे होंगे कि क्या है, इसमें कोई खास बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, what support is required from the authority for implementation of new technology in road construction? पहला है पॉलिसी एंड रेगुलेटरी सपोर्ट। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, IRC शुड टेक इनिशिएटिव, कई लोगों ने बोला, मगर IRC में भी कौन है? IRC में भी तो NHAI है, IRC में भी तो MoRTH ही है, IRC में तो PWD है। तो जो PWD में नहीं कर रहे वो IRC में आके करेंगे, मतलब ड्यूबलेस सी बात है, वो तो करना है। फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इनिशिएटिव्स, पर्टिकुलरली इज रिसर्च वर्क। हम लोग बहुत पिछड़ रहे हैं और IITs और इन लोगों को हमने पढ़ाई छोड़ के रिसर्च में घुसा दिया। जो बेसिक काम है IIT का वो तो पढ़ाना है, बच्चों को निकालना, उनसे कोडल प्रोविजन बनवा लो, उनसे सब करा लो, तो सब कुछ वहीं से होगा, तो फिर होगा कैसे? उनके पास चले जाओ तो 6-6 महीना लगता है एक डिजाइन अप्रूव कराने के लिए। वी आर वेल अवेयर। फिर हम वहां से शिफ्ट कराने घूमते हैं कि साहब ये इस IIT को छोड़ दो, आप फलानी जगह से करा दो, NIT से करा दो। These are the practical problems which I am talking about, which are to be addressed. और सब चीज थ्रू मॉनेटरी सपोर्ट ही चल रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, हर साल रिफ्रेशर कोर्स हो डिपार्टमेंट, रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। बाकी सब जगह हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी में रेगुलर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इंटरनेशनल घूम रहे हैं, या कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ सब गधे की तरह लगे हुए हैं सारे इंजीनियर्स कि सुबह साइट पे चले जाओ, शाम को वहाँ आ जाओ। और गधा हम्माली में सर, देखिए गधा हम्माली मीन्स इट इज अ, सर मैंने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया, मगर हम एक टाइप ऑफ वर्किंग में बंध गए, एक रेगुलर फैकल्टी वर्किंग में, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट्स, देन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग। This is very important and everybody emphasized. We should develop initially, तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि सब डिपार्टमेंट्स में इंटरनल लैब्स हुआ करती थी and they were regularly, now subletting has been done. So this is how to control. Then logistic and chain supports are very important. Awareness campaigns and promotions, monitoring and evaluation systems. These are evaluation systems should be AI. For example, a drone गया,
उस रोड को विजिट करके चलाएं, उससे ऑटोमेटिक सब चीज़ें आपको रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। आज की डेट में हम फेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में जैसे ही घुसते हैं, आपके फेस से वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आप कौन हैं और आपका टिकट कहाँ का है और कौन से गेट तक आपको जाना है। दिस इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। द मोमेंट आपने पैचवर्क देखा, वो पैच रिकॉग्नाइज हो जाएगा, उसका साइज आइडेंटिफाई हो जाएगा, वो आपको इंटीमेट कर देगा। तो एआई से लिंक, ये उसके डिटेल्स हैं, इसमें भी अपने को कोई बहुत। देन व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन NHAI प्रोजेक्ट्स, पर्टिकुलरली इन UHPC एंड GFRP। पहला तो है टेक्निकल चैलेंज, इसको मैं डिटेल में चलता हूं। इसमें दिक्कत आ रही है लिमिटेड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज है। जो एक्सपर्ट बन के आ रहा है उसके पास भी एक्सपर्टाइज नहीं। जैसे पहले के ज़माने में फॉरेन का कंसल्टेंट आता था और फिर इंडियन आदमी को एम्प्लॉय कर लेता था, ये कुछ वैसे ही है। देन मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर के ऊपर, लोकली मटेरियल अवेलेबल के ऊपर बिहेवियर स्टडीज कम है, बहुत कम है। और हम जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिज़ाइन है उसके अंदर जाते ही नहीं। हम छोटी चीज़ लेके आए और हमने शुरू कर दिया। देन फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर उस फाइनेंशियल चैलेंज को टेकअप कर ले, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द वेरी बिग थिंग which is mandatory for EPC contractor or any contractor. Then regulatory and standardization of issues. This is a policy decision. इसमें process delay बहुत होता है. This is the observation. Process delay होता है बहुत. आपने अप्लाई किया, फिर एक टेबल, सेकंड टेबल, थर्ड टेबल, फोर्थ टेबल, फिर अप्रूवल, रिटर्न बैक, किसी का ऑब्जेक्शन, वापस, मतलब इट इज सो प्रोसीजरल डिले। ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक चैनल्स चैलेंजेस हैं, सप्लाई चेन इश्यूज हैं, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज वेरी बिग पार्ट, क्योंकि न्यू मटेरियल के ऊपर मेंटेनेंस का बहुत टफ होता है। जैसे कंक्रीट रोड की मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा वो है, और उसकी टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। कल्चरल रेजिस्टेंस भी है कि हम तो 50 साल से यही करते चले आ रहे हैं। दिस इज व्हाट। देन एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, मगर परफॉर्मेंस इन इंडिया के अकॉर्डेंस में हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन हाउ कैन adoption of innovative technologies contribute to the earning of carbon credits in road construction? This is the पिछले 10 साल से हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट इन रोड प्रोजेक्ट्स कैसे अचीव हो, और हम ये कार्बन क्रेडिट्स को यूज करके दूसरी कंट्री को बेच पाए, या हम उसके एक्सचेंज में टेक्नोलॉजी लाएं। रिडक्शन इन मटेरियल यूजेज जैसे ही रिड्यूस होगा, उतना क्वांटम ऑफ एक्सकेवेशन कम हो गया, उतना क्वांटम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया, उतना ही एनवायरमेंटल सेव करता है। तो वो क्वांटिफिकेशन हो सकता है। लोअर कार्बन फुटप्रिंट मटेरियल्स को यूज करें, लोकली अवेलेबल मटेरियल्स को यूज करें, दूर से लाने की कोशिश ना करें मटेरियल। एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। देन लाइफ स्पैन बढ़ेगा, जितना लाइफ स्पैन बनेगा उतना रिड्यूस मेंटेनेंस हो जाएगा, रिड्यूस मेंटेनेंस के कारण हमें कार्बन का क्रेडिट मिलेगा। देन रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल्स। अगर हमने वापस रिसाइकिल कर लिया पर्टिकुलरली पत्थर को, तो बिटुमेन कंटेंट कम लगता है, एंड यू कैन सेव बिटुमेन अप टू 50%। जो पर्टिकुलरली BC का जो मटेरियल है, अगर रीयूज में आ जाए तो 50% विटामिन कम हो जाता है। 2 से 3% का विटामिन लगता है
और बाकी वो वहां से इस तरह 5% का टोटल बिटुमेन आ जाता है। Energy saving and renewable technologies, then lower emission during construction, high quality of material, mechanical equipments use करेंगे, fuel use करेंगे, LDO use नहीं करेंगे तो emission कम हो जाएगा, उसको हम use कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट हो रहा है, आजकल एक्सकेवेटर्स इलेक्ट्रिकल भी आ गए। देन कार्बन सिक्वेंसिंग एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, इन सबको मिला के वी कैन अर्न कार्बन क्रेडिट, और पहले एक रोड का निकलेगा और उससे कंटिन्यूसली पूरे स्टेट का निकलेगा और वो बेनिफिट स्टेट को मिल जाएगा। द इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टेट एंड देन कंट्री। तो ये इसके डिटेल्स थे। मेरे ख्याल से अपन ने अब व्हाट इज यूएचपीसी मटेरियल? एनीथिंग, any concrete which is more than 100 Newton per mm square, अपन अभी M20, M30, M40, M60 तक है। अब M100 प्लस से M200 तक है। हमने 170 MPa भोपाल की लैब में बनाया विदाउट any extra machinery. It was the same in lab, हमने बनाया 170 in zero controlled environment. अब इसका फायदा क्या होता है वो मैं आपको फोटोज में दिखाऊंगा। जो स्पैन हम 30 मीटर का रख सकते हैं वो स्पैन अब 120 मीटर का हो सकता है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। Size of column will reduce, compression member, thickness of slab will reduce. अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बट लॉन्ग इन कमिंग फ्यूचर इट्स कमिंग बाय, तो आना ही है। और इसका ऑलरेडी महाराष्ट्र में कई जगह उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। एनीथिंग दैट मीन्स M200 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये कुछ ब्रिजेस बने हुए हैं जो उन्होंने काम किए, एनी शेप में आ जाते हैं, इस शेप में भी बन सकते हैं और थिकनेस बहुत कम होती है। ये थिकनेस है जो रेगुलर क्रैश बैरियर की और जो बनाई हमने। ये बॉक्स गट, अगर हम यूएचपीसी से करते हैं, स्टील से करते हैं, प्रीस्ट्रेस करते हैं और रेनफोर्स कंक्रीट करते हैं, तो दिस इज द थिकनेस डिफरेंस। सबसे पहले हमें मटेरियल को रिड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। द मोमेंट वी रिड्यूस द मटेरियल तो इट विल बी अगला मटेरियल आने वाला है GFRP। ये भी रुक नहीं सकता, आना ही है, डिले हो रहा है। माइल्ड स्टील 500, 550D तक हम यूज कर रहे हैं आज की डेट में, 550D तक, बल्कि कुछ अच्छे लोग 700 भी बना रहे हैं। कोई भी अगर आप देखिए E क्लास और S क्लास का फाइबर है, अगर हम इसको यूज करें, ग्लास फाइबर को यूज करें E क्लास का या S क्लास का, तो हमारा 1400 MPa हो जाता है, 1400 MPa टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाती है, जबकि स्टील की हमारी 500 होती है। ये और इसके हैं, ग्लास आ सकता है, एमरल्ड आ सकता है, बेसाल्ट आ सकता है, हाई स्टील कार्बन आ सकता है और हाई मॉडुलस कार्बन आ सकता है। ये 3500 की रेंज में आते हैं, 3500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैं आपको इसके एग्जांपल दे रहा हूं, नथिंग इज न्यू। ये यूएस के कुछ ब्रिजेस हैं, मेन ब्रिजेस हैं 2002 के। ये कंक्रीट के ही हैं और ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर इस्तेमाल किया गया है।
ये फ्लडवे ब्रिज है, इसमें बहुत सिंपल सा है, 150 ton of GFRP has replaced 1.2 million pounds of rebar steel. इतना फर्क पड़ा वेट से, और बहुत आसान है, कंधे पे रख के ऊपर चढ़ा जाएगा, 20 mm का बार, 25 mm का कंधे पे रखा ऊपर चला गया। दूसरा, इसमें चोरी नहीं हो सकती क्योंकि रीयूज नहीं हो सकता। ये इसको कुछ जो ब्रिजेस देखें, कंपोजिट्स हमारे आसपास हैं, हम सिर्फ देख नहीं रहे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तेजस, इसमें देखिए सिर्फ एल्यूमिनियम का व्हाइट पार्ट है जो कोने में लगा हुआ है, बाकी सब कंपोजिट का बना है। हेलीकॉप्टर, कोई भी गाड़ी जो 200 किलोमीटर पर आवर से तेज चलेगी, क्या होगा, बॉडी जब निकलेगी हवा उस पर टकराएगी तो वो हीट होती है तो लॉस हो जाता है। ये सब कंपोजिट की बनी है, कार्बन फाइबर की बनी हुई है विद एपॉक्सी। रैकेट्स सबके पास होते हैं, साइकिल्स, आजकल कार्बन फाइबर की साइकिल आ गई हैं 40,000 से ऊपर सब। विंड मिल्स, हमारे दांत, हड्डी, दे आर ऑल कंपोजिट्स, एपॉक्सी डाल के बना देते हैं। रेलिंग्स में यूज कर सकते हैं, डेक स्लैब्स में यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट उसमें जा रहा है जो ये लेटेस्ट आ रहा है, ये ऑलरेडी बन गया है, ये कंपोजिट का बना हुआ है, वेब प्लेट वगैरह सारा, कंक्रीट की जगह। इसके और डिटेल प्रेजेंटेशन कभी होगा तो बताएंगे आपको, बहुत डिटेल में है और ये अवेलेबल है, कर रहे हैं लोग। आई थिंक सो, थैंक यू। Thank you for bringing your perspective and giving some examples of new technology abroad also. I think we can start the question answer session from some of the questions which he has raised. First of all, our invitation to you, I mean, you feel that all our government officers from PWD, Ministry, NHI, what he will talk about the private people's, their interest. So we have invited you just to get your perspective, what you feel and what are your problems in implementation. And that is the purpose of this particular panel discussion, that we wanted everybody's views. And in fact, we have had similar sessions at various forums, at various levels. And even at the highest level, one was even our secretary and chairman NHI both were there. They called one session on same issue, new technology. Officers of NHI, ministry, some PWDs and consultants, contractors, everybody was called in that session. And then that time the secretary was Mr. Armane, the previous secretary. Then he was asking the contractors and consultants, you tell me a single officer of NHI or ministry who is blocking your approvals. You name a single officer's name, or if you don't want to name in this forum, you give me separately a mail. And I will see that what is the problem. If there is, because always there are concerns there, it is an issue of mindset. Because consultants are coming out with this kind of explanation that there are, because conventional, there are codes and established technology, so they will use, immediately they will approve. But if you bring out a new technology, there will be resistance, and that is because of the mindset. That is what is the general perception. So yes, there are, I mean, you find there is a hesitation in the consultants as they are not equipped with the knowledge. That also we agree, yes, there are many consultants which will delay the approvals if there is a new technology. Conventional will be easily approved, but new technology will take its time in approval. That we also know that, yes, these are the issues. But that is what we are sitting here, that how to address these things, and that is why the detailed policy guidelines are coming from ministry.
इनफैक्ट जो एक सजेशन मैंने दिया था कि भाई अभी जब ये रियलाइज़ किया कि ये मतलब यू फील कि कॉन्ट्रैक्टर लाएगा जब ही होगी न्यू टेक्नोलॉजी, ऐसा भी नहीं है। इसलिए हमने कहा भाई कंसल्टेंट्स को लाना पड़ेगा, और नॉट ओनली कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में आएंगी टेक्नोलॉजी, ये आनी चाहिए डीपीआर स्टेज में, क्योंकि और इनफैक्ट न्यू टोकले ये जो सब्जेक्ट है इट स्टार्टेड लॉन्ग बैक, अबाउट 20 ईयर्स बैक, 2012 में ये इशू आया था पहले कि भाई कैसे लाएं न्यू टेक्नोलॉजी। इवन मिनिस्टर ही आस्क्ड अस कि भाई कैसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमने बताई सर जो भी कौन यूज़ करेगा इसको, जो प्रपोज करेगा और ये फेल हो गई क्योंकि आप ये न्यू टेक्नोलॉजी बोल रहे हो उसको, तो इमीडिएटली वो उसको क्वेश्चन करेंगे भाई किसने कौन था, किसने प्रपोज किया था जो फेल हो गई, उस पर क्या एक्शन लेंगे, उस पर इंक्वायरी करो, जांच होगी। ये इनफैक्ट आई रेज दीज इश्यूज। देन मिनिस्टर सेड ओके, that time the different government was there because 2012 present government was not there, even before that I am talking. So उन्होंने कहा इसमें क्या आपको चाहिए, तो मैंने कहा ये इम्यूनिटी चाहिए कि कोई भी ऑफिसर, whether it is a ministry officer or whether it is a consultant or contractor, जिसने ये यूज़ की है न्यू टेक्नोलॉजी, अगर वो फेल होता है तो उसको उसमें there should be no action on him because it is a new technology or innovative material. तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इनफैक्ट आई पुट अप दैट फाइल टू मिनिस्टर दैट इम्यूनिटी ऑफ फेलियर इन केस वी आर यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंगिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ देयर इज अ फेलियर नोबडी विल बी पनिश्ड फॉर दैट। तो ये मैंने मंत्री से अप्रूव मैंने मेरी फाइल पे करवाया हुआ मिनिस्ट्री में 2013 में, और 7 जून 2013 में दैट फर्स्ट सर्कुलर वाज इशूड फ्रॉम मिनिस्ट्री which was signed by me, and in fact we asked all the manufacturers, all material manufacturers, equipment manufacturers, technology providers कि आप आइए अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेके और हम उसको अप्रूवल देंगे मिनिस्ट्री से। तो मिनिस्ट्री में हमने एक कमेटी बनाई उसके लिए, एंड आई वाज मेंबर सेक्रेटरी दैट टाइम एंड डीजी वाज चेयरिंग दैट कमेटी, एंड वी स्टार्टेड अप्रूविंग दिस लाइक व्हाट इज वी हैव एक्रेडिटेशन कमेटी इन IRC। सिमिलरली वी स्टार्टेड दैट अप्रूवल कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री कि जो भी नया मटेरियल, और उसमें यही इशू थे सारे। उसमें 2012 में 13 में हम बात कर रहे थे कि क्या उससे बेनिफिट होगा, जब हम एग्जामिन करते थे कि बेनिफिट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सबसे कॉस्टली चीज़ लेके आओ और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो, तो फिर किस बात की अप्रूवल चाहिए आपको। फिर उसको इंडिया में हम आत्मनिर्भर भारत में हमारा ये है कि भाई हम इंडिया में कैसे बनाओगे उसको। आज तो ठीक है US से लेके आ रहे हो, लेकिन आपका क्या टाइम फ्रेम है। हम ये चाहेंगे अल्टीमेटली वो हमारे यहाँ पे मेन स्ट्रीम में आए। इनिशियल आपकी कॉस्ट हाई होगी क्योंकि आप बाहर से प्रोडक्ट ला रहे हो, लेकिन जब आप यहाँ बनाओगे तब वो सस्ता होगा धीरे धीरे। जैसे कल मंत्री जी भी कह रहे थे भाई अभी ये UHRCC ये नहीं यूज़ हो रही है, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, तो कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे मटेरियल आएगा और धीरे धीरे कम होगी। रिसाइकलिंग क्यों यूज़ नहीं हो रही है? रिसाइकलिंग में कल भी बता रहा था कि ये 1988 में पहला सर्कुलर निकला है, बहुत डिटेल्ड सर्कुलर है रिसाइकलिंग 88 में। तो 36 ईयर्स के बाद में आज भी हम न्यू टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं उसको। 36 ईयर्स अभी भी वो यूज़ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो मशीन बहुत कॉस्टली है। इनफैक्ट 1992 में मैंने सबसे पहले यूज़ की थी रिसाइकलिंग, दिल्ली जयपुर रोड पे 10 किलोमीटर। उन्होंने कहा भाई कहीं यूज़ नहीं हो रही है, अटलांटा की एक ही मशीन है इंडिया में, कोई तो यूज़ करे उसको। तो हमने कहा ठीक है, मैं रीजनल ऑफिसर था वहाँ जयपुर में, तो मैंने कहा 10 किलोमीटर मैं अप्रूव करता हूँ उसमें। उसकी कॉस्ट मेरी डबल थी, पर किलोमीटर कॉस्ट जो नॉर्मल कन्वेंशनल से करते हैं उसकी डबल कॉस्ट आ रही थी। फिर भी क्योंकि यूज़ करना था हमें, तो पीरियडिक रिन्यूअल वर्क में हमने यूज़ किया उसको। तो फिर यही इश्यू आया कि भाई आपने ठीक है सिंगल टेंडर, एक ही आदमी एक ही मशीन है वही टेंडर कर रहा है, उसमें ठीक है जस्टिफाई हो गया क्योंकि काम कराना ही हमें, लेकिन इस कॉस्ट में कैसे काम होगा रिसाइकलिंग का। तो फिर मिनिस्ट्री ने उस समय IRC को भी कहा भाई गाइडलाइन आप भी बनाइए और हम कैसे प्रमोट करें, इसमें मटेरियल की इतनी सेविंग है, कम से कम वो देखिए आप, मटेरियल सेविंग देखिए, कॉस्ट इनिशियल ज़्यादा है। तो हमने उनको भी बुलाया, मैन्युफैक्चरर को भी, और आप इसकी कॉस्ट कम करिए क्योंकि एक ही मशीन है। तो उन्होंने कहा काम होगा जब वो कम होगी, नहीं तो कैसे कम होगी, मतलब उसकी कॉस्ट कहीं तो निकालेगा वो इक्विपमेंट की। तो इतने सर्कुलर्स निकले हैं, कम से कम 12 सर्कुलर मिनिस्ट्री ने निकाल चुकी है अब तक कि भाई रिसाइकलिंग यूज़ करिए, लेकिन वो कॉस्ट जब तक उसकी कम नहीं होगी, जब तक कोई भी ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर उसको कैसे अवार्ड करेगा ओपन बिडिंग में।
तो ये सर्कुलर लेके आए हैं। और अब ये जब बीओटी का कंसेप्ट लाने का हमारा पर्पस, क्योंकि वाई इट इज कमिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को तो लोएस्ट पे मतलब उसको L1 टेंडर नहीं करना है, उसको तो अपनी कॉस्ट देखनी है कि उसको कितने साल वो रोड चलानी है और उतने साल में उसको कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है। वो भी कोई कॉस्टली काम कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, लेकिन जब उसको प्रॉफिट दिखेगा तब जरूर वो लाएगा न्यू टेक्नोलॉजी। तो बीओटी में जब ये हमने डिज़ाइन बिल्ट फाइनेंस DBFO सिस्टम आया था, वो उसका पर्पज भी यही था कि डिज़ाइन फ्रीडम इनको दें और वो देखें भाई कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वाले ऑफिसर नहीं करेंगे कम, वो अपने हिसाब से कन्वेंशनल से ही काम करेंगे। सबको डर लगता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं लाएगा, लेकिन उसको अगर फ्रीडम दो आप कंसेशनियर को, डेवलपर को, जिसके पैसे भी उसके लग रहे हैं, तो हमें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, वो अपने नई टेक्नोलॉजी लाए, जिसको उसमें बचत होगी वैसी टेक्नोलॉजी लेके आए चाहे वो, और 20 साल 25 साल का कंसेशन पीरियड दो, क्योंकि वो लाइफ साइकिल में अगर उसको सेविंग होगी तो वो ज़रूर लाएगा। और बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स लेके आ रहे हैं, मतलब जो टेक्नोलॉजी आ रही है नई टेक्नोलॉजी के नाम पे, वो सारी उन्हीं प्रोजेक्ट्स में आई है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स जो थे, जो बीओटी के प्रोजेक्ट्स थे और या हैम के प्रोजेक्ट्स में आ रही हैं, बाकी जो 2-2, 4-4, 5-5 साल वाले EPC कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो 5 साल के लिए काम होता है। जो हम बताया कि EPC के डिस्कशन हम जब सुबह कर रहे थे कि उसमें यही बड़ा चैलेंज हमारे लिए कि क्वालिटी नहीं मिल रही है उसमें वो 5 साल डिफेक्ट लाइबिलिटी है, तो छठे साल क्या होगा पता नहीं है। मेरे को कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था, सर वो ब्रिज बनाया था और वो कलवर्ट छठे साल में गिर गया, अब क्या करें, 5 साल का डिफेक्ट लाइबिलिटी था। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं EPC में, उसको एड्रेस, क्वालिटी के इशू को एड्रेस करना है। तो यहाँ हम जब नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ये उनसे और इसीलिए EPC का जो फॉर्मेट आया था उसका पर्पस यही था, क्योंकि आइटम रेट में चीज़ें नहीं आ सकती, क्योंकि आइटम रेट में तो सब काम L1 से ही होगा। EPC में आप उसको फ्रीडम दोगे, वो देखेगा कि मैं बेस्ट इसकी वैल्यू इंजीनियरिंग कराऊं। वैल्यू इंजीनियरिंग वो कराएगा जो रियली क्वालिफाइड जो कंसल्टेंट्स हैं, जो IIT के प्रोफेसर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, जो वास्तव में उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कन्वेंशनल से हट के काम कर सकते हैं, तो वो वहाँ उसको फ़ायदा दिखेगा, तब वो EPC में भी वो लेके आएगा उस चीज़। जब हमने मिनिस्ट्री में देखा कि ये कैसे आए कि हमारे प्रोजेक्ट्स में, तो इनफैक्ट एवरी जोन के चीफ इंजीनियर, मिनिस्ट्री में जोनल चीफ इंजीनियर्स हैं हमारे 15 जोनल चीफ इंजीनियर्स, तो हर एक चीफ इंजीनियर को हमने ये डायरेक्शन दी कि कोई भी DPR बनेगी उसको ADC लेवल पे जब बनने के बाद में अप्रूवल की स्टेज पे आपको ये सर्टिफाई करना पड़ेगा फाइल पे कि आपने कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उसमें कौन सा लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज़ किया उसमें, और उससे कॉस्ट का कितना बेनिफिट हुआ है। You have to bring on file these things, then only your DPR will be finally approved. क्योंकि उस स्टेज में आपको लोएस्ट कॉस्ट, क्योंकि EPC में एक ये भी था उसका कि आप जानबूझ के हाई कॉस्ट लाते हो और बाद में वो बेनिफिट ले जाता है कॉन्ट्रैक्टर उसका। CTB CTS भी पहले कहीं यूज नहीं हो रहा था अपने DPR में, और कॉन्ट्रैक्टर यूज कर रहा था और वो बेनिफिट ले जा रहा था, उसको वो बोनस भी ले जाता था और उसमें उसका कॉस्ट में भी फायदा होता था। तो हमने कहा कि वाई नॉट वी शुड डू इट, डिपार्टमेंट क्यों नहीं करता उसको, कि भाई आप ही CTB और CTS भी क्यों नहीं यूज़ करते, वो जो टेक्नोलॉजी बाद में कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करेगा वो हम पहले DPR में हम क्यों नहीं कर लेते इसे, तो तभी उसका ऑप्टिमाइज होगी कॉस्ट और तभी वो न्यू टेक्नोलॉजी वास्तव में आएगी वो, अदरवाइज तो वो आ ही नहीं रही है। 20-20 साल से सर्कुलर निकल रहे हैं, सारे कोड बने हुए हैं, मैं बताया कितने कोड, मैंने 25 कोड मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन क्यों नहीं आ रही है वो। तो एक तो को कैसे हमें स्टार्ट करना है, PWD में कैसे ऑफिसर्स को काम करना है, कंसल्टेंट्स को उसमें कैसे माइंडसेट चेंज करना है कि नहीं कन्वेंशनल से हटके आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल हमें कंट्री का भी फ्यूचर भी देखना, हमारी नई नेक्स्ट जनरेशन का, कि उनको मटेरियल कहाँ से मिलेंगे काम करने के लिए। मटेरियल की तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, सो वी हैव टू थिंक ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस एंड दिस इज नाउ इट इज़ अ मस्ट टू ब्रिंग हिम ऑल मटेरियल का जो ऑप्टिमाइजेशन करना, ये अभी नेसेसिटी है, ये अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप करें कि नहीं करें। नाउ इट इज़ ए नेसेसिटी फॉर अस टू सी दैट अवर नेक्स्ट जनरेशन एटलीस्ट दे आर एबल टू डू दीज वर्क्स। तो ये जो इनके कंसर्न है कि भाई माइंडसेट आपका चेंज नहीं हो रहा, ये तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, इवन IRC में हमने इतने सेमिनार करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी पे, और मे बी मैंने ही जो मेरे टेन्योर में ही कम से कम 8-10 सेमिनार कर चुका हूँ मैं न्यू टेक्नोलॉजी पे। और not only in India, abroad also, they are all talking on sustainability, decarbonization. These are the two words कि वर्ल्ड के हर कंट्री में अब इस पे इंटरनेशनल सेमिनार्स हो रही हैं। इनफैक्ट
April में there was a seminar in Italy and I participated from India in that seminar also on same subject. And I explained कि भाई हमने क्या क्या हमारी नई टेक्नोलॉजी है और they appreciated what has been done by IRC. कितने सारे हमने कोड बना दिए हैं तो उसमें और कितना उसको बेनिफिट हो सकता है हमारे जो डिज़ाइंस में और उसमें क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसमें. So these are some of the relevant issues which he has raised and I wanted to just clarify these issues. Now the floor, we have received a number of comments, but most of them are of appreciation kind of comments that yes, this is very informative, very useful. We should have more such seminars. So मतलब इसमें कम से कम 10 ऐसे लेटर हैं जिसमें सभी में यही है, एक दो में कमेंट्स भी हैं डिटेल में. तो मे बी अगर कोई स्पेसिफिक कमेंट्स हैं इनमें, क्योंकि मतलब इसको रीड करने की बजाय आई वुड लाइक दैट यू कैन रेज योर क्वेश्चन डायरेक्टली, क्योंकि ये सबको पढ़ने की बजाय आप अगर कोई पूछना चाहें ऑन दिस इशू हाउ टू ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी, यू हैव एनी सजेशन, आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या और कोई आपके नए आइडिया हो. बाकी लोकली अवेलेबल मटेरियल इज आई मीन इन 1960s में मिनिस्ट्री ने रिसर्च स्कीम स्टार्ट की थी और तब हर डिस्ट्रिक्ट में ये, इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में ये आइडेंटिफाई करवाया था कि उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अवेलेबल मटेरियल है और वो क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है और वो कहाँ यूज़ हो सकता है, हाईवे पे हो सकता है कि नहीं हो सकता या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. उसके बाद में उस स्टडी को फिर रिवीजन भी करवाया एक बार, लेकिन 80s के बाद में फिर फर्दर कोई ऐसी रिसर्च डिटेल्ड इस लेवल पे नहीं हुई ऑल इंडिया लेवल पे. बट आई थिंक देयर इज़ अ नीड कि हर स्टेट में इस तरह की हो कि लोकली अवेलेबल मटेरियल. इवन राजस्थान में मार्बल डस्ट की इतनी न्यूसेंस थी कुछ हाईवे पे, क्योंकि दोनों साइड हाईवे पे मार्बल डस्ट, जहाँ भी मार्बल क्वेरीज हैं उनकी डस्ट जो है वो पड़ी रहती थी. उस पर भी एक सर्कुलर निकाला हमने, उसका यूज़ कैसे हो सकता है और वो एक डिटेल्ड सर्कुलर है, अब तो कोड में भी आ गया वो कि मार्बल डस्ट को आपको यूज़ करना है, आप एम्बैंकमेंट में यूज़ करिए. तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो लास्ट हमारा एक कंप्रीहेंसिव जो डॉक्यूमेंट है उसमें सब तरह के वेस्ट मटेरियल हमने उसमें यूज़ किए. स्लैग्स का जो अभी हो रहा है, जो स्टील स्लैग जो पहले मैंने बताया रूरल रोड के लिए और अब हाईवे के लिए हम करने जा रहे हैं, आई थिंक वर्ल्ड में अभी दिस में भी फर्स्ट और सेकेंड टाइम इन द वर्ल्ड दैट वी आर कमिंग आउट विद दिस डॉक्यूमेंट ऑन स्टील स्लैग का यूटिलाइजेशन करना हाईवे में एग्रीगेट्स की एज ए एग्रीगेट, मतलब प्रोसेस स्टील स्लैग एग्रीगेट्स यूज़ कर रहे हैं हम, जो अपने कन्वेंशनल एग्रीगेट को रिप्लेस कर रहे हैं उससे. सो ये जो वेस्ट मटेरियल का हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज we are pioneer in the entire world in this area. बट ये मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, ये खाली रिसर्च नहीं हो, एक दो आइसोलेटेड पायलट प्रोजेक्ट नहीं हो. यही हमारा पर्पस होता है इस तरह की सेमिनार करने का. और आई थिंक योर आवर पॉलिटिकल बॉसेज आर ऑल्सो हेल्पफुल, दे ऑल्सो वांट कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों को एजुकेट करें और वो ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं, उसमें कॉस्ट कम करें और इस तरह के मटेरियल को यूज़ करें. सो ये दिस इज़ द बेसिक पर्पस एंड आई थिंक इफ वी have understood these basic things, then some of the objective of this seminar is met. If you realize the importance कि नहीं अब नेक्स्ट जो हमारी DPR होगी उसमें ज़रूर हम कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी, नया मटेरियल और कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज करेंगे उसमें और सेविंग भी करेंगे जो कन्वेंशनल मटेरियल्स, जैसे बिटुमिन को रिप्लेस करना, जो मंत्री जी हमें बार बार कहते थे सीमेंट को भी रिप्लेस करवाओ, स्टील को भी रिप्लेस करवाओ, क्योंकि स्टील की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं. इसलिए वो GFRP का उनका जो था कि वो जल्दी से जल्दी कोड बनाओ आप कि स्टील रिप्लेस हो जाए उससे, रिइंफोर्समेंट बार से. तो जो सोच नहीं सकते थे पहले कि ये रिप्लेस हो सकती हैं, वो सब भी हम रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं. कि R&D जो भी हुई है इंडिया में उसी सब्जेक्ट्स पे रिसर्च स्कीम भी चल रही हैं. सो इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, बिकॉज नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर फर्दर क्वेश्चंस. सर अभी जो आपने बताया कि IRC वाकई अपना जो भी 100% काम कर रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई आपको. निवेदन है सर, मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एजेंसी साहब के मार्फत भी काम किया था कि जो एग्जिस्टिंग रोड हमारी कुछ डैमेज हो गई थी पार्ट में, तो उसमें हमने एडिंग कर थिकनेस को मटेरियल से WMM से और DBM से या BC से उसको हमने रिक्रश दोबारा बनाई. तो 20-25 लाख रुपये पर किलोमीटर कास्ट आई सर हमारी. तो हमारा करीब 1200 किलोमीटर मध्य प्रदेश का इस तरीके से हमने ठीक किया. तो ये बात सही है सर कि जो मटेरियल लेवल होगा उसी से हम काम करेंगे. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर हम फेस कर रहे हैं वो है डामर की. सर डामर 100% डुप्लीकेट आ रहा है सर.
डामर की रोडों पे धूल उड़ रही मध्य प्रदेश में। मतलब इसमें कोई मेरे कहने में मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हकीकत है सर, इसको कैसे कंट्रोल करें सर? क्योंकि आपने भी सर्कुलर निकाल दिया मिनिस्ट्री से कि वो एक टेस्ट ये करके और ठेकेदार उपयोग कर सकता है एक्सपोर्ट वाला डामर। वो टेस्ट सर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है उस टेस्ट के हमारे पास तो जो है। तो डामर पे सर कुछ ना कुछ अपन को बड़े स्तर पे प्लानिंग करना पड़ेगा। बाकी सर जो 37 आपका 18 करोड़ है सर, उससे अगर रोड बन रही है प्रॉपर, हम लोग ध्यान दे दें इंजीनियर लोग, वो रोड कभी खराब नहीं होगी सर। सर छिंदवाड़ा में मैं 10-11 में ई था सर, वहाँ पे CRIF में हमने सर 27 रोड बनाई सर। सारी 27 रोड जिंदा है सर अभी तक, केवल हम लोग उन पर रिन्यूअल 5-6 साल में कर रहे हैं। वो छिंदवाड़ा के ई भी यहाँ बैठे हैं। तो मेरा ये कहना सर, जो आप इतनी मेहनत करते हो, कोड बनाते हैं, इन कोड का अगर हम 70% ही पालन कर लेंगे तो निश्चित ही हमारा खराब नहीं होगा, मतलब सरफेस रोड खराब नहीं होगा। और डामर की सर बहुत बड़ी समस्या है सर, बहुत बड़ी समस्या। उसमें बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है, और वो रैकेट इतना बड़ा है कि अगर टच करेंगे हम तो निश्चित ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी सर। तो इसलिए आप मिनिस्ट्री में सर, माननीय मंत्री जी से, आप गडकरी साहब से बात करके सर कुछ ना कुछ इसमें सर्कुलर जारी करें कि डामर के ऊपर कंट्रोल हो जाए सर। थैंक यू सर। I think this adulteration of bitumen is a very very important issue, और ये बहुत जगह से ये कंप्लेंट्स हैं कि भाई बिटुमिन की क्वालिटी में इश्यूज हैं। और अभी ये जब है जबकि प्राइवेट अलाउड नहीं है, मतलब इंपोर्ट अलाउड नहीं है, तब ये प्रॉब्लम है। यानी सारा का सारा रिफाइनरी बिटुमिन है। इनफैक्ट एक करीब 6 months बैक में देयर वाज ए सेक्रेटरी कॉल्ड ए मीटिंग एंड आई अटेंडेड from IRC, and he called all the general managers of refineries, I mean chairman representative जो भी refineries के हैं, Indian Oil, all refineries, और उसमें ONGC के, इसके अलावा भी जो पेट्रोलियम का मतलब मिनिस्ट्री के भी जिसमें जो एडिशनल सेक्रेटरी थे उसमें, कि भाई इसको कैसे एड्रेस किया जाए ये इशू को, क्योंकि क्वालिटी की कंप्लेंट्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। तो उस पर ये क्लियर डायरेक्शन दी थी उस मीटिंग में कि भाई आप जिस तरह से आप केरोसिन और पेट्रोल और डीजल को कंट्रोल करते हो, आप बिटुमिन को क्यों नहीं कंट्रोल करते उस तरह? क्योंकि आप रिफाइनरी से सप्लाई कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि वो ये कह रहे थे वहाँ पे उस मीटिंग में कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट तक है, हमारी रिफाइनरी गेट तक। गेट के बाहर में वो क्या हो रहा है उसका बिटुमिन का, उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। उसके बाद में हम जो आउटसोर्स कर देते हैं, और वो जो भी उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो दूसरी पार्टी है उसकी जिम्मेदारी है, हमारी गेट तक ही है। तो ये बहुत ही क्लियर डायरेक्शन थी उसमें सेक्रेटरी की कि भाई ये हम अभी नहीं सुनना चाहेंगे आगे से। ये मीटिंग 6 महीने पहले हुई थी कि ये क्लियर कमिटमेंट आना चाहिए योर चेयरमैन्स ऑफ ऑल द रिफाइनरीज से कि यू विल टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग टिल द साइट। कि बीच में अगर वो कह रहा है कि मैं जहाँ भी वो डिलीवर कर रहे हो आप अपना बिटुमिन, जो टैंकर से बिटुमिन जा रहा है, वहां तक की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हो वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी वहां तक होनी चाहिए। उसको जियो टैगिंग करो या जो भी करो, बोले रास्ते में उसमें एडल्ट्रेशन वो बिटुमिन निकालता है और ऐड कर देता है या एडल्ट्रेशन हो रहा है। तो ये इशू पे मतलब फिर मिनिस्टर लेवल पे भी एक मीटिंग हुई, वहाँ भी उनके रिफाइनरीज के और सारे जो भी ऑल स्टेक होल्डर्स के उनको बुला के बोला गया था कि भाई ये क्वालिटी की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज आप जब रिफाइनरी से टेस्ट कर रहे हो और सर्टिफिकेट दे रहे हो तो वो वहाँ मिलना चाहिए साइट पे, तो वो नहीं मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर की आप कह रहे हो कॉन्ट्रैक्टर भी करते हैं एडल्ट्रेशन या जो भी कर रहा है, तो ये इशू पे ट्रांसपोर्टर या कॉन्ट्रैक्टर या जिसका भी है बोले कि जिम्मेदारी रिफाइनरी साइट तक की लेगी जहाँ उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका। तो ये आई थिंक ऑलरेडी एट द हाईएस्ट लेवल वो मैटर चल रहा है एंड जल्दी से जल्दी उसमें आउटकम मिलेगा। क्योंकि ये जब आया ना कि इंपोर्ट क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी का इशू है। जब इंपोर्ट वालों को हम इसलिए अलाउ नहीं करें कि क्वालिटी का इशू है, तो वाई नॉट फॉर इंडियन रिफाइनरीज सेम यार्डस्टिक क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, चाहे वो बाहर का बिटुमिन हो चाहे वो इंडिया का बिटुमिन हो। तो बाहर के बिटुमिन को भी जो परमिशन दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि NHAI की देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ बिटुमिन, वो पर्टिकुलर मंथ्स में वो बनाते ही नहीं है रिफाइनरी वाले। वो कहते हैं कि इस पीरियड में हमारा बिकता नहीं है, 4-5 महीने बंद रहती है वो, और वो कैपेसिटी पे चला ही नहीं रहे। 60% of the capacity is being done because it is not benefiting them much. Bitumen is just a waste product for them. It is not a priority for refineries. इस वजह से फिर वो at the highest level then it was permission was given कि भाई scarcity को कहीं से तो मीट करना है, हमारी तो टारगेट्स हैं इतने। तो वो सेंट्रल लेवल पे जो 2018 का सर्कुलर में हमने मना किया था, 2023 में उसको रिव्यू किया और
क्योंकि स्केर्सिटी हो रही है और रिफाइनरी अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने को तैयार नहीं है। क्वालिटी वाले इशू को पूरा एड्रेस नहीं कर रही अभी तक, जब तक राइटिंग में वो नहीं देती कि हाँ हम पूरा जियो टैगिंग करेंगे या बिल्कुल एडल्ट्रेशन अलाउ नहीं करेंगे। तो इसी वजह से ये सर्कुलर आया था मिनिस्ट्री से। अब स्टेट में अगर वो नहीं है डिमांड सप्लाई का वो इशू, देन दैट इज वाई स्टेट में अभी कंट्रोल है वो कि रिफाइनरी का, लेकिन रिफाइनरी में भी क्वालिटी कैन नॉट बी कंप्रोमाइज्ड। यू आर राइटली यू आर सेइंग दैट बिटुमिन जो है क्वालिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी रिफाइनरी की होनी चाहिए कि रास्ते में ट्रांसपोर्टर अगर करता है तो ट्रांसपोर्टर तो उन्हीं का है, तो वो जिम्मेदारी वो रिफाइनरी ले, उसको ट्रांसपोर्टर पे एक्शन लेना वो उनका काम है। सो दैट इज ए वेरी जेन्युइन कंसर्न। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, उनका सिस्टम होना चाहिए पूरा इनबिल्ट। जैसे पेट्रोल डीजल कैसे करते हैं वो, जैसे वो करते हैं वैसे बिटुमिन करें उसी हिसाब से। नहीं वो वही है ना, प्लांट के बाहर हो रही है। यस प्लीज सर। सर नमस्कार, मैं पटेल बोल रहा हूँ सर, ऐसी हूँ। जो न्यू टेक्नोलॉजीज की बात है सर, तो अभी जैसे RBI 81 हमको यूज करना है, तो जहाँ पर हमको आवश्यकता ही नहीं है उससे सस्ते में अगर रोड बन सकता है ना, तो हमको वहाँ पर उसको क्यों यूज करना चाहिए सर, ये एक इशू है। तो जैसे नीदरलैंड में जो है हम लोग साइल स्टेबलाइजेशन करके और फिर जो है सीधा सबग्रेड किया और जो है उस पर OGPC सील कोट कर दिया या बेयरिंग कोट कर दिया, वहाँ पर तो उसकी आवश्यकता है। लेकिन जो है जहाँ पर मटेरियल इजीली अवेलेबल है वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज की कितनी ज़रूरत है सर, इसके ऊपर एक बार विचार करना चाहिए सर। दूसरा, जहाँ पर जैसे कोई अपना जो है ब्लैक कॉटन साइल है, वहाँ पर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी हम यूज करें और उसके कोई निर्देश हों IRC से, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो आप कह रहे हैं कि भाई स्टेबलाइजेशन, देयर आर वेरियस वेज ऑफ स्टेबलाइजेशन। हमने कभी नहीं कहा कि RBI 81 यूज करिए या YZ कौन सा यूज करें, वो डिपेंड करेगा आपकी एक्चुअल, यू विल कंपेयर कि भाई आपका जो कन्वेंशनल काम करने से और दूसरा प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हो उसमें क्या इंप्रूवमेंट दे रहा है, वेदर इट इज ए रियल सेविंग और नॉट। उसके बिना तो आप खुद ही जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। ये नहीं जबरदस्ती सर्कुलर है कि नहीं आपको यूज करना मस्ट है, वो कहीं नहीं कहा किसी ने भी। वो तो आप अपने जस्टिफाई, तो आप जब DPR बनाएंगे तब अपने आप वो उसको कंपेयर करेगा कि भाई कन्वेंशनल में मेरी कॉस्ट इतनी आ रही है और मैं अगर कोई स्टेबलाइजर यूज़ करता हूँ, नॉर्मल स्टेबलाइजर सीमेंट वाला यूज़ करता हूँ या केमिकल स्टेबलाइजर यूज़ करता हूँ, तो कॉस्ट में इतनी सेविंग है, तभी अलाउ करेंगे आप, नहीं तो कैसे अलाउ करेंगे। तो ये उन्हीं एरिया में होगा जहाँ पे बहुत ही पुअर 1 CBR है, 2 CBR है, बहुत ज़्यादा आपकी क्रस्ट आ रही है, और उसमें तब आप देखोगे भाई इसमें अगर मैं ऐड करता हूँ इसमें थिकनेस भी कम होगी, CBR इसमें 1 की जगह 10 हो जाएगी, पेमेंट डिज़ाइन में पूरा इतना इफेक्ट पड़ेगा उसका, तभी आप अलाउ करोगे उसको। सो इट इज़ नॉट ए मस्ट। ब्लैक कॉटन सोइल के लिए कोड भी बने हुए हैं और वैसे भी आपको इवन मेथड्स भी प्रिस्क्राइब्ड है हर जगह कि जहाँ आपको ब्लैक कॉटन होती है तो कैसे उसको इम्प्रूव करना है या उसको रिप्लेस करना है। फाइनल 500 में आप नहीं अलाउ करेंगे, ये सब चीज़ों के डिफाइंड ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं। इस पर स्पेसिफिक हर एरिया, हर सब्जेक्ट में हमने कोशिश की है कि जो भी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं उस पर फीडबैक आता है, उसके बेसिस पे हम कोड में ले आते हैं उसको पॉजिटिव फीडबैक। और एक्रेडिटेशन करने का भी पर्पज़ यही है कि नई मटेरियल, नए टेक्नोलॉजी पहले यूज़ करने की परमिशन दें, वो 10-12 जगह यूज़ होगी, उनके फीडबैक आएंगे, हाँ साहब इसमें वास्तव में कॉस्ट सेविंग हुई है, और 5-6 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब उसको हम कोड में लेके आते हैं। दैट इज कॉल्ड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, कि कोड में आने के बाद में देन यू आर कंफर्टेबल कि नाउ यू कैन यूज इट। जब तक कोड में नहीं आती तब तक कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर नॉर्मली यूज़ नहीं करता, हो कोई रिस्क नहीं लेता। इसी वजह से हमने ये कमेटी स्टार्ट की थी IRC में, एक्रेडिटेशन कमेटी। तो इसकी वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हैं डिफरेंट जगह, और उनके फीडबैक भी मिल रहे हैं हमें, और उसी को अपग्रेड करके हम कोड में ला रहे हैं फिर धीरे धीरे। आई थिंक ये जस्ट some more suggestions have come.
Excuse me, sir. हाँ. Kindly allow me. Yes. Yes, sir. Sir, I am R.S. Chandel, Divisional Manager, MPRDC, sir. So, I don't have any questions, but I have a suggestion. Sir, from yesterday, we have learned a lot about introduction of new technologies, and we have made certain provisions in the bid document and coming circulars also, that in project-specific document, certain limit has been allowed to go for the initiatives. But my suggestion, sir, if we make it competitive, if you want to promote the new initiatives in the road construction and try to minimize or customize or cost effectiveness, so we have to go for the competitiveness. I have an example. I was involved in a project Jabalpur to Amarkantak. It was a 220-kilometer road, and at that time, even though it was not a new technology, but I was allowed to go for some experiments. So I did riverbed material as GSB. So that GSB layer was substantially reduced from 220 mm to 180 mm. And the profile, the rigidity of the profile is such that even after the lapse of the 20 years, the profile is intact. Only 200 meter was distressed. So that was the result I got. So I was allowed, I was given a free hand by my then managing director, Mr. Sulman sir. So he was allowed me, and consultant has adopted the technology and allowed the contractor to go with that. So my suggestion would be, if we promote, if we make it more competitive, then only it can be more effective. No, exactly. That is what I am saying कि locally available material को कैसे optimum use करना उसका. जो भी आपको आसपास में है, rather than bringing कि जो CB इसका impact value meet नहीं कर रही, water absorption meet नहीं कर रहा, 300 किलोमीटर की लीड से ला रहे हैं. त्रिपुरा में कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है. 400 किलोमीटर की लीड से मटेरियल लेके आते हैं. उसकी बजाय वो why they are not using the locally available these materials or even these stabilizers. I think त्रिपुरा is a state जहाँ सबसे ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्योंकि 400 किलोमीटर की लीड है वहाँ लोकल एग्रीगेट है ही नहीं, तो वही सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी को ऐसे स्टेट में. तो if you kindly allows me, sir, one more suggestion. Sir, we have talked about this. If you go for new technologies, the government officers or the engineer involved in that project, they get scared of that. They are getting punished if the result would be adverse. So we had just limited to that extent. I would suggest, if you go for promotion, if you go for rewarding the such personnel who can bring up such initiatives, that will be more effective. No, that is what I am saying कि भाई सबसे पहले इम्यूनिटी वाला, इवन मैंने कहा ना, मिनिस्ट्री में मैंने परमिशन ली है, अप्रूवल ली है मिनिस्टर से कि भाई कोई भी nobody will be punished, whether it is a consultant or a contractor or a government officer who is recommending it in the contract. मतलब you have to take chances कि भाई नई टेक्नोलॉजी है जो पहले यूज नहीं हुई है, तो कहीं पहला किसी को तो पहला स्टार्ट करना पड़ेगा. तो इसलिए हमने भी जो कोड बनाए हैं, जैसे स्लैग्स के कोड बनाए हैं, पर्टिकुलरली कॉपर स्लैग, स्टील स्लैग, आयरन स्लैग, ये रूरल रोड से शुरू किया हमने कि भाई पहले मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है तो रूरल रोड पे ट्रैफिक कम है, वहाँ से चालू करूँ मैं. जब हमने देखा उसमें कुछ काम हुआ है और अच्छा काम हुआ है, एंड नाउ CRRI ने 2-3 प्रोजेक्ट्स पे अपने हाईवे पे करके दिखाया कि अब बन गए हाईवे पे भी, तब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको कि हाईवे पे परमिशन दें उसको. तो कोड बनाने के लिए हमारा भी एक प्रोसेस है कि जब कॉन्फिडेंस हमारे में आ जाए कि हाँ भाई ये यूज़ हो रहा है और ये लाना चाहिए क्योंकि ये इतना वेस्ट हो रहा है, उसको रूरल रोड में जिसका कंजम्पशन इतना नहीं है जितना हाईवे पे हमें डिमांड है, तब हम उसका कोड लेके. और अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और प्लानिंग कमीशन दोनों दे आस्क्ड IRC कि आप जल्दी से जल्दी इस पे कोड बनाइए और हाईवे पे इसको यूज करिए स्लैग्स. Sir, in the contrary, if you go on rewarding the personnel or the agency who bring up yes, I think it must be there from state कि कोई भी ऑफिसर इस तरह के अगर नए आइडिया दे रहा हो, उससे कॉस्ट कम हो रही हो और स्पीड फास्टर कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, यानी एक्सीलरेटेड कंस्ट्रक्शन, तो दे शुड बी रिवार्डेड फॉर ब्रिंगिंग द न्यू टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंगिंग सेविंग, अल्टीमेट सेविंग टू द गवर्नमेंट. आई थिंक दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव कैन बी टेकन by state PWD or in different circles
में इस तरह के कि भाई कौन कौन से प्रोजेक्ट में आपने कितनी कन्वेंशनल को हटाने के बाद कितनी सेविंग की, नॉर्मल कन्वेंशनल कॉस्ट से आपने जो रिडक्शन किया कॉस्ट में, he should be motivated. If individuals are responsible, then it should be motivated for that. He should be awarded for this kind of initiatives. Thank you so much for the response, sir. Yes, please. Sir, my question is, the bitumen is the last residual of this petroleum product, I think. And what may be the material which may be mixed in this material for the or making more cheaper? Because we can mix only fly ash for increasing weight or and that can be tested easily. What specific you say I didn't follow? सर ये बिटुमिन जो लास्ट रेसिडुअल है, जो सबसे मतलब जो आखिरी प्रोडक्ट है ना, इसमें और क्या मिलाया जाए? जैसे खाने के तेल में हम यदि पाम ये मिलाएं तो वो चलता है, लेकिन पाम ऑयल में क्या मिलाएंगे वो? नहीं, बिटुमिन की कॉस्ट, भाई बिटुमिन तो जो रिफाइनरी बना रही है, अब जो हो रहा है कि उसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, जैसे बायो बाइंडर्स की बात हो रही थी कि हद से या और भी उससे चीपर मटेरियल बाइंडर मटेरियल बनाए, उस पर रिसर्च चल रही है हर जगह। CRRI में भी काफ़ी रिसर्च चल रही है और मिनिस्टर साहब डायरेक्टली कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं कि उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढें बिटुमिन का, क्योंकि बिटुमिन के लिए क्रूड इतना इंपोर्ट करना पड़ रहा है और रिफाइनरीज उतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उससे इनकम नहीं हो रही है, इसलिए वो प्रोडक्शन की पूरी कैपेसिटी में बना ही नहीं रही है इंडिया में, और बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इतना हमारा पैसा जा रहा है इतना इसमें इंपोर्ट में, तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाए, बायो बाइंडर्स लेके जाएँ, उनसे हम काम करें, तो उस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है डिफरेंट IITs में भी और CRRI में भी। मेरा ये सर सोच मतलब मेरा पूछना इसलिए था कि ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज़ मिलाते होंगे। नहीं, एडल्ट्रेशन का मतलब उसमें कोई जैसे उसको बिटुमिन में केरोसिन मिला दें या सस्ता प्रोडक्ट है तो वो तो उससे महंगा ही है, या और मार्बल डस्ट मिलाते हैं उसका, जैसे आप कह रहे हैं। बट दैट कैन बी टेस्टेड इजीली सर बाय फिल्ट्रेशन टेस्ट, सो मतलब यानी ये कोई कठिन नहीं है मेरा कहने का। नहीं, टेस्ट कर सकते हैं, तो वही तभी तो पता चल रहा है ना कि एडल्ट्रेट आ रहे हैं बिटुमिन जी, टेस्ट करके तब पता चलता है कि हाँ एडल्ट्रेशन हो रहा है, और ये सभी प्रोजेक्ट्स में ये रिपोर्ट आ रही है कि भाई एडल्ट्रेशन हो रहा है। जहाँ पे थोड़े बहुत को जो टेस्ट कराना होता है वो अच्छी क्वालिटी का दिखा देते हैं, बाकी उसमें बल्क में यूज हो रहा है, तो वो एडल्ट्रेशन को रोकना है हमें, ये इशू है उसमें। आई थिंक अबाउट मोर देन 10 comments have come from different officers. Gopal Singh, Chief Engineer, MPRDC, I think can we adopt the proven new technology of other countries on a validation by IRC on fast track basis? So this is what I was suggesting. ये जो आप कह रहे हैं ना कि बाहर के कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी जो आ रही है, particularly material and technology, our accreditation committee of IRC is doing exactly this job. कि जो USA में यूज़ हो रहा है, इंडिया में क्योंकि कोड नहीं है इसलिए कोई अलाउ नहीं कर रहा, तो ये कमेटी जो हमने बनाई हुई है एक्रेडिटेशन कमेटी, वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं एंड दे सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, कहाँ कहाँ यूज़ किया उन्होंने और कौन कौन से कंट्री में यूज़ हुआ है। वी हैव ए कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, अबाउट 25 experts are there in that committee, and we ask the presentation and then they explain, their technical officer they explain कि भाई क्या क्या इश्यूज हैं। और दूसरा हम ये भी कहते हैं कि इंडिया में टेस्ट करा के बताइए, आपने बाहर जहाँ भी यूनाइटेड स्टेट्स में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही होगी वहाँ के क्लाइमेट में, वो ठीक है, लेकिन इंडियन क्लाइमेट में इंडियन लेबोरेटरी में उसका टेस्ट कराना जरूरी है, और वो टेस्ट रिपोर्ट से हम एग्जामिन करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट अप्रूवल वी गिव अप्रूवल फॉर ट्रायल यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। सो 3 साल उसको कहीं भी वो किसी भी प्रोजेक्ट पे, अब हमारे चाहे वो NHAI का हो या मिनिस्ट्री का या उन प्रोजेक्ट्स पे वो यूज़ कर सकते हैं उसको ऑन ट्रायल बेसिस, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर 3 साल में उसका नहीं काम मिला या 1-2 काम मिले और फिर और भी दोबारा हम उसको रिन्यूअल भी करते हैं उसको, और जब 10-12 साल तक या 5-6 साल में या अच्छा फीडबैक आता है कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट सेविंग हो रही है, देन वी कंसीडर इट फॉर दी ब्रिंगिंग इन मैन स्ट्रीमिंग इन कोड्स। So this is what the procedure we follow to adopt this new technology, for which there are no codes available in India, but we approve through this committee, accreditation committee of IRC, they approve this particular new technology. ये IRC कोड जो बनते हैं तो जो उसको तो फॉलो करते हैं, और जो एक्रेडिटेशन आप लोग अप्रूव करते हैं तो उसकी कॉपी भी स्टेट्स को मिले यदि HODs को, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने पे विचार किया जा सकता है। एक्रेडिटेशन के लिस्ट
जो भी अप्रूव होता है मटेरियल, वो सारी आईआरसी की वेबसाइट पे आज तक के जितने मटेरियल अप्रूव हैं सब अवेलेबल है। इमीडिएटली हम उसको आईआरसी की वेबसाइट पे डाल देते हैं। देयर इज ए सेपरेट प्लेस फॉर एक्रेडिटेशन, एक्रेडिटेड मटेरियल, आज तक कितने मटेरियल अप्रूव हुए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी कंपनी है, क्या एड्रेस है उसका, वो सब चीज़ें अवेलेबल है। हाँ, तो उसका और वेबसाइट पे अवेलेबल, एवरीथिंग इज ऑन वेबसाइट। सर एक्सक्यूज मी, माई सेल्फ सक्सेना। सर मैं आपसे कुछ 2-3 चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। सर अच्छा सेशन रहा है सर साहब, मैं आई वुड लाइक टू थैंक माई हायर ऑफिसर, बहुत अच्छा नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है। तो मेरा सर एक इशू, तो कंस्ट्रक्शन लाइन में इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह में, तो मैं अक्सर जो इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि एनवायरनमेंट का काफ़ी लॉस होता है। तो इसमें हमारे यहाँ भी एसपार में पहले भी आ चुकी है कंडीशन कि ट्रांसप्लांटेशन किया जाए, लेकिन जनरली ये किया नहीं जाता है, या किया जाता है तो एक उसको एक रस्म की तरह किया जाता है। तो मेरा एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि क्या इसको कंपल्सरी किया जाए, क्योंकि अक्सर हम जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो इट इज़ द कॉस्ट, इट इज़ ऑन कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अर्थ, अवर प्लेनेट, उसका हम वो कर रहे हैं। इसका एनवायरमेंटल वो भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। तो क्या हम कितने इस तरह से हम पेड़ों को, हाईवे का जब वाइडनिंग होता है या नए अलाइनमेंट होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा नुकसान पहले अपने प्लेनेट मतलब वेजिटेशन मतलब ट्रीज का होता है। तो इसको कॉन्ट्रैक्टर्स करते क्या है कि उनको टाइम बचाना है, तो वो काटते हैं, तो काटने का भी उसमें टाइम तो लगता है। तो उतना ही मैंने कुछ ट्रांसप्लांट किए थे अपने कुछ प्रोजेक्ट में, तो ट्रिमिंग करके उसको ट्रांसप्लांट किया था। तो उनको इतना बाउंड कर दिया जाए कि भाई आप काटेंगे ले जाएंगे, वो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है, तो उसको आप ट्रिमिंग करके जो किए जा सकते हैं, बड़ी गर्थ वाले तो नहीं किए जा सकते, 1 फुट या 1.5 फुट के करीब जो होते हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और इस तरह के नंबर ऑफ ट्रीज ज़्यादा होते हैं, तो हम इस तरह से एक बाउंडेशन, इस तरह का कंपनसेशन उनको कर दिया जाए उनके एग्रीमेंट में कि इतना % आपको जो आपको प्लांटेशन उसको ट्रांसप्लांट करना ही है, उसको काटना नहीं है। तो हम बहुत कुछ तो एनवायरनमेंट और उसके पेड़ों को अपन बचा सकेंगे, और हम उसके प्रति वो हो पाएंगे कि हम जो अपन को कहते हैं कि हमने लिया तो बहुत करते, दोहन किया है उसका प्लेनेट का, कितना अभी बताया सी बात, तो हमने कि हमने इतना लोहा किया, तो हम उसको रिटर्न भी कर सकेंगे अपने प्लेनेट। ये तो एक मेरा पॉइंट हुआ, एक सजेशन। एक बात मैं कहना चाहूँगा सर, जो हम लोगों ने भी महसूस किया, अभी साहब ने लोकपथ के बारे में बताया था कि पोर्टल्स में हम लोगों ने दूसरे मटेरियल्स पे भी हमने गए पेचवर्क के लिए, इसके लिए, तो उसमें सबसे बड़ा अच्छा आया था कि ड्यूरिंग रेनी सीजन हमने पेवर ब्लॉक से किया था। तो सर एक मैं आपको अपना वो अनुभव बताऊंगा कि मेरे एनडीबी रोड मेरे बनाए गए इंदौर में, महू में, तो कुछ सिटी विलेज पोर्शन में हमने पेवर ब्लॉक से ही उसका पूरा सरफेसिंग किया, और 80 to 100 mm शायद उसको लिया था हायर स्ट्रेंथ का, तो वो सक्सेसफुल अभी 2 साल हो गए हैं वो चल रहा है। तो क्या हम विलेज पोर्शन में जो कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं सीसी रोड को, उसकी जगह पेवर ब्लॉक, उसमें क्या है सर रिपेयरेबल है वो, उसमें सीसी के ऊपर हम रिपेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि बीटी भी आजकल बैन कर दिया गया है। तो हम उसको जो अगर पेवर ब्लॉक का हम उसमें देंगे सीसी रोड की जगह, तो वो रिपेयर भी हो जाएंगे। कोई भी उसमें अगर प्रॉब्लम आती है पॉटल्स वगैरह, तो जल्दी रिपेयर भी उसी मटेरियल से हो जाएगा पेवर ब्लॉक से। तो हम विलेज पोर्शन में इसको इंक्लूड करना चाहेंगे। ये मैं मतलब थोड़ा सा आपसे मेरा सजेशन। थैंक यू वेरी मच सर। योर फर्स्ट इशू अबाउट ट्रांसप्लांटेशन, जी सर, in fact yes, this is the need, क्योंकि हाईवे अलाइनमेंट जब भी हम कर रहे हैं तो ट्री को रिप्लेस करना पड़ रहा है, काटना पड़ रहा है। इसके लिए मतलब इवन एट द लेवल ऑफ मिनिस्टर्स, आपने कई बार हमें कहा था शुरू में, जब 2010-12 उस टाइम पे, अबाउट 15 years बैक, कि भाई इस पे आप दूसरे जहाँ ट्रांसप्लांटेशन हुआ उसकी स्टडी करके गाइडलाइन बनाइए, डिटेल गाइडलाइन। इनफैक्ट आई वाज इन दैट टाइम मिनिस्ट्री एंड NHI में Mr. Sharma was the environmental CGM environment. We both went to the different states together, and in Gujarat they had done a lot of work. Yes. Gujarat was the only state that time जहाँ पे लार्ज स्केल पे ट्रांसप्लांटेशन किया था इन्होंने। तो हमने वो उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जाके विजिट करके वो लोकेशंस पे कि वो कौन कौन से ट्रीज को आपने किया है और उसकी सर्वाइवल रेट क्या है, तो वो स्टडी किया। और उनसे कंपनियों से भी बात की जो कि बनाते थे, जो ट्री को काट के एक जगह से दूसरी जगह लगाने के लिए उसके जो वो थे इक्विपमेंट्स, उसके बेसिस पे हमने उसी समय गाइडलाइन भी बनाई थी, मिनिस्ट्री से इशू भी किया, और ये कहा कि हर प्रोजेक्ट में हम अगर ये उसमें पर्टिकुलर गर्थ की भी है कि भाई इससे ज़्यादा बड़े होंगे तो वो नहीं लगेंगे,
कम जो है वो लग सकते हैं, तो उसको सारा उसके स्पेसिफिकेशंस फॉरेस्ट वालों से डिस्कस करके वो निकाला था हमने एक सर्कुलर, और NHAI में उस समय कंपलसरी कर दिया था कि हर प्रोजेक्ट में ये एग्जामिन करेंगे कि कितने ट्री ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली मिनिस्टर लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी। मतलब मिनिस्टर हिमसेल्फ वाज वेरी कीन कि भाई हर प्रोजेक्ट में आप मिनिमम काटिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसप्लांट कीजिए। तो ये ऑलरेडी आई थिंक अभी भी मिनिस्ट्री में वो डायरेक्शन है कि भाई आप NH में भी जब भी आप कोई रीअलाइनमेंट होता है, कोई फ्रेश अलाइनमेंट होता है, तो यू सी हाउ मेनी ट्रीज यू कैन सेव, जिनको काटने की जरूरत नहीं पड़े, और जो काटना है बहुत ही मतलब बहुत जरूरी होगा तभी काटेंगे, अदरवाइज उनको ट्रांसप्लांट कीजिए या उनको अवॉइड कीजिए। सो दोज काइंड ऑफ अलाइनमेंट इवन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जब एग्जामिन करती है, हमारे प्रपोजल जो एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए जाते हैं वो भी ये देखते हैं कि कितने ट्री काटे, कैन यू अवॉइड दिस कटिंग ऑफ ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज कैन बी ट्रांसप्लांटेड। सो दिस इशू इज बीन एड्रेस बाई गवर्नमेंट थ्रू सर्कुलर्स, और वो उस पर काम भी हो रहा है। अलाइनमेंट जब अप्रूवल होता है उस समय वो देखते भी हैं इस इशू 4 टाइम्स लगाने का सर वो रूल है, लेकिन वो पे जनरली इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता है 4 टाइम्स। NHAI की सड़कों मैंने देखी है, नहीं लगा रहे हैं। अब NHAI में काफ़ी लार्ज स्केल पे वो काम हो रहा है। जी सर। थैंक यू वेरी मच। पेवर ब्लॉक के लिए IRC की गाइडलाइन ऑलरेडी है, वो तो जो जहां पे आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, गाइडलाइन ऑलरेडी है IRC की। हाँ कर रहे हैं सब। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई थिंक IRC सेमिनार 2024 का कंक्लूडिंग सेशन में ये पैनल डिस्कशन बहुत ही प्रासंगिक, सारगर्भित और ज्ञानवर्धक रहा है, और डेफिनेटली ये आप सभी इंजीनियर्स का मार्ग प्रशस्त करेगा अपने निर्माण कार्यों में। यस बागोले साहब कुछ कहना चाहते हैं? इसका सर कोई भी टेस्ट हम नहीं कर पाते हैं, केवल स्ट्रेंथ और वो सब चेक करके ही हम संतुष्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए कोई, ये तो सर पूरे अपने कंट्री की बात है, केवल MP की बात नहीं है, पर CCS का जो भी टेस्ट हो, क्योंकि डिफरेंट कंपनी अपने अपने जो प्रोडक्ट लाती है हमको बताती है, उपयोग कर लेती है, तो इसके बारे में भी सर कोई ना कोई निर्णय हमको लेना चाहिए। नहीं, आप अगर देखिए इसका एक IRC कोड SP89 है, उसमें सारे टेस्ट लिखे हुए हैं, क्या क्या टेस्ट आपको करने हैं वो और कैसे करने हैं वो सब लिखा हुआ है। उसकी पास होने की क्या रिक्वायरमेंट है वो भी लिखी हुई है उसमें। सर वो उतना सर वो मटेरियल के बारे में नहीं कहता है सर, वो CCS पे ही है वो कोड बना हुआ। CCS मटेरियल पे नहीं कह रहा है सर, वो केवल स्ट्रेंथ और उसके ऊपर कह रहा है सर। वो उसमें सारे इवन लीचिंग हर तरह के टेस्ट हैं उसमें। आप क्या कौन सा टेस्ट नहीं है उसमें मेरे को बता, आप लिखिए। वो सर वो IIT जब जो भी मतलब उसका जो प्रोडक्ट मंजूर कराता है तो वो सब IIT पे जाता है। IIT अगर कह रही है टेस्ट सही है तो फिर मैं कैसे लाता है उसको टेस्ट को? नहीं सर, फिर भी सर एक जनरल अपने को सर आइडिया हो तो सर ज्यादा अच्छा है सर। भाई जितने टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो सारे टेस्ट उसमें लिखे हैं। ये पहले SP89 था, वो दूसरे सब्जेक्ट पे CCS पे एक अलग से कोड 2019 में ही बना है, और उसी के बेसिस पे अब हम अप्रूवल भी बंद कर दिया था हमने कि IRC के एक्रेडिटेशन अब बंद कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब कोड अवेलेबल है आपको, और जब जो भी जिसको जैसे PWD को यूज करना है वो देखे उसमें क्या टेस्ट है, वो टेस्ट करवाइए और आप अप्रूव करिए उसको। अब IRC के पास क्यों आ रहे हैं? ओके, उसमें क्या क्वेश्चन करना फिर? जब भाई आप एग्रीगेट भी टेस्ट करते हो, एग्रीगेट क्या देख के थोड़ी करते हो, टेस्ट से ही करते हो, वो सारे टेस्ट लिखे हुए उसमें। नहीं, वो सारी चीजें उसमें है, सब मेथड है उसमें, आप देखो तो सही उसमें। क्योंकि उसके कोड के आने के बाद में हमने तो अप्रूवल भी बंद कर दिया था, लेकिन बाद में जो काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की IRC से कि भाई आप क्यों बंद कर रहे हो। ठीक है, आपने कोड निकाल लिया है, लेकिन फिर भी जो लोगों को कंफर्ट लगता है कि भाई IRC के टेस्ट ये कमेटी एग्जामिन कर लेगी, ये अगर स्टैंप लगा देगी तो हम कंफर्ट हो जाएगा, हमें मिलेगा, तो इसलिए हमने फिर से शुरू किया उस सिस्टम को। Sir, last निवेदन है सर। Just what you are I think telling is I think there is no test on the stabilizers. It is only end product like when it is mixed with that aggregates and all. What should be the strength and all those things. So whichever like stabilizer the dosage satisfies you can take. But before that
even you can examine, like you can use only cement. If cement is also giving that kind of strength, it is fine. But if cement is unable to give, because you cannot go on adding cement, 5% ज़्यादा करने से then problem है. Then you can then think of adding some stabilizer along with this cement. So that kind of decision you can take it. Finally, it should be cost effective. But there is no test which is just, it's end product, like strength should be this much. So that is only being examined. It is not the chemical which is being tested. Because there now the longevity. सभी लोगों ने ये प्रयास किया कि आयोजन सफल हो. I don't know exactly to what extent we got succeed, but मेरा ऐसा मानना है कि काफी हद तक हम इसमें सफल रहे हैं और जोरदार तालियों से हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का, जिनके मार्गदर्शन में हमने काम किया, उनका अभिनंदन करने का कष्ट करें. For this organization, for this seminar, there were so many committees were constituted, and हर कमेटी का अपना अपना रोल था. हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने और आईआरसी ने ये निर्णय लिया कि उन कमेटीज के रेस्पेक्टेड चेयरमैन्स को और एक्टिव मेंबर्स को फेलिसिटेट किया जाए. इस फेलिसिटेशन के लिए हमारे बीच निर्मल साहब हैं, मेहरा साहब हैं. मैं इनके साथ साथ श्रीमान एस.एस. सालुंके साहब, वाइस प्रेसिडेंट आईआरसी को, और श्री मोहित वर्मा साहब, वाइस प्रेसिडेंट आईआरसी को मंच पर आमंत्रित करता हूं. कृपया मंच पर आने का कष्ट करें. Welcome, sir. Please have a seat, sir. To start the felicitation, I will request Shri Nirmal Saab, Secretary General of IRC, to present the mementos. First, I would invite Shri Sanjay Maske, Local Organizing Secretary of this IRC Seminar 2024. जोरदार तालियों से अभिनंदन करें. श्री आनंद राणे, चीफ इंजीनियर प्लानिंग, हेड ऑफ द एकोमोडेशन कमेटी. श्री जीपी वर्मा, चीफ इंजीनियर ब्रिज, ट्रांसपोर्ट कमेटी. श्री केपीएस राणे, हेड ऑफ रजिस्ट्रेशन कमेटी, चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे. Shri R.L. Verma, Chief Engineer, PWD, he was head of the Food and Venue Committee, Shri R.L. Verma Sahab. Now I will request Shri Salunke Sahab to present the mementos. Shri B.P. Borasi, Chief Engineer, Technical Committee, Shri Borasi Sahab. Shri Surendra Gorkhede, Chief Engineer, he was heading the IT Committee, Shri Gorkhede Sahab. Shri R.D. Chaudhary, Superintending Engineer, he was heading the Stage Management Committee. Shri Yogendra Kumar Singh, Superintending Engineer, Head of the Cultural Committee. Shri Praveen Nigam, Executive Engineer, Head of the Exhibition Committee, Shri Praveen Nigam. Shri Rakesh Nigam, Member of the Food and Venue Management, Shri Rakesh Nigam, Executive Engineer. Now I will request Shri Mohit Verma Sahab to come over the dais and please present the mementos. Mrs. Shabana
Khan, Executive Engineer, Head of the Women's Cultural Committee, Mrs. Shabana Khan. Shri Vijay Patel, Executive Engineer, Head of the Registration Committee. Member of the Registration Committee, Shri Vijay Patel Saab. Now I will request Shri R.K. Mehra Saab to present the mementos. Shri Mehra Saab. Shri Anil Jain, Member of the Steering Committee, SDO PWD, Shri Anil Jain. Mr. Ritesh Sharma, Branding and Event Management. Ms. Poonam Turkar. Poonam ji आइए please. Ritesh Sharma, Assistant Engineer, Smart City Bhopal. Ritesh Sharma. And Gupta ji for nice. Yes, Mr. Praveen Nigam is here. Please come over the dais. Nigam Saab, please आइए. He was in charge of, this technical exhibition committee. प्रवीण निगम साहब, जोरदार तालियों से उन्होंने बहुत मेहनत की उसके आयोजन के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद सर. It's okay, sir. Now I would like to request Shri Nirmal Saab to say a few words for the conclusion of the function. Thank you. And today we have seen excellent presentations, and inaugural session was fantastic. I think what we didn't expect even when we were planning this seminar, but it was a very high profile kind of session. Entire city, I think you tried to have branding and so awareness among the general public also that we are doing on new technology and all this EPC contract. These two issues are very important for PWD. And we are having this concept in our projects. So even our all political bosses, they also were talking in the same language. They all need innovation. In fact, in 2022 September, Gadkari Saab, because he's so keen on new technology, that we had a Manthan program. And he invited all the PWD ministers of the country in Bangalore. And there was a 3-day program where we discussed with all the ministers there that how to bring new technology in your projects, in road projects. So I think about 12 ministers, they participated in that Bangalore program, Manthan program, and their subject was only new technology. So that is the initiative, and government is very keen, and 2070 is the target given for neutral, carbon neutral. I mean, we should be carbon neutral, no emission. We should try to see that how we can replace this carbon emitting technology and bring this sustainable development, green highways, green, all these concepts should bring in the road construction. तो political level पे भी पूरा support है. Now it is the time कि हम engineering level पे अपने projects में भी इस चीज़ को लेके आएं और sensitize करें सबको कि new technology में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटी है, कौन कौन से कोड ऑलरेडी बने हुए हैं और क्या क्या प्रोसीजर हैं जो हम ला सकते हैं इसमें. एंड आई थिंक ये जो कल भी जितनी प्रेजेंटेशंस थी बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशंस आपने अपने पूरा फुल जस्टिस किया.
और फाइनली ये जो आज का जो सेशन था, जो इनिशियली हमें लग रहा था कि शायद 2 घंटे चलेगा कि नहीं चलेगा, बट वी ओवरशूटेड एंड वी हैड ए वेरी गुड इंटरेक्शन। आई थिंक जो भी बहुत सारे राइटिंग में भी दिए हैं लोगों ने कमेंट्स, हम भी देखेंगे उसको और रिप्लाई करेंगे, और यहाँ भी सबसे डिस्कशन हुआ है। आई थिंक काफ़ी डाउट्स जो लोगों के क्लियर करने की कोशिश की सभी की हमने, कि ये एक तरह से सब सेंसिटाइज हो जाए कि हाँ भाई हमें करना है ये काम, और हर डिवीज़न लेवल पे ये काम शुरू करें, डीपीआर से ही शुरू करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज खाली कॉन्ट्रैक्टर पे छोड़ोगे तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरा आज का जो पर्पज़ ये भी था कि ईपीसी में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ईपीसी का टाइम तो बहुत शॉर्ट था, इतने कम टाइम में इतना डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोशिश की हमने कि थोड़ा टच अपॉन जितना भी टाइम मिलता है उतने टाइम में कोशिश करें कि हर एस्पेक्ट को कवर करने की जो एफर्ट था हमारा। और ये भी जो आपने देखा आज के पूरे दिन में, और फाइनली जो अभी जो हुआ लास्ट सेशन हुआ, तो आई थिंक वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस 2 day सेमिनार इन a very fruitful way. And if you have any more suggestions, चाहे कल के सेशन पे हो या आज के सेशन पे हो या कॉन्ट्रैक्ट्स पे हो या किसी भी इशू पे हो या कोई भी IRC कोड पे, you are free to write to IRC and we will see that if there is a need in any code to change, to bring amendment, we are open to all these discussions. जो भी आपके सजेशन होंगे रेस्पेक्टिव टेक्निकल कमेटी को हम भेजेंगे, और अगर कोड में चेंज करने की ज़रूरत है तो वो भी चेंज करेंगे हम कोड। तो पर्पज़ हमारा यही होता है इस तरह का फीडबैक लेने का फील्ड में, कि भाई आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताइए, और आपको पता भी होना चाहिए भाई क्या क्या अवेलेबल है, क्या नए कोड आए हैं। IRC सेशन में भी हमारा यही अटेम्प्ट होता है, और इस तरह के सेमिनार्स में भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। सो आई थिंक इट वॉज ऑल फैंटास्टिक, एंड एज फार एज IRC इज कंसर्न वी आर वेरी हैप्पी विद इवन द एक्सीलेंट अरेंजमेंट मेड इन सच ए शॉर्ट नोटिस। मतलब मुश्किल से बेंगलोर सेमिनार में ही हमने ये डेट डिसाइड की थी, इतने कम नोटिस पे और इतनी अच्छी सेमिनार होने के लिए। आई congratulate Mehra Saab and his team for your excellent work done. I think it was a team work and you have done a very good, on all fronts, including the cultural program. I think the last program is today, but yesterday also it was fantastic and we are very happy with everything. Thank you. Thank you so much, sir. At last, may IRC के ऑफिस बियरर्स और भोपाल के इस सेमिनार के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जिन मेंबर्स को अभी मोमेंटोज मिले, उन सब से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आने का कष्ट करें, जिससे कि एक ग्रुप फोटो हो सके, प्लीज। Thank you so much. Goodbye. 1992 batch Chief Engineers team, please come over the dais. 1992 batch.